Disco Elysium. Interesting. Gee. I love the view of it. Okay, I remember. Smoking. Hey. Inside, you see a set of steering levers, a radio microphone, a pull-out toolbox, and the soft glow of the fuel preheater gauge. The white suede feels luxurious under the touch, and the metal clutch handle so very familiar in your palm. As you tap on the gauge, the indicator pin jerks as if startled. It's in the large orange sector, indicating the engine is warm. Next to the gauge is a red switch labeled heat. There's no use pressing the heat button. It won't start without the ignition key. Alternative translation: don't even think you can drive my MC. A metallic drawer slides out from under the seat and clicks into place. The tools inside are neatly... Take what you need, officer. It's going to be a long case. I'm not protective of my tools, like some men are. He's clearly a little protective of his tools. But what can you do? Work is work. It's robust, weatherproof, and well-made. Police issue, blue, lets you see things in the dark you would otherwise miss. The pry bar feels nice and cold in your hand, heavier than you'd think. Cold and heavy, like truth. You feel like you're reunited with truth once more. Useful for opening all sorts of doors and lids. The handles are long and sleek. Snap, snap, go the cutters in your hand. The pull-out toolbox slides back into its nest. Preheater gauge casts a warm glow on the steering levers and the radio on its... Traveler from another planet. Hey there. It's the jam, my man. It's a traffic jam for the ages. Harbor gates up the street are shut tight, no explanation given. Workers on strike, scabs agitating, an all-around clusterfuck. Meanwhile, we're all stuck here in long-haul limbo for days upon days upon days. Upon days. Feels like forever. Like I was born on this here roundabout and this was all I ever knew.
Just me and the metal in the tires, the oil and the fumes of mazout. Yeah, imagine. It's been a whole week already. Behind the laugh, however, a touch of sorrow. So tell me, what do you need? Nope, don't smoke. Some of the other drivers do, though. There's still a few around, waiting for the jam to disperse. Or waiting for the sweet release of death. Yup, nothing wrong with that statement. Your senses have nothing to add. You'll have to ask around elsewhere. You could also check the kiosk down the street. Frit. With 3 T's. Rebishaw's weird. It's like, whatever's going on over at the docks. Workers got a blockade set up, making demands, no way in or out. Anything else? Yeah, this ain't really my area of expertise. I just do my job and get paid. I have things to do and places to be. All of us do. Us lorry drivers. Camionneurs. You still hang around here waiting for this mess to end. Most have scurried off somewhere to get drunk or high. Or laid. Not that I blame them, really. Not my thing. Chasing transient pleasures is a drag these days. I prefer the examined life now. Thinking, reflecting, observing. What's better than chasing transient pleasures? The more transient, the better. When one's ended, you can get onto the next one. He ain't one of us drivers. I know that. All accounted for. Otherwise, I haven't really asked about that. Been wasting time right here. Keep him busy. Analyzing the fundamental structural and psychological conditions of being stranded in the midst of a sea of motor lorries and their sad, despondent chauffeurs. Nothing. I'm just messing with you, man. Don't mind my idle verbosity. Oh, high-grade narcotics, illegal firearms, stuff like that. Time to arrest him. Can't even get a few jokes past you, my man. I've got another haul of found cargo. Mostly sporting goods, tracksuits, and that kind of thing. They usually get shipped to Grad in the Occident, though we've been making headway in the Il Moran market lately. We're pals and all, but I can't just freely hand out the merchandise. The bosses won't be happy. This rockin' beauty. Sure is, like a rash you can't get rid of. You interested in heavy-duty cargo machinery? Yeah, it must be. Your job's to know all these little things, isn't it? Well, my job is to deliver tracksuit trousers. There it is again. A little touch of sadness beneath his cool. He thinks he's spent too long in this lorry. The man taps his fingers rhythmically against his arm. Huh? Oh. No, I ain't got any money. They don't want to pay for unfinished work. The bosses, man. Dunno. What you need? In his eyes, an unfamiliar longing. Flecks of brown and gold. It's hard to say. His gaze wanders southwest, down the street that goes beyond the horizon. The road continues for miles, flowing together with other roads, turning into causeways or bridges, ending suddenly in dead ends, or ramping up or down highways. It forms a crisscross pattern
across the land. Above the Jamrock Quarter, in the form of a raised motorway, and then the never-ending sprawl of Forburg, high above buildings, new and old, the air filled with the rumble of motor engines. To the old south, to the farthest outskirts of Revachol, through the checkered fields of farmland, upstream to the river Esperance, past Montmartin, the border approaches. You cannot see. It's out of the city. Up ahead, the mist blocks all sight. A gale blows across your cheeks. It is cold. Before you stands a tall lorry driver with sad eyes. Excuse me. Man, I don't know what to say. Not much anyone can do. There's no helping in absence, you know. I miss my family. They're all I have. My wife, second kid on the way, waiting all the way in Diora. And here I am stuck in this shit, so far from home. What's it like? Good. And bad. An ache that brings you joy. I think of them a lot. I dream up these silly scenarios in great detail of living with them. It comforts me. What about you, Cop Man? You missing someone? Is that what it is? This feeling? No, it's scarier than that. You're pursued by a hunter, smelling of apricots and sorrow, and the past. Missed my gun. I feel for you, my friend. It's good to miss someone. I like it, knowing there's something more than what I have with me here. But, thanks for this. It's nice to talk to someone, and I know it wasn't easy to ask. I hope you find your way through your own troubles. Don't be a stranger. This Post Lavantorie mail collection box has been heavily vandalized with graffito. A closer inspection reveals 2 bullet holes in the front. If I had a bag. Do I have to do it? Kuno's got this! Oh yeah, nappa gumpy, Kuno! Right in the dick, Kuno! Get him right in the dick! It's love it in the dick! The boy is sweating profusely. His eyes are like 2 black holes and his jaw is twitching as if trying to break free from the empire of his body. Fuck that! Kuno, yeah! Right in the mouthful! They pay you no heed or pretend not to notice you.
Shits himself. The rake, Kuno! You should throw the rake at him, Kuno! The fuck does Kuno know what a rake is? Kuno is not a gardener. Alright, entertain the Kuno. Show me what you got. What you got there? What you got, huh? Show me what you got. Shitload pig. What's your question? Don't tell the pig shit, Kuno! If I were to want to waste my time, which I do not, I would ask them who he is, how he got there, and the usual. You have no idea what the usual is. Just ask whatever comes to mind. Kuno's fuck imp. Kuno uses the fuck imp for target practice. End of conversation. Very strong. You should be this stoic. Just a couple of pigs sniffing around in the dirt. That seems pretty fucking suspicious to Kuno. Yeah, you tell the faggoty, Kuno! Probably climbed. Kuno was busy down the road when that shit went down. You heard Kuno. Kuno wasn't even in Martinez. Kuno wasn't in Revachol. Kuno wasn't regional. I don't know. Some fucking... Mesk or I don't know. Some other place. Night City. Kuno gives this info out on a need-to-know basis. And you don't need to know. Kuno didn't smoke the gimp, if that's what you meant. You're testing Kuno's patience here. Get lost, Kuno's Kuno, pig? Kuno. Primal. Violent. Yeah, think about it. Think about that rabid Kuno shit. He seems glad someone understood what he was going for. But right as he's getting distracted, you hear a malevolent hiss from behind the fence. Watch out, Kuno! He's trying to fiddle you! He's gonna put his hands on you! Help! Pig's got Kuno! Help! Rape! Help! He's got the Kuno, help! Yeah? Get out of here before the Kuno beats the shit out of you. Yeah, that's right. Drag your fat ass out of here, fat boy, before Kuno fucks you. Don't listen. Just go. The corpse looks at you with bulging white eyes. The face around them does not look human. It's swollen and ready to burst. His lips are fish-like and his tongue like a ball gag in his mouth. You seem to be holding your breath. A cargo belt twists his neck at an unnatural angle. The body below appears stiff. It's letting out an ungodly rot. The smell seeps in even through your clenched nostrils. Active decay. It's okay to throw up, officer. No one is judging. He's about to blow! Cop's gonna blow, Kuno! There are several footprints in the mud, left by work boots. Anywhere from 6 to 12 pairs have walked here. Heavy workers' boots with reinforced toes and hobnails all over the yard.
money and some. Everywhere. We got a dead body out here. We got a dumbass kid. This trash container is locked. The sliding lid has a padlock that says, whirling in rags. There's something in there, not necessarily connected to the case, but still. The body is downwind from here. Maybe you prefer the smell of garbage to the smell of death. Damn. Trash, food waste from the cafeteria. They lock these containers to keep the derelicts from flocking in. Could be evidence too. What do you mean, feel? It could probably not do something. Mm-hmm. We could try using a pry bar, the one you took from my motor carriage, or we could ask for a key from the manager of the Whirling in Rags. He probably has one. Give me that. Tool not equipped. How do I equip that? This trash container is locked. The sliding lid has a Try. अरे पागल है क्या भाई? Story of the Kuno, the pig's getting pretty close to me. Come to snuff my shit out, I think. Looks like it's time for me to go, Kuno. Pig's come to take me in. She means it. The fear is real. I'm going away for a long, long time, Kuno. Going away for life. What's going on there? Fuck are you trying to pull, pig? I come from the woods, good Davidu. You don't want to go there with me. You don't want to see what I've seen. Don't be traumatizing her. Get... can't hold it. An inconspicuous pile of the roofing material, Eternite. It's nothing. Someone just left some roofing material slanted against an old shack. Can I get in here?
Welcome to Rivachol. You see several packaged raincoats fill a low shelf beneath a display of croissants and juice bottles. The raincoats are transparent, except for the big Fritta slogan on the back. What is what? It's a raincoat. If you want to buy one, then it's only 4 real. A small cabinet on the wall is filled with various medicine bottles, nasal sprays, and blister. Just ask me if you need anything from St. Baptiste. We don't stock prescription meds, but we do have Nosafed, Duramine, Magnesium, and Hypnogamma. St. Baptiste, you know, the pharmaceuticals company. St. Baptiste Pharmaceuticals, the one that sells meds out of St. Baptiste. The tear machine stands in the corner. A sign says, 1 bottle equals 10 cents. A colorful display of cigarettes and alcohol bottles line the shop wall, inviting you there, in that dark green glass, all in vain. The great flowing river of warmth, wine, alcohol, beer, alcohol, love, alcohol. Guess not, no. Good thing you're an unrecovering alcoholic then. I'm obliged to inform you that both alcohol and cigarettes damage your health, but I guess you already know that. Don't ask, don't look, don't do anything here. Just go away. Get back to work. Welcome to Frit. Feel free to look around or something. Everything is out on the shelves. What's that magazine she's reading? Okay. I'm not really supposed to be chatting to anyone, but I don't really know anything. I mean, I know it's there, but I haven't seen it, so not really. No. I didn't know him at all. I don't know, really long. I don't... No need to worry. It's just standard procedure for us to ask around. If you hear anything, let us know, okay? Okay. Uh-huh. Can I help you? Mine? No, it belongs to the Whirling and Rag. Thank you for clearing that up. Why do you keep the container locked? Why? To keep the hobos and drunks out. That's why. And the neighbors too. They put their trash there and they don't pay for the garbage. I thought as much. And are you the only party with access to the trash? Well, yes. Us and the garbage... It seems a little callous, doesn't it?
something stirs in you. Prod at him and find out. Callous? What are you, Kras Mazov? Almost all establishments in Revachol keep their trash locked. The whirling in rags is not special. What do you need them for? It concerns the case. Please cooperate. Just bring them back once you're done, please. I've seen something. This trash container is locked. With a well-oiled crack, the lock pops open. Don't. Maybe you shouldn't. There is, but you won't like it. Sweat forms on your brow. Your hand. The smell of rotten food rises to greet you. You see soggy cartons, dirty rags, and organic waste. We're just in time. This hasn't been emptied for over a week. You see milk and egg rest with one broken egg in it. Some pasta wrapper. Picking up the soggy packages somehow feels familiar. A box falls into pieces in your hands. Batiste Soleil cereal. There are plastic pasta packages below, and turbo noodles. Nothing of note, however. Among the threadbare kitchen towels, something catches your eye. A pair of denim trousers. As the legs of the slime-covered jeans begin to unspool from the garbage, a rank corpse smell fills the air. The victim's clothes? Cadaverine odor is faint. If these belong to the deceased, they were removed when he was still in the early stages of decay. Drop them in here, officer. Guitar-marked blue jeans. Pockets empty or emptied. He wore them with a belt, too. A white belt. The loops appear stretched, but the belt is missing. That's it. Do you see anything else in there? I have another... Something slimy catches your eye. A drab, long-sleeved shirt, olive-colored, appears from the food waste, dripping with pus. This is a military-type overgarment. No label or serial number. This is the kind of rib-knit shirt that's worn over light armor to conceal it in an urban scenario. The rest of the rags are just kitchen variety waste. A yellow old mug that catches your eye. But other than that... All right. We should go to Gart again and ask if he knows who put the clothes in the trash. It could be as simple as someone from the hostel cleaning the yard. Or that one. I'd advise against confronting that force. Not really. All we know is the victim's clothes are in the trash. The lid was locked and his establishment had the key. It's just a small loose thread. The lieutenant nods, then looks back into the trash container. You pick out a broken mug with an oddly racist depiction of the yellow man frolicking in saffron. Mm-hmm. You've acquired an interactable item. Investigate this item further by going to the Interact tab in your inventory. It's just organic waste, cold and slimy on your hands.
Apple and potato peels mostly. Unidentified sludge and the occasional chicken, but nothing. It's nothing. Nothing more to see. What's this? A blue piece of plastic sticks out from the apple peels. It's shiny. Looks like the corner of something. Something larger. A clipboard. A blue plastic clipboard with moist papers hanging from it. They look badly damaged, but you can still make out forms and notes. Written. Officer, is that your paperwork? Yes, it is. Look. This plastic has the RCM street grid on it. You've even got an autopsy form. What? If you don't mind me asking, how did this get in the trash? Understood. Be untroubled. If anything, this small moment has made them respect you more. The container sounds a muffled gong. That's one thing off the list. I think we got it all. You said you didn't want to talk about the ledger. However, now that you have it back, it would not hurt to start taking notes on the case, officially. Interact button in the middle. How do I interact? It's just a racist mug. What's there to read here? Not much. Oh boy, here we go. Okay. What are you going to say about a broken, tossed away mug that you dug out of the garbage? But it was in the trash. Why not just call it out when you see it? Or do some volunteering work. Just finish your case. It's the ledger you found in the trash. A pitiful cabbage of white and yellow papers hanging from plastic board, barely held together by a metal clip. This sad display is made complete by the faint smell of urinal cleaner. Right. What more do you need? A rubber condom stuck to the back. A graffito that says defeated. I think you catch the drift. Below the pathetics? Terror. Do not look into its blue heart. No, I'm not gonna do it. They're not exactly white. They're yellowed in patches by sunlight and alcohol and covered in dense blue handwriting. Ink escapes into watercolor patterns, reaching its tendrils across entire pages. The paper itself is checkered with faint red lines, forming short paragraphs. Once in a while, there's a red stamp that exclaims, "Case files commit to paper." The case files themselves are plenty. You count more than 100 sodden, crumpled up, earmarked pages falling apart in your hands. They appear to be sufficiently organized and extremely dense, if mostly illegible. Work, strife, poverty, the Jamrock Quarter. These are handwritten logs of investigations dating back to January 51, this year. The exact number is hard to estimate due to missing pages and an odd naming convention. But there are at least 20, maybe 30 cases undertaken, not completed, mind you. You don't exactly close them, so much as distance yourself from the smelly papers. They're a little further from your nose now. The acidic stench of rotting food is rubbed off on the cellulose. It now forms the base of the experience. This base surrounded by a faint air of spoiled meat, the stuff of death itself, and then sprinkled liberally with the citrus zest of toilet cleaner. The lieutenant
observes you, raising and lowering the toilet water-logged mass under your nose, trying to get a good whiff, a good analytical. Excuse me, I just have to ask again. How did it get in the trash? Boring? Try dangerous. You should do a thorough inventory of that. Make sure some has not fallen into the hands of the RCM's enemies, organized crime, or worse. Official notes sometimes contain informants' names, even undercover operatives. Oh God, that sounds dangerous. Make sure you don't throw it out again. Now, if you'll excuse me, that thing has filled me with the sudden urge to make sure mine is in perfect order. Arson, petty theft, spousal abuse. Handwritten logs on dozens of investigations date back to January 51. Stamped case files, commit to paper. These are your last couple of months in Revachol, Precinct 41. Yes, it appears you employ a, shall we say, robust yet literary system. Each investigation has its case number written on the margins. Yet, still more tellingly, most are accompanied by a name. Yes, all caps. One is called The Next World Mural. Another, The Square Bullet Hole Murders. Another yet, Others appear more light-hearted. The guys on a couch in an unexpected location, and the murder at the hookah. You like this grimy murdering. It's going to take an effort to piece these case files together, but it can be done. Once you're done inspecting them up close. You mean the alphanumeric? Officer, precinct, time of arrival at the scene? Oh, you mean the titular? Yes, well, so do I. In our defense, almost everyone in the RCM does. It's a holdover from the early days of the RCM, right after the revolution, when the organization had little idea how to do things. It persists in an unofficial capacity. Officers use these titles to refer to their work among themselves. Again, in your defense, I seem to have named one the man with the hole in his head. That was a real person. His death was real. Still, I named it that, to amuse myself. I pray his loved ones never find out. Rail spiked through the head. He died. It was a workplace accident. There is, for precisely one more. 15 pages near the end remain untouched by the damage. The checkered grid forms a structure of passages, breaking the case into subtasks to accomplish. The tasks you've completed flow out of the pen in a brash freehand similar to the rest of the letters. The wording comes easily. It's almost robotically simple, a language developed for mental rigor and simplicity. Inspect the victim's body. Interview the cafeteria manager. A satisfying slash sounds across the paper. You're done, it seems to say. And you. Things to be done and things already done. The composition of reality. This is an extremely useful tool for a detective of the citizens' militia. Now all that remains is to name the case. No, actually. Any ideas? Ah, yes. I have to tell you, officer, I don't appreciate ironic titles. Other officers will have to use this as reference. If it's idiot or cockfinger, they're not going to get it. They're going to think an idiot and a cockfinger were on this case. So, do you have something less? Fun is outlawed with this guy. What a knock! अरे भाई trees are the home in the middle. Great. That's great. That's actually what I was thinking too. The Hanged Man. Good, strong name. We have a very good name for the case now. I'm going to start calling it the Hanged Man. It's good we sorted this out. You don't exactly close them.
so much as distance yourself from the smelly papers. They're a little further from your nose now. In the back, you see thin, translucent copier paper, some neon yellow, some bright red, all covered in boxes, like marching armies. These look like official forms, waiting to be filled out. Three. The topmost are misconduct fines, the middle ones are station calls, and the bottommost are field autopsy forms. Each is a dozen pages of thin copy paper, bright red in color. You see the parameters of a deceased human form, waiting to be filled in. Age, sex, condition of internal color of the irises, predation marks, condition of sexual organs. A monetary penalization ranging from 20 to 250. These are quite sinister in turn. They give a date and time for the person to appear at the specified precinct police station. Below the call are the criminal charges you risk by not appearing. Yes, all that remains now is to fill those forms and hand them to people. Fines for wrongdoers, interview requests for bad guys. What delicious power hid within this pathetic mess. You feel better. The rest of the stinking cellulose is much worse for wear. Being sandwiched between the board and the rest of the paperwork must have spared the fragile copier paper. It's proving to be harder than expected. You just don't have the intellectual rigor to patch the quilt back together. Try again later. An aluminium block runs the width of the board, biting down on the paperwork. Its crocodile teeth are the only thing keeping the surface is interrupted by a silvery sticker. It's rectangular, sparkling with iridescence. You don't know how you didn't notice it before. What? That thing. It's a halogen watermark. We use it for adding information to RCM property. Okay. While a bunch of sodden papers sag from the clipboard in your hand, it's a sorry sight. It's made of dark blue plastic, hard enough to beat someone to submission with. The edges are rounded, however. The U4 size board feels thick and heavy in your hand. Light shimmers on its wet surface. On the back you see the embossed letters, RCM. Something rattles inside, ever so lightly. Is there a hidden compartment? The plastic shimmers like lapis lazuli, but it is not see-through. You cannot see to its center. With your hands, U4-sized pages hang from the clip screwed to the top of the board. Is not what you end up doing. You squeeze the plastic to slide it open, but nothing happens. Then you bend it some, then crack it. The goddamn thing is... A hot flash of rage comes over you. For a moment there, before it recedes, you feel as though you might just squeeze a tear of anger out of your duct. It's unjust, that's why. You can't even get to that thing anymore. The ledger quivers in your hand. As it shakes, the pages rustle. This pathetic mess
suddenly afraid of you for some reason. Can I help you? Thanks. I hope you found what you were looking for. How strange. I certainly didn't put them there. The trash collection service? CS Municipal. I don't see why they would put anything in the trash, though. Ah, the elusive CS Municipal. I doubt we'll be able to track down who was sent here last and when. This will have to be one of those little threads that solves itself down the road. On Clinton Street, near the Boogie Street Diamond, a small truck rattles down an alleyway. It stops by a rusted trash container. Two men, their faces rough and swollen, jump out. They look at the container despondently. CSM is... Thank you anyway. Sylvie had the keys before I got here, and I can vouch for her. I can vouch for all my staff. None of us would tamper with the crime scene. I think fugue states are more your forte, officer. Yes? Absolutely out of the question. You wait and see, cafeteria manager. Absolutely in the question. First we find a sad banger. Then we sing this place to shit. There they both are, two identical shoes, both copiously green and indiscriminately snakeskin, reunited on. It's pretty clear a normal cop is not what you are. Good, they're balanced, comfy. Feels like the only good thing about you right now, truth be told. The window stands broken in its frame. Cold wind blows in. The shards face outward. Whatever broke this window came from the inside. A fine web of scarring covers the back of your right hand, but none of it is recent. More likely a projectile than a held object. There are no fragments on the floor from pulling a tool back in after impact.
Something you've done before. It is too large for a bullet, yet too small for a piece of furniture. You're looking for something heavy and larger than your fist. The shoe you found on the balcony fits the hole almost as well as your foot. It would have also been heavy enough if thrown with force. Congratulations, you smashed the window with your own shoe. And maybe, just maybe, you succeeded. We'll never know. Or maybe you were trying to smash your own reflection in the window pane. Kim also tries not to look at the pile of taped viscera on the carpet, or the weird suitcase on the hat rack, or the potted plant dying in the corner. But it's all just too morbid to ignore. And by that you mean crimes against humanity? I know what you meant. The bed is cold and not particularly inviting. The option to go to sleep becomes available every night after 9 p.m. That sugary black rum stain on the counter makes you teary-eyed with joy. It's almost touching how syrupy and sticky it is. How long have you been up already? No. An hour would have been bad. 2 hours is mystical. You have truly wiped out all trace of yourself if you haven't thought about rum and lemonade yet. Maybe later? What is this? Casual Friday? What's with the lackadaisical laxman attitude? You used to be passionate about getting your drink on. Show me you're still young. Show me you have the fire in you. Lick that stain off the counter right now, motherfucker. What happened, man? You used to be cool. Go get your boring normal person drink then. It would go well with those cigarettes. That's a great combination. Hello, sir. Step right in. The store is open. Are you interested in a new and exciting book? Okay, sir. I'll try to answer any questions you have. I hope they're about books. My name is Annette, sir. My mum, her name is Plaisance. She owns the store. She's inside minding the register or organising. Feel free to step in and browse our wares. I'm signalling that the store is open. Otherwise, people might not know. They'd miss out on the crime, romance, and biographies of famous people. A sudden gush of wind turns the pages of the books on the counters. She covers her face, smiling, but she's cold. Kind of you to offer, sir. What could you do to help her anyway? Thank you, sir. I'm happy to help Mum out with the store. I do my studies at home at the moment. I have to help Mum keep this place running.
Mum says it's necessary to do both because it builds character. Mum says a proper worker is dutiful. That's how you get ahead in life. You succeed. Mum says it's peachy. She was a little afraid at first. There's talk about this house being cursed. Behind her, the window has been boarded up. You sense the boards creaking, twisting for a second, and some kind of doubt in her tense shoulders. Cursed in the way that makes them say that no business has ever really thrived here, sir. That they all go... well, they run out of money and have to stop doing business. We can go into the bookstore and ask about the case, but I don't see much more to look into here. Yes. Please do also look at our wares inside. The postcards and board games are there, sir. Nothing really, sir. Mum doesn't allow me to sneak around in the back rooms or the cellar. It does not manifest itself in any way. It does not exist. I liked it better when we were talking about whether it's appropriate to stand out in the freezing weather. Anything else you wanted to talk about, sir? Maybe I can tell you about some of our books instead. There he still is, looking right through you with his white eyes. The body below is entirely dedicated to that corpse smell. Emitting it is awful. The smell is repulsive. It pushes in from your mouth.
feel a great force ringing from your stomach. Your body curls until a pool of vomit lies under your feet, and your throat... Keep it. The hangover is clearly making these worse for you. You could use some ammonia to clear your head. Sure you do. You just threw up a lot. There's the fruit nearby. Maybe they have some in their apothecary. If they don't, there's a greenhouse here, and a gardener with a wheelbarrow on the corner of the whirling in rags. If she works here, she might have something for the smell. Acquiring ammonia will provide a modifier to the white check. Modifiers make checks easier and allow you to retry them. Okay. Inspect the victim's body. One. This is the cleaner. These are former checks, right? But I can't. Is this... She looks up from her magazine, eyes filled with tired ennui. Yes, what we have is there, in the medicine cabinet. Go take a look yourself. Medicine cabinet is A small cabinet on the wall is filled with various medicine bottles, nasal sprays, and blister packs. They all bear the Saint Baptiste Pharmaceutics logo. I don't know. Let's see. Nosafed is a nasal spray. Dramamine is a really good painkiller. Magnesium is a dietary supplement. Hypnogamma is... I don't really know what hypnogamma is. I guess it makes you feel less shit. It's recommended to use after lots of partying, studying, or exercising. No. Sorry. I'm not like a doctor or anything. Nosafed heals +1 health. Dramamine heals +3 health. Magnesium heals +1 morale. Hypnogamma heals +3 morale. Yes? What do you want to know? Maybe you can tell me what you do know to help me narrow it down a bit. Do you want me to brief you? 3 days ago, the RCM Emergencies Desk received a report about a security guard who was found hanged in Martinez. An anonymous caller said there was a dead body behind the Whirling in Rags hostel cafeteria. The cadaver had been there for 4 days. No one had come to investigate. During that time, the victim had been stripped of his belongings. The caller did not identify him, but used the word lynching. There is an ongoing labor dispute between the local dock workers and the logistics company Wild Pines. I was told we should approach the death as part of this dispute. A security guard or worker of some sort hired by Wild Pines. This was just hearsay from Martinez, of course. We need to find out the truth. They didn't identify themselves in any way. The tone was muffled using a device of some sort. The desk could identify neither the caller's age nor sex. There's a strong prejudice against involving the RCM in what's seen as union matters. The dock workers' union is the de facto police in Martinez.
Now it appears they've started executing too. We cannot allow that. That's us, the Revachol Citizens Militia. We're the police in this city. That's right. I'm afraid you and I are pawns in a pissing competition. His disdain is clear. This man would not use such an expression otherwise. You don't know? I assumed you were in on it. That's good. It's just stupidity. We shouldn't waste any more time on it. If you want my take, ask me after we've inspected the victim. Later. Was there anything else you wanted to know about the case? No, it's not a particularly mysterious case. The deceased is a security guard for a corporation involved in a labor dispute. It doesn't take a DeLorean polymath to put the pieces together. I just don't see the case getting more mysterious than that. There was some interest in this case at my station, but not for the reasons you have in mind. You seem to wish there was Cut this boring stuff off immediately. You know what this case is about. Yes, it just so happens there's a beautiful blonde 19-year-old woman at the heart of this case. A rich one, in fact, part of a murder sex cult. Actually, it does have to be murder. This is a murder investigation. But he's basically challenging you to sex it up with some lurid twist. Don't get right into it. Sit on it a bit. Then hit him with it. Good. No response. He just arches his brow. Have you tried concentrating on something other than your personal affairs? There is a sudden, harsh edge to his voice, like he's tired of hearing about your personal affairs. Really? You look fine to me. Focus on other people's troubles, not your own. That is a relief. Your heart beats twice like a fist. The serotonin deficiency makes your teeth clench. The lieutenant blinks, his mouth slightly open, and his body motionless. Excuse me, I was lecturing you. I shouldn't have. You should consult a medical professional if you feel that you need help. You can use the radio in my kinema to call your station's Lazareth. This habit of dispensing wisdom has been brought to his attention before. He will not think less of you for lashing out. He is trying to curb it. A moment passes. The lieutenant glances at the sports watch on his wrist. A small cabinet on the wall is filled with various medicine bottles, nasal sprays.
What did he just call you? Oh no, not this again. You just got away from that fucking kid. Good one, officer. Don't worry. We here have solidarity with the RCM. Imagine, you cops going on a strike, but then another cop comes in and says, let us cop for less money. Speaking of, what brings the RCM here, to the Wild North? Come to see the strife? Nobody betrays your degeneracy. Yeah, Measurehead. His body totally betrays his degeneracy. Don't say anything. Size him up first. Are you admiring my morphophysiology? It must be frightening to stand in the shadow of this racial pinnacle. Be calm, Am Sandwich. You are not. Inside, you see a set of steering levers, a radio microphone, a pull-out toolbox, and... This is Precinct 57. How may I assist you? Just a moment, officer. 10-4, come in, officer. Over. Okay, 10-4, sir. Wait. Before you say anything stupid, think it through. Be smart about this. Ask if he's there alone. 10-4, sir. I'm not hearing your question. That's a negative, sir. I got a 10-12 here. Over. What? What is it? He's still on the line? He wants to verify the information on his badge. But of course, it says Dick Mullen, High General of the Revacholian Cavalry Force. Tell him to stop wasting time. What do you need, sir? Over. 10-9, repeat message. I didn't get that, sir. Over. Sir, I will not have you talk to me in this manner. Over. What? What is it? What can he possibly still want from us? He seems intoxicated and keeps asking me to call him by his name. Mullen's drunk and emotionally aggressive. That's new. Wrap it up. Don't indulge in his drunken antics. 10. Excuse me, sir. Over. You probably don't want to continue on this road. Come again, sir. I didn't get that. 10-9. Over. Understood, sir. Over. Roger that. 10-10. Over and out. 18 kilometers to the south, in the 41st Precinct's relay booth, a small crowd has gathered around Communication Officer Jules Oldboy Pidier, around a dozen cops. The small room is filled with cigarette smoke, abuzz with laughter.
when Officer Judith Minnow enters. Her left arm is in bandages and What is going on here? Did something happen? What happened is my partner made contact, and it's not good. He's lost his badge. He seemed confused, delirious even. Mac, the torso Torson, is finger-fucking his fist, laughing hoarsely and apparently telling some dirty story to his partner, Chester. Yeah, Mullen was fucked, alright. Sounded fucking drunk to me. Yeah, Mac's right. This was some gnarly shit there. I mean, before he started begging for money, it was... Enough! None of this is funny. It's fucking sad. That's what it is. He's a cop. He's one of us, goddamn this. We must help him. Yeah? How do you fucking plan to do that, huh? Get him off the drink? Go jogging with him in the morning and get him on carrot juice? I just know we can't give up on him when he's at his weakest. He wouldn't. Mac, man the door. You know what he told me? I don't want to get better. I want to get worse. Those were his words. This shit does not leave this room. Not a word of this to the captain, or anyone else. We'll give him a couple of days to pull his shit together. I guess I can hold off the report for a few days. Good. Okay, everybody. Nothing but a prank call here. We all got our laughs. Now get back to work. Far north, on the other side of the motorway, the officer quietly hunches with his hand in the motor carriage. Still no money. It's not often that I see officers from the RCM in my pawn shop. What can I do for you? His courtesy is not insincere, but he prefers being alone with his projector, just watching the movement of light across the walls of the shop. I haven't had any problems myself, though some of my customers have complained about inconsistent law enforcement. Who are your customers usually? All kinds of people come through here. As you can see, I have a wide selection of goods for everyone to choose from. It keeps me entertained. Entertained? He might be high. If he is, on what? Feeling warm and enthralled by the movement of light, while the mind continues to race forward. Lucky bastard. He's probably on Prolidon. It's tough to come by on the street. A drug developed by the military to treat and prevent radiation sickness. It has psychedelic side effects, and it makes your eyes turn yellow. How would I know? There's a note of indignation in his voice. Interesting. Those triangle patches on his vest, you have a feeling they mean something, like they're similar to the halogen rectangle on your jacket. I was with the Emergency Relief Brigade. You know, after the People's Pile disaster.
Had to take Perolidon for radiation sickness. That's what you were hinting at just now, wasn't it? He's taken for mental and emotional, not physical pain these days. I like the theory more than the story. Outward movement. Yeah, you gotta get in on those vortices, my man. Let me have a look. Anything else you're thinking of selling? Another time, perhaps. Someone else came here earlier today asking the same question. I promptly sold her the gun you pawned a couple days back. What? Sold? The lieutenant shifts from one foot to another. Alert. She didn't seem like a policeman, although she kept referring to herself as a pig, which was odd. I found her interest in the gun a bit obsessive, but I was just happy to get rid of it. And of her, truth be told, she... Right, so let me get this right. You sold your sidearm, issued by the citizens' militia, and now a civilian is running around the streets of Martinez with it? Miraculously, his face does not reveal what's happening inside. You're right that she could cast aspersions on the Force. We have to find her. अरे भाई क्या सीन है? अरे इसको उड़ा दो। कैसा मैं तो भी डिस्को एलिसियम खेल रहा था, मस्त गेम है। जैसा पैसा मेरे पास भी होना चाहिए। अरे बेटा 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 रुका पहले डिस्कॉर्ड उसके बाद बजेगा। Hold on. My apologies, officer, but I have no idea where she was coming from or where she... A needle in a haystack. There is nothing you can do about it now. You'll just have to hope you luck upon her somehow. You... With Kim here too. That just sounded really... You were adamant about getting rid of it, officer. Said you were undeserving of a service weapon of the Revachol's, and I don't like keeping guns around the shop for long. Off the charts photon emissions. The unhealthy kind. He's not telling you the whole story. It seems he's trying to spare you. You weren't quiet yourself, officer. You were very distraught. You said the gun was a threat to your life and that you can't trust yourself with it tonight.
When I said that I don't normally buy firearms, you put the gun barrel in your mouth and sort of sucked on it. Then I... You sucked on a gun? Good. Very normal. $15 real. The lieutenant looks from you to Roy, and then back to you. It's clear that he hopes this tableau might still turn out to be a bad... This has got to be the most... Wow. There's pity there too, in case you didn't notice. It certainly does, especially in Revachol. Of course. I doubt it, but I can try and answer any questions you may have. I do my best to keep my distance from all manner of butchery. No one likes to see what you have to see every day. The pawnbroker's gaze is already fixed on the dancing colors. You see two lowly, defeated speakers, thralls, slaves basically, perched atop them like conquerors surveying the land. A pair of found, durable... I can see you've a taste for luxury, officer. Can't keep your eyes off those sneakers? A pair of found ultras. The design is impossibly sleek and simple. Those sneakers, mister. Those sneakers are the latest found sneakers. These once respectable speakers have been conquered, reduced to... No, don't look at the speakers, officer. Look at the sneakers. The sneakers are the stars here. No, don't pity them, officer. These are old Samaran garbage. Don't even look at them. Check out these super cool, fun ultras instead. No way, officer. These aren't for sale. They're bad speakers. Low-fi socialist junk. Well, if you want them... But see, they are the pedestal for my sneakers. If I let go of the speakers, where will the sneakers go? I can't leave If, on the other hand, you wanted to buy the sneakers too, I could maybe throw in the speakers for little extra. 50 cents? A small cabinet on the wall is filled with various medicine bottles. Okay, don't, like, overdo it or something. There he still is, looking right through you with his white eyes. The body below is entirely dedicated to that corpse smell. Emitting it is all. You crack open the ammonia ampoule and breathe in. The odor of death is still stronger. It's a spell of the mind telling you to run,
and your stomach to wring itself empty. With your eyes squinting, you stand in it. They do after 7 days, yes. We are deep in decomposition here. The man before you is naked, but for a pair of underpants and enamel boots. His skin is greenish, marbled with decaying veins and blotched by lividity. A fading web of tattoos covers his chest and shoulders. The cargo belt used to fasten him to the branch above appears industrial in strength. His eyes are milky white and blind to the world, protruding comically from their sockets. There is no one home, just subaquatic terrors there. Dark brown hair grows on his head. His face is ready to explode from the organic processes inside. The death's head grin has passed. What remains is an unrecognizable mess. Underneath the curdled meat there is an expression, not carried on his features, but below, inside, an expression of pleasure. This man was experiencing joy at the moment of his death. I'm gone. Into the wild pale yonder. In the past, way out in the west. The blue heart. Oh, that's good shit. You'll love it. Just press down and fuck it open like you always do. Fuck it hard. Corpopo the clown. He means force. It'll work. I'm a joke. Look at me. A killer. A motherfucker. And a killer. Takes one to know one. Go ahead, Corpo. What do you mean? It's the power of your imagination. Yeah, man! Don't be crazy! Inanimate objects and dead people can't really talk to you. Your wild imagination is doing this. Ask some more of those questions you love so much. He loves those. Maybe I was getting my rocks off. Do I look like an erotic auto-asphyxiation type to you? Captain Coppadromo, I fear we are drifting away, fixating on sexuality again. Let's go with a simpler question. Because you're a copperoonie. Look at all of them go. Do you want more questions? Coming right up, copperoonie Rooney. This is getting upbeat now. Love did me in, Provocopo. It was love all along. Because you have. Sure, Lobo. I can ask you a question. Why are you doing this? Looking at my face, motionless, looking into my eyes, standing here. Why are you investigating my murder? Something is on its way. Something hidden.
It's coming. A miracle from the northwest, and it's almost here. You can feel it in the air, on your hands. The cold spring air smoothing them over. Fuck no. You're no Rooney. Between you and me, your name is probably Harry. You can be anything you want, brother Corpo. Do I remind you of someone? सॉर्ट कर देगा बहन आपका. तुमको जिधर भी मिलेगा ना तुमको ऐसा गार मारेगा. मेरा नाम मोहन कुमार बसनेत है. You sure we got out of that one? साले स्टोरी तो खेल रहे हैं. क्लिक मत कर, आगे नहीं जाएगा. हाँ स्टोरी है ना, उसमें तो बात करनी होती है, वार्तालाप. पता है किससे बात कर रहा हूँ मैं? Is he black? नहीं, डेड बॉडी है भाई, डेड बॉडी से बात कर रहा हूँ मैं. सॉर्ट भाई रिटार्डेड गेम मत खेला कर भाई. रिटार्डेड गेम मत खेला करो भाई. ओए मैं तेरी स्ट्रीम पे कर रहा हूँ ब्रो. सेल्फ हार्म. ओए ये सब ना कर भाई. रिपोर्ट. सेल्फ हार्म है ब्रो. मर्डर है भाई, मर्डर. सेल्फ हार्म कैसे हुआ? तो एक्चुअली में पुलिस वाला है. Come back later, Corpo. Amuse yourself with my frank manners and my memento mori features. If possible, also see me in your dream. The material appears to be तो ceramic. पूछना उससे. इंस्पेक्ट क्यों कर रहा है बूट्स? वेंचर उससे पूछना. In stark contrast to the decaying flesh above the knee. The man wore thick polymer socks, probably for padding. A fine array of interlocking plates covers them. Delicate and fragile, they feel alien to the world around you, out of place somehow. इससे मैंने भी पूछा, who killed you? ठीक है. हाँ. इसने बोला it was love all around. ठीक है. थोड़ा सीन है. हाँ. तो अभी मटेरियल चीजें देख रहा हूँ. They are armor, no boots. Technically speaking, these are sabatons. Ceramic plate, zirconium dioxide, most likely. और ये This is कौन where है? the make would कित्सुरागी. साइड किक. ट्रेनी. अच्छा 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 अच्छा. पार्टनर है, पार्टनर. Under the सही hill, लगता है मैंने जो तेरी fair आंखें लाल weather. क्यों हैं ये बता मेरे को. Fair weather model T500 VE. I'm guessing that's vitreous enamel. This is advanced stuff. This is how you remind me of what I really am. अबे साले ऑनलाइन आ जा बहन का शॉट. नेपाली साइड की. हाँ वही वही. अबे भाई this game is not funny, do not laugh. It is funny man. यहाँ पे अभी मर्डर हुआ है बहन का शॉट और अभी इसको सॉल्व करना है. ठीक है. लिटरली अपने आप से बात कर रहे हैं. रिटार्ड बैचो. ये सोच रहा हूँ ना मैं. फनी. देख ये जो बंदा है ना, ये अभी भटका के उठा है. अभी 1 बज रहे दिन में. ठीक है. अभी ये भटका के उठा तो सुबह के 9 बजे. ठीक है. तब से इन्वेस्टिगेशन इस बंदे से मिला मैं. ठीक है. जो मेरा पार्टनर है पहली बार. और यहाँ पे 3 दिन पहले आया था. ये बॉडी यहाँ पे 1 हफ्ते से लटक रही है. ठीक है. और भैंचो 3 दिन से भटका रहा है सिर्फ. और ये पागल हो गया था. और मैं अपनी बैच खो दिया. अपनी गन बेच के आ गया पॉन शॉप में. और भैंचो अब जाके उठा वो अभी भी नशे में. इसलिए इसकी आंखें लाल है. समझ रहे हैं? तीन कैन है. सीन तो सीन ही है भाई इसका थोड़ा सा. वही नंबर 1.
क्या हुआ? क्या हुआ? ये सब मतलब क्या? साले रिपोर्ट कर दूंगा तेरे को बहन का सॉर्ट। किस चीज के लिए? चैट पे जो लिख रहा है कि मैं नाइजीरिया सपोर्टर हूँ? मुझे भी चाहिए कुछ। अरे वाह भाई, सीन चल रहा है भाई। तो न्यूज़ नहीं पड़ी हुई मैंने नहीं चाहिए मुझे भाई। उन्होंने यूएस एलिगेशन वो कर दिया रिजेक्ट कि वो रिलीजियस फ्रीडम की वायलेशन चल रही है वहां पे। सॉर्ट मेरे को खाना मंगाना था तेरे और ट्रम्प भाई ने बोला है भाई कि मैं अटैक कर दूंगा नाइजीरिया पे। उसने बोला गन्स ब्लेजिंग भाई, गन्स ब्लेजिंग बोला है उसने भाई। गन्स ब्लेजिंग भाई, गन्स ब्लेजिंग। क्या मंगाऊं खाने के लिए? एंड जो मेरे को पैसे भेज दे, मैं मंगा लूं ताकि। साले पैसे दो, मैं कल ही तक ही भेज पाऊंगा। हाँ भेज दियो कोई ना। कल तक मतलब ठीक ओए चलता है भाई अपना ये हो गए बहन सॉर्ट। ताऊ जी गए हैं, ताऊ उधर आपका। मेरा ऑडियो नहीं आ रहा है बहन सॉर्ट। हेलो अच्छा इसमें ऑडियो देखता हूँ। हेलो हेलो मेरा तो आ रहा है। मेरा नहीं आ रहा क्या? हेलो आ रहा है तेरा भी बैंचोद। झूठ बोल रहा है साले। ये वही लाडर मोहन जी ये सब मत झूठ करिए मत आप बोलिया यहाँ कर साले। मोहन जी बहन ये का मत सॉर्ट। करिए मोहन जी। ये तीन लोग कौन देख रहे? ओए तीसरा बंदा कौन? अच्छा तीसरा तू ही है। नहीं मैंने नहीं खोला वो स्ट्रीम। फिर तीसरा बंदा कौन है? ओए मैंने की पता पैन सॉर्ट। ओए लाइक क्यों नहीं करा पैन सॉर्ट? लाइक वाइक नहीं पे डिसलाइक कर दिया था। अबे पैन सॉर्ट लाइक करे पैन सॉर्ट। तेरी माँ का सोत पैन सोत। तू जीदर भी मिलेगा। अच्छी गेम खेलेगा तो लाइक कर देंगे भाई। रुक जा एक सेकंड। अच्छी गेम खेला कर। अच्छी गेम है भाई, काफी अच्छी गेम है ये। स्ट्रीमर गेम खेला कर ब्रो, ये सब नहीं पसंद मेरे को। ये तो अकेले बैठ कर रात को खेला कर। अकेले बैठ कर रात को? ये सब मत तो ट्राई मम्मी के साथ खेलता हूँ मैं। भाई डाफ्ट पंक का गाना आ गया है। डाफ्ट पंक एंड फोर्टनाइट। वाओ भैया कुछ साला ताऊ से मंगा लेता हूँ यार कुछ छोटा मोटा। अच्छा गाना तो ये पुराना ही है आई थिंक। ये डिस्कवरी है तो। नहीं रैंडम एक्सेस मेमोरीज है। तेरी माँ का सोत बहन सोत। तू जिधर भी मिलेगा। तो थोड़ा सा खाना मंगा लिया है। इतनी जल्दी मंगा भी लिया? हाँ डिसाइड कैसे किया आपने भाई इतनी जल्दी? मेरे को पता था ऑलरेडी। Piece by piece. क्या मंगाया तूने? He's बिरयानी? been out here नहीं for नहीं 7 छोले days. चावल भाई कुछ It नॉर्मल could सा be खाना odd है। if they didn't. छोले चावल नॉर्मल होता है बहन जो दिए हैं। तो साली नॉर्मली तो और क्या है? भटूरे का पता है मेरे को, थोड़ा सीन रहता है साथ में छोड़ लोगे। अरे बैंड शॉट क्या गाली वाली फिर क्यों भाई? ओए ओए भी खुद बोलती है गाली बोल के। क्रेजी हो भाई आप, क्रेजी हो। He's been out here for 7 days. We should keep a lookout for these species. The armor could भाई yield information. Marvel Rivals खेले। This is one thing he might मैं करूँगा actually स्ट्रीम know. साले, अभी देख तेरे से ज्यादा लोग देखेंगे। ठीक है भाई। ठीक है साले।
अबे डिस्कॉर्ड आजा बहन का सॉर्ट. If you wear those pieces, it will help me protect your mortal coil. अबे but the point is सुन भाई. आ जाओ भाई फोर्टनाइट आ जाओ. नहीं अबे मिस्टर आर्यन मोहन आप आके अगर ये गेम को एक्चुअली ध्यान से समझेंगे ना. मत समझ भाई. इतना टाइम नहीं है जिंदगी में. वेला टाइम हमारे पास. आपका दिमाग घूम जाएगा बहन का सॉर्ट. बुक पढ़ूं गेम में भी बहनचो साले. बहनचो बताओ. बुक पढ़ने के लिए गेम डाली है भाई. बताओ मैं ले दूं स्टोरी तेरे को. एक रुक जा. नॉवेल स्क्रीन टाइम भी कम. अबे बहन के सॉर्ट रुक जा. स्क्रीन टाइम कम होगा तेरा. Yes, bullets will fly. They always do. And the coil is fleshy and mush and permeable. Cast it in ceramic shell. Resist death. No, I think he had something precious underneath the clothes. They had to remove the jeans and shirt we found to get to it. And this kind of armor is often worn under fabrics. They usually hang them completely naked for that. La puta madre, the Mazda, the Besmerties and the like. This one still has his underpants. Fucking talking about underpants. This feels dangerous. Are you sure? The stench fills your nostrils. As you push downward, an ominous creaking sound comes from above. Stop! Pig's gonna pull his head off. Brutal! You're about to pull his head off. Do it, homo! Yes, that's what I said. You'll compromise the coroner's case if you do. So please, don't. What are you trying to achieve anyway? Why are you hanging on to that boot? भाई मैं स्ट्रीम करना शुरू कर रहा हूँ और मेरे को पता है मेरे को कौन सी गेम खेलनी है. ड्रिंक बारमेड रिग्रेशन ये खेलूंगा. डाउनलोड कर रहे हैं भाई. You do understand the boot was steeped in cadaver स्ट्रीम पे in मत खोलियो. don't you? Hell nah. There's no way you're getting them off. All the organic matter in his body has been flowing down into the boots. They are fused to his feet now. Why do you think the locals haven't scavenged them yet? You're sure there's a way to peel them off. But first, the body needs to be down. And second, it would probably be better if the lieutenant wasn't around. All right then. You can pay the hostel bill in honor points. How many honor points have you collected? Processing will take care of them. With the situation in the morgue, it will yield nothing. But we must pick our fights. Should we continue? A small bell-like sound fills the air, like tapping on the side of a porcelain cup. Suddenly, your biceps coil up. Your elbow is sharp and cocked for a punch. It's anything but. This material is a kinetic redistributor. It spreads kinetic energy horizontally, from plate to plate, dissipating it entirely. See? Faint, organic lines cover the plates, where they separate into smaller ones. These plates then divide into smaller plates, until there are hundreds of them, like the scales of some ancient white monster, cracked and pearly. ऑडी क्या हो गया? मैंने वो खत्म कर दी. Ghost of Yote. गोटे 100%. गोटे 100% भाई. 100% खत्म कर दी मैंने. ठीक है भाई. All trophies, everything. कुछ नहीं बचा गेम में. अब एक चीज नहीं कर सकता तो और. That's for us to find out. My initial report on the area suggests he was a security guard for the harbor company. But that's just hearsay. Remind me of what I really am. I agree.
This equipment is way beyond what a guard can afford. It is. It's expensive. We've requested similar material for our tactical units for years now. The constabularies deemed it too costly. In that time, we've lost 6 men to semi-automatics. For a full set, about 4 years of wages. By catching, do you mean let's not log them as evidence? Let's steal them? What was that about the constabulatory before? You need to push some buttons if you want to recruit a lieutenant in a conspiracy. Mm-hmm. It means disciplinary hearing. The cadaver slowly twists on the cargo belt, his torso covered in tattoos, and extremities blotched pink and blue. The hangman's knot is pulled tight by the weight of the corpse below. Yellow, hard-edged polyester cuts into his neck. Above, a sliding buckle ties the belt to the branch. Oh my, there's something on the belt. A familiar word that speaks to the thirst within you. Vermilion, in yellow letters, along the length of the twisting cargo belt. Only a deep longing for vermilion golden spirits lets you decipher the fading logo of the local brewery. Extremely. Industrial strength. The kind used for tying cargo to lorries. Like in a circus. When the circus leaves town and they tie a black-spotted giraffe to the wall of a carry pin. This is how you remind me of what I really am. Yes, it looks like they use whatever was on hand, paying no attention to not incriminating themselves. Rawalpindi. I'm still approaching this as a lynching, yes. Motivated by the ongoing strike. You? No. You feel like it was something else. But what? Yes, it often is. This bell worries me. A noose is one of those things that's easier to use one way around. I think they lassoed the branch, then pulled on the belt, buckle closes. It's what I would do. Seems easier than climbing up there. It's not merely polyester, it's steel reinforced. See these lines? This is where the wires run. I see rabbits for more than 20 strands. This makes getting him down much more problematic than I had assumed. The cadaver hangs from the cargo belt, limbs limp. An intricate web of blue lines stretches across the torso, from the right shoulder to the solar plexus. Each time they intersect, a small white star is formed in their crossing. Hundreds of fading asterisks riddle his skin. Their concentration is highest around his heart. His corpse is marked by stars. अरे बैंड शॉट आई वाज अबाउट टू आजा फिर सीएस खेलेंगे थोड़े टाइम में क्या सीन है yes भैंचो के फालतू गेम खेलते रहे पूरी जिंदगी भैंचो कभी बड़ मत जाइयो गेम्स में भाई ही माँ का शॉट भैंचो Alcohol and heartbreak. Damn, bro. Your fist clenches suddenly. Decay is creeping on the tattoo. Already, most of the canvas that's holding it has darkened. Now, it disintegrates slowly, letting out a stink. A map of the stars. I do see some similarity to astronomical charts. Great Century Messinian, maybe. But this seems more particular. Customized somehow. As if someone left out most of the night sky, filtering it through personal choice. The principle of this filter remains unknown to you.
the thought dissipates, and you feel as though you were only half right. यार इंटेलेक्ट तो कम है बहनचोद। ठुल्लो से So am I. This is. He takes a thin piece of milled aluminium from his coat pocket and pulls it open. What I Sounds really like a sword being unsheathed. A small lens appears, some sort of camera. Shit, Kuno! What the fuck is that? An instant color camera. This is the first time he openly acknowledges the kid's existence. I have only 2 ampoules, so Real nobody knows. Aryan I Mohan don't want bhai, to waste only one. with the real talks bhai. Only with the real talks. मैं कर रहा हूँ stream, मेरी stream देखो Shrill भाई जाके. flash, Fuck followed this by shit भाई. the Stream breaking पे of a लोगों को small चोरी करने हैं ampoule of और glass. You see streams of एक color बंदे को जो देख pour रहा है. onto the thick, glossy piece of paper, मेरी stream rolling देखो out. please. मेरी stream देखो. In case we need it. Yes, it is pretty cool, isn't it? It contains insight to the victim's It's in the person. game. By his build, I'd say this was a man of physical violence. The story he wanted his body to tell was important to him. It is his letter to us. Someone should decipher it. मेरे कोई बढ़िया We story need to game show खेलने it का मन around. कर रहा है मेरे को भाई. और भाई आपको कोई क्या? story game कोई crazy. Sure. एक Just सेकंड। don't Persona lose it. 5. The glossy-eyed corpse looks by, Mortal Kombat 1. his mouth mute and his skin as colorful as the chemical rainbow on the photo नहीं खेलनी paper, मेरे को. teeming with opportunistic organisms. मैं Hogwarts Legacy खत्म कर दूं क्या? Of course. Come back later, Corpo. Amuse yourself with my frank manners and my memento mori. As you narrow your eyes, the monster before you blurs into a violent mess of green and pink. Only the lower extremities are pink with a dash of blue. His fatted hands, thighs, and his neck, just above the noose. The rest of the corpse appears dark green in the cold spring air. I think How should I know why you are Last of Us sprinting, officer? Part 2 remastered भाई ये कितना था? God of War. Oh. You are trying to assess lividity. The monster comes back into focus, an explosion of color coursing with dark marbled veins. His stomach appears pregnant with something. Black liquid streams down his thigh and onto his boot. So, what do you think? I do. Most of them are post-mortem. Maybe even all of them. The delinquents have made our jobs harder with their little sport. Stop talking in riddles, coin slot. He means you fucked him up good, Kuno! Fucked him up बिरयानी हो brutal जाती like! पूरी तो. I think he was upright Mala immediately yata. after death. Blood has gathered in his hands and feet, and his neck. The noose acted like a tourniquet, keeping the blood in his head. The hypostasis here is in tune with the hanging. That's what I think. There's always a chance. We should check for ligament marks on his neck to see if they're in tune with the belt. We'll have A pool of blood and feces has eaten into the frozen mud below the man's feet. Purge liquid is dripping into it, drop by drop. The victim appears to have contained no more than half a kilogram of digestion at the time of death. The fuck he's saying?
Talking about shit. Maybe. I agree. There are crow's feet in his eyes. He's laughing silently. Totally dead. Dabba-doob-doob dead. But there is no breath to catch. Only the cadaver filling the air and your nostrils. He slowly rotates. Are you sure we finished the preliminary examination of the cadaver? We might miss some of these things once he's done. The steel-reinforced belt presents a unique challenge. I brought chain cutters, but I don't see a good angle of approach to the belt. The cadaver is a good 1.2 meters up. Neither one of us can reach the belt without assistance. And even if we do, there's the question of cutting it. I was really hoping we wouldn't. The Union appeared to be suspect in this case. It seems like... Confirmed. It's unsafe. But what other options? Climb up there and saw the branch? There has to be a less risky way, with less falling down of trees. भाई बेस्ट बिरयानी कहाँ पे होती है ओडी भाई? हैदराबादी खानी है क्या? हाँ हैदराबादी. पैराडाइज बिरयानी. अबे रोहन से कॉल कर. पैराडाइज तो बैंड कुछ है ही नहीं. सेकंड. हेलो. अच्छा. फ्लाइट का हाँ अबे थोड़ी देर में आ जाओ डिस्कॉर्ड पे भैंचोद. डिस्कॉर्ड आ जाओ थोड़ी देर में कर देंगे सीन सॉर्ट. तेरी मर्जी. शाम तक आ जाओ. शाम तक आ जाओ कोई सीन नहीं है. ठीक है ओके. अब कौन सी फ्लाइट बच गई बहुत भी? अभी थोड़ा सा बिजी था. शाम को आ जाओ. चल ठीक है ओके. हाँ हाँ ठीक है सही सीन है. ओके. तेरी माँ का सोच. अभी कौन सी फ्लाइट बची भाई? अरे ये भैंचोद यहाँ आएगा ना दिल्ली. अच्छा वो फ्लाइट. यस यस. कौन रोहन भाई थे? यस. और ये मोहन भाई इनकी फ्लाइट पता नहीं भैंचोद. मोहन भाई तो देख भी नहीं रहे. आई थिंक मैं ही देख रहा हूँ सिर्फ. भैंचोद डिस्कॉर्ड क्यों नहीं आ रही है? पूछ कॉल करके पूछ भाई. बहन का It शॉट. absolutely will not, officer. That's not how physics work. It will Also maybe cut biryani. one thread loose. Yeah, now we're talking. Entertain the... They'll miss. The pigs will miss Kuno. The lieutenant is undecided. On one hand, he wants to shoot some gun. On the other, it's an awfully stupid idea. Silence. With his elbow sharp, the lieutenant unzips his jacket and produces a lightweight firearm. He drops a paper cartridge in the barrel, separates the scouring stick, and gives the cartridge 5 tucks. He then steps back and assumes the fellow's desk position, taking aim. The corner of his eye twitches. His finger is on the trigger. He's gonna fucking miss. Sure. The kid's voice is drowned in a shrill blast that echoes off the walls of the surrounding tenements. A cloud of smoke slowly parts in the air as... God damn it. He feels bad about his eyes mostly, just having bad eyesight, probably from a young age. Whatever you do, do not console. Fucking idiot! Kuno could have hit it easy.
But then Kuno's not fucking handicapped, is he? I have to say, it's beginning to look Hardly really unlikely we can get him down without assistance. It's bad as it is, us shooting firearms like punks. Go ahead, I'm not stopping you. Just don't lose it. They only have one gun. हेलो जी जी सर, आप सेकंड फ्लोर पे आ जाएंगे। जी वो खुल जाएगा गेट, उसको घुमाएंगे तो खुल जाएगा। पैर में लगी हुई है मेरे, प्लीज आ जाओ। सेकंड फ्लोर, सेकंड फ्लोर। जी जी थैंक यू। This is the sorriest pair of pigs Kuno's ever seen. Yeah, take it, you fucking banana boyka. Take it and shoot yourself in the mouth. The cold piece of bakelite and gunmetal is surprisingly light. Your fingers fit right through the guard, instinctively resting on the trigger. The fuck are you waiting for, Kuno? Kuno is silent. Aggression gathers in the air. The trigger feels delicate and ready to break under your finger. एंड जो सोया चाप बिरयानी कौन खाता है भाई? पेशावरी छोले बिरयानी कौन खाता है भाई? पनीर 65 बिरयानी कौन खाता है भाई? नाम भी नहीं सुने मैंने ये सब भाई कभी। मालामाल चिकन दम बिरयानी, क्रेजी। I wanna cheat with you. You boy. I wanna cheat with you.
The buckle comes into focus in your sights. You stand with your feet planted firmly in the ground and your left hand supporting your gun arm. Why don't you just shoot yourself in your mouth? At least you won't miss. This isn't mere boundary pushing. There is a true suicidal rage in the kid as she's provoking you. अरे भाई. Your field of view narrows. The branch slowly moves, becoming entirely two-dimensional. The metal buckle glimmers, slick with the falling rain. The corpse slowly rotates. As you wait, your breathing slows down. Some mosquito-like organism buzzes in your peripheral. Look, he's crying. You gonna cry now, fucking faggoty? I agree. Enough gunslinging for today. We need to access the harbor and ask the leader of the Union to have it taken down. They have the tools, and they have men. An intricate web of blue lines stretches across the torso of the hanged man, from the right shoulder to the solar plexus. Each time the lines intersect, a small white star is formed in their crossing. Hundreds of fading asterisks riddle his skin. Their concentration is highest around his heart. It still kind of looks like a map of the stars in the night sky, but something's not right. For you to discover, you've gotten as far as you will without assistance. Someone close to the victim might know. Gone. All around you, rain falls on the great city of Revachol. Rain drips from the eaves and floods the gutters, washing the filth away. The spring thaw must be here. The snow is melting. Looking up at the sky, cold water dripping from your hair. Bloody hell, यार. Fuck. अरे यार. Grey sky like great battleships, clouds colliding with one another. Rain falls down on the world. Shit. यही होगा. Happen to have. Perfect. Your shirt sticks to your chest. The shoulders of your disco blazer grow heavy. The cold finds its way in under your skin. You shiver, and the city shivers with you. You're not dressed for this weather. You should get an overcoat or a patrol cloak. This rain will not let up anytime soon. You should get a raincoat.
There's a freight to the east. They sell them there. I think I'm good. Lots of there. A striking woman leans against the cabin top of her sailing boat, smiling as you approach. Her green raincoat glistens with droplets. A silk scarf is tied around her throat. Good afternoon, officers. I'm Joyce. Joyce L. Messier. I represent the board of Wild Pines, the owners of the harbour. You gentlemen must be from the RCM. Nothing, honestly. I've said it to every drunk in town, and you're the first one who's responded. What is implied here? That you're a drunk? I'm glad to see you here. I was dispatched to handle a strike, not a lynching. Anything I can do to assist the RCM in this matter, I will, gladly. That is good to hear, madame. My colleague will take the lead on this interview. I should let you know that he is recovering from an unusual medical episode. Very unusual. But I can assure you of his ultimate competency. There's a trace of irony in his voice. Mischief, even. The lieutenant is hatching some scheme. This competition. How interesting. I wish you a swift recovery. In the meanwhile, you have my full cooperation, and the full cooperation of the Wild Pines group. It's hard to get a read on her precise disposition, but she appears helpful. That's the man who was killed. I'm afraid this is a discussion for once we've cleared the lynching question. Better not tie the fourth day to the bat's day on this. I hope there is something else I can... She wants to answer the question. Protocol keeps her from it. Quite a few things, I'm afraid. The information I'm to share with you includes sensitive trade secrets. For the sake of my employer, I have to ask for your names and badge numbers. Of course, ma'am. We should have introduced ourselves. I am Lieutenant Kitsuragi from Precinct 57. And this is my colleague from Precinct 41. I'm afraid he doesn't have his badge at the moment. I hope mine will suffice. How curious. Why is that, Detective? Awkwardness washes over the conversation. The woman doesn't like this turn of events. I see. So, are you saying you lost your badge during the course of this episode? Oh dear. Some kind of encephalopathic amnesia. I don't even know how to respond. I do believe you, naive as that may sound. I simply can't imagine what you gain by faking such a condition. As I said, ma'am, his technique may be very unconventional, but he is an officer of the RCM. Of course, I sympathize, but I'm afraid I simply can't share anything more until I've seen that badge.
Hang on. She's a professional negotiator. She should be open to some sort of mutually beneficial arrangement. She's a negotiator. Just float a favor at her. Insinuate. I will be frank with you. If I'm going to break protocol, I need to be able to justify it to my superiors. They're going to want to see something very tangible. You're in, but expect her to drive a hard bargain. Reports from inside Terminal B suggest it's a hub for the local drug trade. This is an open secret in Martinez. The Union controls the terminal, so it goes to reason. They're profiting from this trade. The company has tried looking into this matter before, to no avail. Perhaps someone with your authority and resources might turn over the right stones. Or you can recover your badge. Though if I may be blunt with you, it sounds like that may be a lost cause. Detective, a word in private before we continue. This is not going quite as I hoped it would, Detective. Honestly, I was expecting you to use your unorthodox technique to keep her off balance, and not volunteering to be her henchman. He's right there. Hello there, Necro girls. मैं तो बहुत ही important part में हूँ. अच्छा. तेरे रंडी रोना बहनचो बीच में. अबे नहीं मैं लिंक भेजा है. लिंक तो मैं तेरी मम्मी को भेजूँ. तेरी आवाज यहाँ पे अजीब आ रही है. पहले स्ट्रीम पे अजीब थी, अब यहाँ पे. एक सेकंड, बहनचो खाना भी खा रहा हूँ. भाई गेम इंटरेस्टिंग तो है. No doubt about it. This woman is running circles around us. She might have known about your misplaced badge all along, or she's simply an adept improviser. Either way, we've played straight into her hands. He doesn't let it show, but there is a limit to how much the consequences of your unprofessional behavior can cost the investigation. Unprofessional behavior. तो मैं ट्राई मम्मी के साथ करूं. I'm sure you will, Detective. No. If there is reasonable suspicion, we must investigate. Otherwise, she could claim we are siding with the Union, or that we are on their take. We'd never hear the end of it. What I propose is, we ask her, then we investigate, briefly. But do not share the outcome of this investigation with her. We tell her it's done, and demand for her information on the lynching. You're back. Good. What can I help you with? Is what you want to say, but it isn't that easy, is it? Look at that lady. Take a gander. Squint your eyes, bub. Band sword. मेरे पैसे भी खत्म हो गए, सबसे भीख मांग रहा हूँ मैं. Just like real life. तू देख रहा है क्या गेम?
Why, yes. Tucked No, away we need under not that a- sturdy green raincoat, almost rustic in its simplicity, a silk shirt and matching scarf around her gentle throat. While dull orange pearls hang from her earlobes, red from the cold, her light green eyes scan you, full of knowledge and worry. Wealth, now look at you, you misery-clad simian, barely able to tie your own laces. Your armpits are lakes, a scythe of booze precedes you, your hair sticks to your forehead and your underwear feels uncomfortable. भाई मैं अपने आप को ही भैंचोद गाली दे रहा हूँ. मेरा दिमाग मेरे को गाली दे रहा है. भीख मांगने जा रहा है तो भैंचो थोड़े कपड़े तो ढंग से पहन के जा. भाई लिटरली इससे मेरे को भी यही बोला. You're poor, poor as balls. You can't ask this person for money. देखिए कह You're रहा है. too You're poor, poor as balls. You can't ask this person for money. Shame? You haven't really been in the presence of gentlefolk either, have you? What shame is there to be felt in front of these dock workers, cops, and hotel clerks, but to belittle yourself in these eyes of Odinil? Oh God, the lieutenant is here too. Do not dishonor the force. And sort. As I was saying, if there's any way I may be of assistance, please don't hesitate to ask. Why, yes I am. The boat? No. It is called Cordelati 19 because that's the type of sloop it is. The word "it" feels strange. Such a beautiful boat deserves a proper name. Damn. A breeze ripples through the sails and tugs at your hair. Below, the sleek, fish-like shape of the hull parts the water. Beneath that, a resounding darkness. You're reminded of something. Or someone. My sloop? I like it a lot. It's the eel's hips, baby. I'm enjoying this part of the interview. It has so little to do with the murder we're investigating. I really do, the lieutenant thinks. Is she thrown off yet? He's looking at the woman, assessing her. Officer, I assure you I'm a highly qualified pleasure craft operator. The crowns of her teeth are porcelain, white as the boat's hull as she smiles. Qualified pleasure craft operator. So charming. Where's the damn license? I just renewed its safety inspection last month, officers. It is completely seaworthy. In fact, it's taken part in not one, but two insulindic regattas. Even finished once. Actually, you don't. The Wayfarer Act specifically denies the RCM the authority to demand anyone's operator license. It's a little-known fact among us law officials. About the boat? Good. What we do? I'm afraid I don't speak for Wild Pines as a whole. It's a job. The Pines' core competency is logistics. Container shipping, freight, that sort of thing. See those airships there, blinking? Those are the shipping side of things. And that is the terminal. Another subdivision deals with energy, oil and gas exploration. She nods.
Everything. Right up to, but not including, trade secrets. I believe the official title is Senior Labor Negotiator. In practice, I'm a grocery clerk. I relay the union's demands to Wild Pines and return with Wild Pines' counteroffer. And how are the talks going? They're not. That's the problem. The union stopped all negotiations a week ago, after that awful lynching took place. Now they won't even let me into the harbour. There's a 2-meter 20 racist behemoth blocking the gates. Yes, Jean-Luc Measurehead. Let's say I was not making the kind of progress I'd hoped for when I first arrived. And when did you first arrive? I arrived 3 weeks ago. Yes, in the middle of February. The bay was still partially frozen then. I prefer to do these things on site, like the RCM. But the strike began in December. I wasn't the original negotiator here. I took over after Mr. Gaumont hit a wall with Mr. Clare, the union boss. Mr. Clare refused to speak with Gaumont despite concessions he'd granted the union in prior negotiations. अरे बैंड के लोड़े अपना ये बंद कर दे मोबाइल अरे म्यूट कर रहा हूँ Hitoshi-san, आपका फोन चल रहा है तेरी माँ का This isn't the first time the union has gone on strike. Heavens no. There have been 2 prior strikes. Both times the union won significant concessions, including overtime pay and a medical plan. This time their demands are more, I guess you could say, aggressive. There are leaflets everywhere and banners. What did they say again? Oh yes, every worker, a member of the board. अरे बैंड के लोड़े लड़कियां मेहनत करती है लौड़ा She nods. Everard Clare is a man of the utmost integrity. If you can say one thing about him, it's that he always puts the interests of course not. Everard is fantastically corrupt. I imagine he has a thick, viscous goo where you and I have blood. He is the most corrupt individual I have ever seen, and I deal with men like him for a living. If there is anyone more venal, more irredeemably nepotistic, then it's his twin brother, Edgar. Yes, Edgar looks exactly like his brother, except for that lazy eye. He also talks exactly like Everard does, and when one's term as foreman is up, the other takes over. It's how they circumvent the term limits, you see, with a funny little switcheroo. While in office, they've embezzled God knows how much of their workers' dues. Of course. Mr. Clare told him to, how did he put it? Fuck off, midget. Gaumont is short of stature, you see. Yes. Keep in mind, this is a negotiator Mr. Clare has worked with before, and who was more than fair with him and the union. Sounds like usual aggressive posturing. तू क्या खेल रहा है बहन का शॉट जियोगे सर म्यूटेड है बहन का शॉट हाँ भाई जियो के साथ खेल रहा हूँ मैं Damn. The scabs? You mean the कर सकते huddled हैं। masses of मेरे पास Jamrock भी premium come to पड़ा plead है, for sir। work where the union refuses to? If हम लोग they like some were battle royale भी कर organised by सकते हैं अपने Wild friend group Pines के or अंदर ही its affiliates, then it would be a company नाग्या secret. को जगने दे I बहन could शॉट not share it with you. फिर शेड्यूल Not 1 right खेलेंगे now, at least. बुक पर क्या कौन सो रहा है वो ऑडी हाँ apparently Nia Hitoshi-san. ओए Of course. Fuck How man, else can I Sean. help? आजा क्या कंटिन्यू विद गूगल कौन सा अकाउंट है मेरा फोन पे It's quite straightforward.
Someone is यार तू using जीत जाएगा terminal वैसे B मुझसे to तो यार smuggle raw because ingredients पूरी from the दुनिया घूम Samara चुका and है Isla into Revachol with the Union's blessing. यो Wildfire भाई फनी है क्या suspected for years. कन्फेशन ऐसे कैसे दे रहे हो भाई Meth and अबे dextroamphetamine, अबे आदिक तेरी मम्मी GBL रहती है and यहाँ पे ऑडी various synthetic कोठा psychedelics. Honestly, it might be quicker to say what you can't make from the stuff. क्या कहाँ से आ रही है आवाज? क्या गेम की आवाज? अरे आवाज आ रही है मेरे अरे क्रोम की वॉल्यूम 0 कर अरे Yes, but you won't get anything out of Evrat and the Dock Workers Union. Still, every chain has its weak link. The lorries. Someone needs to move the ingredients from the harbour into the city. Once they reach Jamrock, they're distributed to a network of local manufacturers well beyond our grasp. But in transit, they are vulnerable. Perhaps you've noticed that a number of lorries are tangled in a traffic jam at the roundabout just now. Interview the drivers who are still hanging about. One of them might be waiting for a crucial shipment. I'll be explicit. If you find this driver, I will share company secrets with you. You'll be indebted to her, in a way, but one step ahead of the Union in another. How do you think they're financing this strike? There are thousands of unpaid dock workers going strong for the 4th month straight. There was a shakedown of local businesses preceding the strike. Many were squeezed to bankruptcy to fund it. With all due respect to these desert cacti, the contents of a few cash registers cannot provide for 2,000 men. The local businesses can scarcely provide for themselves. Precisely. Smuggled out of that very gate at night, most likely, then loaded onto lorries and driven to Jamrock. You simply need to find one driver who will open up to you. It sounds like she tried looking into it herself, though she's clearly not the type your typical lorryman would confide in. No. We asked East Motor Track to raise the drawbridge. The road company is a partner of one of our subsidiaries. However, this is a limited time opportunity. Once the complaint has been processed by the Trade Committee, they'll have no choice but to lower the drawbridge, and the operation will continue. Thousands of litres of raw ingredients will pour onto the streets of Revachol. Not the east across the river, but the west. The vulnerable, the weary. Well, at least this solves one mystery. What is that, Lieutenant? Why I had to call East Motor Track and beg them to open a drawbridge for me. I'd wondered since I first drove in, on my motor carriage. I am sorry for the inconvenience, Lieutenant Kisaragi, but we need them trapped here. This is a unique opportunity. I'm sure you understand. She simply nods. Of course, Detective. क्या कह रहा है तेरी माँ का सॉर्ड? The fuck देखो कैसे देखो पता कैसे आप क्या बोल रहे हैं जब बैंड के सॉर्ड तू डेफ है दादी को सुना कैसे दिया? Inside, you see a set of steering levers, a radio microphone. Hole finder. तेरी माँ का सोद. Players guest कर दिया ना. And so I
Please, Anya, I'm a Neko Yo. girl. Your whole finder, what? स्टार्ट कर रहा हूँ, स्टार्ट कर रहा हूँ सीधा ठेके पे आएगा भाई। स्वीडन से क्यों है बहन के लौड़े तू? स्वीडन से कब से हो गया तू? गेस्ट कर दिया। गेस्ट? ट्रैफिक जैम लगा हुआ है इधर, बैंड शॉट। कहाँ पे? ए, मेरी स्ट्रीम नहीं देखनी भाई। देख रहा हूँ क्या? हाँ। अरे भाई यो, मैं देखा नहीं था। ना मैं अपनी स्ट्रीम ऑफ करूँ क्या? तुम लगा भी दिया? सुबह सेव करूँ भाई। .cz था वेबसाइट के नाम में। अरे मैं देखा ही नहीं। मैं तुक्का मार दिया। अब बताऊंगा। ओए थोड़ा पॉज करते हैं, इन्वेस्टिगेशन हो गया। जियो के सर थोड़ी देर में। इतना टाइम नहीं आएगा पाजी। क्यों? पैंट शॉट पहुंच गया गोवा साढ़े 65। माँ का शॉट गोवा में क्यों है भौसड़ी के? अरे बहन शॉट, ये सब स्ट्रीम पे नहीं दिखा सकता। पैंट शॉट क्या स्ट्रीम पे नहीं दिखा सकता? ये इसकी मम्मी जो सुध रही है। भोसड़ी के ये स्ट्रीम कर रहा है लौड़ा। क्या स्ट्रीम कर चोरी ना किया कर भाई, बकचोदी हो जाती है थोड़ी। क्या हो गया? भाई मेरा व्यू देखो, इतना सही बेंच, इतना बढ़िया व्यू है मेरा। कहाँ है यार? अरे सेक्स व्यू है भाई। सारे कंस्ट्रक्शन चल रहा है भोसड़ी के। हाँ तो इसमें वो जो वो अच्छा वो I know exactly what you mean ठंग अबे कहाँ पे है गोवा में? नोवोटेल। अरे पैंट शॉट हेल ना क्यों भाई? यार आया था कोई अच्छे रिजॉर्ट में रह रहा होगा। भोसड़ी के फ्री में रह रहा हूँ। तेरी बंदी तेरे साथ है क्या? अबे चूतिया है क्या भाई? मैं अभी वर्क ट्रिप पे आया हूँ। तो can't have fun during work? Have fun with my mummy bro, all the time, on and off work. मैं हूँ रेसिस्ट, मैं लगा रहा हूँ सीधा मेक्सिको सिटी। हाँ। अबे एक तो ये भाई मम्मी वाले जोक नहीं मारने, गंदे जोक मत मारो। How did you know Puerto Rico है भाई? कैसे? साले झाड़ जीपीटी यूज कर रहा है भोसड़ी के। मैं तो हर बोर्ड पे देख लिया, कुछ जगह नहीं लिखी थी। चैट जीपीटी यूज कर रहा है क्या लाडे? क्या लिखा था उस पे? आई थिंक पराना स्ट्रीट या ऐसा कुछ लिखा था। पिराना स्ट्रीट, अच्छा हाँ पिराना। तो तुम अमेरिका हो ना बैंड शॉट। सैन होस्ट तुम ही हो भाई, विदाउट होज। ये तो ये भाई हाई आईक्यू जोक मार दिया इसने भाई। हाई आईक्यू चुटकुले मार दिया। लो आईक्यू बंदे ने हाई आईक्यू जोक मारा। This is the humor expected from APS kids. यो ना भाई। Yo hole finder, interesting. I don't know man. I don't know कहाँ पे exactly. अबे yo what the fuck is this? Jeju-do Island. कनाडा है भाई, ये तो हम दोनों को पता होना चाहिए कनाडा है। हैंचोद क्या करूं मैं इस जगह का? भाई तो हिमाचल प्रदेश लग रहा है, नॉट गन। हिमाचल तो नहीं है भाई। हिमाचल तो नहीं है भाई, गोवा तो नहीं। तो गोवा में बिजनेस क्या कर रहा है भाई? क्या बिजनेस होता है गोवा में? ड्रग्स भाई चुत्ता है क्या साले? अंग्रेज लड़कियां छिड़ रहा है। महिंद्रा को महिंद्रा ने क्या कर दिया देखो? मम्मी शॉट दी इसकी। महिंद्रा का इवेंट है भाई, कोई मैं जो थार वार चलाऊंगा मैं आज, देखते हैं।
डैम भाई यार मैं गलती से 360 घूम गया तो मेरे को नहीं पता, मैं जितना आगे गया उतना पीछे जा रहा हूँ समझ ही नहीं आ रही सड़क ब्रो, सेम है हर जगह। भाई व्हाट द फक इज दिस प्लेस भाई, जो सही में वियर्ड है। This could be like anywhere man, मतलब based on the sun direction. ओए ओए ओ ना भाई, भाई उल्टा मुड़ो तो लेफ्ट स्वेट साइड पे, साले, ऐसे मुड़ो तो राइट साइड पे सन। ऐसा स्वेट है भाई। ना भी नहीं पता मेरे को। मैं तो चल ही जा रहा हूँ, रोड ही नहीं खत्म हो रही, कोई बच्चा रोड ही नहीं नहीं, अबे हाईवे पे हम पता नहीं क्या है ये। बोर्ड तो होना चाहिए। देखो यार, मैं तो एजुकेटेड गेस मारने वाला हूँ। यो अच्छा ओके ओके ओके। होपफुली प्रेशर में आके तुम भैंस जो थाईलैंड डाल दो। रोड्स काफी पतली हैं तो आई थॉट यूरोप होगा। ग्रीस। डैम। क्या भाई, नो सही नहीं हुआ। नहीं गेस कर सकता था मैं। भैंचोद क्या है ये, सेम जगह ही है पर रोड नहीं है अब। नार। नहीं थोड़ी टूटी हुई रोड है, प्रोबेबली फकिंग कुछ। ओए टॉवल इतने सारे क्यों सूखे हैं भैंचो, कितनी बार नहाता है बंदा यार, भैंचो डिफरेंट डिफरेंट टॉवल से नहाता है। लुकिंग अ बिट थर्ड वर्ल्ड, नॉट गोना लाई। थर्ड फोर्थ वर्ल्ड लग रहा है भाई ये तो वर्ड। लिथुआनिया, लेट्स गो। लिथुआनिया भाई, व्हाट डू यू हैव अगेंस्ट लिथुआनिया भाई? है भैया वो थोड़ा, मेरा फेवरेट सीएस प्लेयर था भाई वहां से। एक्चुअली लिथुआनिया तो नहीं भाई, जनरली ऐसी कुछ भाई पुअर ईस्टर्न यूरोपियन कंट्री से लग रही है। हाँ भाई मैं रोड ही नहीं है, रोड ही नहीं है, और लाइक इंडिया जितनी बुरी हालत नहीं है, थोड़े माउंटेन्स भी हैं, पता एल्प्स या कुछ, हू नोस। 1.5 डैमेज है, रिस्क तो नहीं ले सकते। हमें पोर्चुगल लो है के लड़ो लो, 10 डैमेज दे, 15 डैमेज दे दिया, खुश हो जा। अरे पोर्चुगीज था लैंग्वेज वहां पे, दिखा हुआ था क्या? फक, वो लैंग्वेज कहीं दिखी नहीं। अबे ये सड़क तो टैम भाई, सड़क पे मैं सो सकता हूँ, मैं यहाँ से खाना खा सकता हूँ, इतनी क्लीन सड़क लग रही है। ट्राई मम्मी को सॉर्ट सकता हूँ। जर्मनी probably. Okay, I know where this is. I know exactly where this is. Oh fuck bro, क्या मैं सीन है? रहता था। अरे अरे नहीं भाई ये तो बिहार है भाई। ये तो भाई तो सड़क नहीं होती बिहार होता तो चुरा लेते सड़क इंडिया वहाँ पे। सुपर पावर 2050। हाँ भाई, ये लेटर काइंड ऑफ क्लू लग रहा है। मैं मुझे बोर्ड पे लिखा था, सर्च कर लेना चाहिए। ओए क्या? मेरे को नहीं पता, रैंडम प्ले आसपास होगा बट फक, मेरे को भी लग रहा है आसपास होगा मैं। ओके, बहुत न्यू सीड है। हाउ डिड यू नो इतनी, हाउ डिड यू नो इतनी ऊपर है? हाउ डिड यू नो इतनी ऊपर है? मेरे को नहीं पता था, मैंने सेंटर में लगाया था, इसलिए मैंने बिल्कुल सेंटर में लगाया था। चीटिंग कर रहा है भोसड़ी, ये कुछ चीटिंग कर रहा है, मागा शॉट इसका। मैं स्वीडन के सेंटर में लगाया, देख ले। हां भाई ठीक, आ जा, एक और लगा रहा हूं मैं इन गेम है ना। मेरे को पता ही नहीं था भाई, मेरे को स्वीडिश देखी बस वहां पे, तो मैंने बोला स्वीडन पे ही लगा दूं। अब मुझे पता था स्वीडन है, बट ये नहीं पता कहां पे कर सकते हैं। आ जाओ आ जाओ। ओके, यहाँ पे तो लिखा दिस इज लाइक द मेमोरी ऑफ अ टाउन भाई। व्हाट द फक इज दिस भाई? टू डिटेक्टिव सीजन 1 टाइप शिट है ये तो। What the fuck, freaky आ बेंचो बिस्किट। डैम भाई, तेरी मम्मी की याद आ गई मेरे को। ना यार ये दिस इज डेफिनेटली it should be, but it could also be Canada भाई, but Canada वाला कनाडा 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 मैं जाना। But where? Oh, ये लिखा तो है।
कहाँ लिखा है, क्या लिखा है? अबे क्या है, क्या क्या हो गया, क्या लिखा क्या हो है? गया, मैं क्यों बताऊं? नहीं नहीं, क्यों नहीं बताओगे? कहीं ना कहीं लिखा होगा, तो तुमने गेस क्यों नहीं किया अगर तुम्हें पता है तो? मैं वो जगह ढूंढ रहा हूँ मैप पे क्यों भाई, बट मेरे ऐसी को कौन दिख सी? नहीं रही है भाई ऐसी कौन सी जगह है भाई जो मैप पे नहीं दिख रही तुम्हें? यार आई थिंक और आई नो मेरे को, साइकिल अलाउड नहीं है इस रोड पे। यार मैं अभी जगह नहीं ढूंढ सकता, पता है, बहुत मुश्किल है। मेरे को लाइक अंदर से एक आ रहा है गैस, बट मैं श्योर नहीं हूँ कि वो सही है कि नहीं। हम्म, अच्छा, रोड ही खत्म हो गई इस तरफ तो। ओ भाई, मैं यार मेरे को एग्जैक्ट लगाना है बट मेरे को मिल 5 नहीं मिनट में रहा आ रहा है। हूँ, 5 मिनट में आ रहा हूँ बेंचो। नॉर्थ वेस्ट ऑफ दिस। ओह, हो सकता है। इज दिस फ्रेंच तो? आई थिंक आई नो वेयर दिस इज, इट इज, आई थिंक सो, आई हैव अ फीलिंग। बिकॉज ऑफ दिस वर्ड जो बीच में जो वर्ड है उसकी वजह से। लगा दिया तूने? लगाने वाला हूँ मैं, तुम बताओ। मैं बताऊं? मैंने ओए ओए लगा दिया। ओए, रुक। ओह शिट ब्रा, तुम तो उसी जगह पे जा रहे हो जहाँ पे मेरे को नहीं जाना था। ओ नो नो, ओ, तू रहता है क्या वहां पे साले? मैं नहीं, मैं गया हूँ वैसे इस तू साइड, गया है? अच्छा, मैं बोर्डो गया हूँ ऊपर। नानतेस क्यों गया भाई तू? नानतेस क्यों गया भाई? वहां पे एट एट लिखा हुआ था, आई थॉट बेंचो एट टू ब्रूट टाइप शिट है, अरे इटली होगा। आगे बोर्ड पे लिखी हुई थी जगह जगह स्ट्रीट का नाम। बेंचो, डुरैंड डुरैंड। बेंचो ऐसी सड़कें आ जाती है ना यार, खाने का मन करता है यहाँ पे। ये तो पिछले वाला ही सेम लग रहा है, पराठा। पराठा? अरे बोर्ड पे लिखा हुआ था पराठा। बोर्ड कहाँ से आ गया यहाँ पे? अरे तू ऑपोजिट गलत साइड पे जाता है तू हर बार। बेंचो, इंडिया, हाँ इंडिया तो नहीं होगी, गुजरात हो सकता है। गुजरात? गुजरात हो सकता है भाई। नहीं आई भाई, फकिंग डेड भाई, मैं तो गेस कर रहा हूँ भाई एकदम। ये है आई थिंक बोलो थोड़ा कंट्री साइड भाई, एक बार मुझे स्पैनिश। एक भाई ट्रक का व्यू भी मिल जाना मेरे को, सब सही हो जाएगा। एक स्पैनिश स्पीकिंग है, इतना मेरे को पता है, स्पैनिश स्पीकिंग कंट्री। हाउ डू यू नो? एक समय बोर्ड आ रहा है सामने। परादा लिखा है ना बोर्ड पे। कौन सा बोर्ड? इस बोर्ड पे अरे लिखा है तो। बस का बोर्ड है, उसके नीचे पराडा लिखा है, पराडा स्टॉप होता है। व्हाई वुड यू हेल्प मी? अरे वर्दी है। जय माता दी। ओ यो यस 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 निया। हम्म, अच्छा था ये तो। डैम भाई, ऑडी वो भी टैक्सी है, डैम भाई। भाई ये रैंडम सड़कें क्यों आ रही है? आई थिंक मैप चेंज करना चाहिए हमें। आई मीन गाड़ियां तो सड़कों पे ही चलेंगी, फिर सिटीज क्यों नहीं आ रही? ओए Okay, this has to be this. Fuck, but like, I don't care फिर as long as तू प्रेशर में आके कहीं पे लगा दे। I don't know भाई, मैं तो थोड़ा रेसिस्ट होके, अरे fuck भाई,
भैंस लक्समबर्ग भाई एनेक्स कर लो यार इसको, भैंस क्यों एक्सिस्ट करता है ये ना। ये तो अंबाला जो क्या ही है, ये बैड नेबरहुड है भाई, बैड नेबरहुड है ये। हुड है भाई, हुड। हर दिन यहाँ पे लाइक स्ट्रीट वायलेंस होता है, हिट एंड रन। सी हैं? ओके ओके। फक। वहाँ फ्लैग था लगा हुआ। हाँ, किसका चेले का फ्लैग? डैम भाई, मैं देखा नहीं फ्लैग। ये तो रशिया लग रहा है, fucking सोवियत यूनियन टाइप शिट भाई, डिप्रेसिंग। Okay, maybe I'm right, maybe I'm right. बट यार बहुत बड़ा है रशिया, कहाँ लगा वो? रशिया में आई डाउट उन्होंने अलाउ किया होगा गूगल कार वियर्ड एस सिटीज में, या वही मैं सोच रहा हूँ लाइक। यो पुराना हो सकता है ना, 2000। Get fuck it, भी बॉल भाई, sometimes अरे भी अरे, बॉल। ऐसा कहाँ मिल गया भाई तेरे को? कुछ मिला नहीं, मैं तो बस कहाँ होल लगाओ? फाइंडर को प्रेशर में डालना चाहता हूँ ताकि उसको होल ना मिले। Fuck it. ना भाई, what the Right fuck? side. What? Yo! How? Yo! No, bro, you are cheating Yo! भाई। नहीं, कुछ भाई गड़बड़ है। नहीं। ये तो भाई मैंने तो रैंडम लगाया था, तो मेरे को समझ Bro, भी नहीं आ रहा था कहाँ लगाओ। I have no idea वहाँ पे fucking civilization भी exist करती है भैंचोद उस तरह। What the fuck भाई you mean? मॉस्को, यूक्रेन क्यों किया तूने? I thought Ukraine होगा because like Google car शायद इतना allowed now fucking यही रशिया में आता है घूमने को। रशिया पे। मैं चेंज कर रहा हूँ, वर्ल्ड की जगह मैं डाल रहा हूँ इंडिया। कुछ अब देखते हैं हाँ। भैंचोद। अब आ जाओ भाई। तो भाई ये नहीं बहन पता के भाई। भैंचोद कैसे कर, रशिया वाला तो incredible। तुक्का था भाई पूरा वो तो मेरे। ओए I मुंबई। think इंडिया है भाई ये तो। क्या? Okay, I know where it is. I know exactly where it is. और मुझे बस ये नहीं पता कि वो मैप पे किधर है। भाई ये वाली सिटी है, देखो ये। पर ये नहीं, मुझे पता नहीं कहाँ है मैप पे, कहाँ है। ये रहा ऊपर, ये रहा। डाल गेस। ओ तूने सिटी के बाहर लगा दिया। पाग भाई, इमरजेंसी में था, मुझे पता नहीं इंदौर कहाँ होता है भाई। I don't know भाई, मुझे तो कल पता चला था कि नागपुर fucking महाराष्ट्र में है भाई, मेरे को लगता था कहीं और है। भाई what the fuck? ओए ये नहीं देखा था मैंने जो तू देख रहा है अभी। ठीक है। What do you mean? तू मेरी स्क्रीन क्यों देख रहा है? वो अब देख रहा हूँ ना, अब देख सकता हूँ, स्पेक्टेट कर सकता हूँ मैं। यार डाल सकता हूँ। Fuck you. Hell yeah. ओ तमिल गैंग भाई, जो 4 साल बिताए हैं, 5 साल मैंने, ठीक है। बकरी में ओए कनाडा थी, मारा जाएगा। वो कनाडा में था मैं तो। ये क्या है? पर कहाँ वो? क्या? मोस्ट प्रॉब्ली शायद वही होगा, प्रोबेबिलिटी वाइज। क्या?
भोपाल चलो ठीक है. So anything, I'll take anything I can get भाई. इंडिया बैंड ही भाई. हिंदी पढ़नी नहीं आ रही थी, तुमने बताया तभी समझ आया मेरे को. बहन चोद, ये तो पुथेरी लग रहा है भाई, यहाँ पे मेरा कॉलेज था. ओए ओए वही है ना. What the fuck भाई, कहाँ था तेरा कॉलेज? मेरा कॉलेज तो था यूएस ऑफ ए में. ओए अरे अरे यार, केरला में भी. यस. भाई इंडिया को हम जानते हैं मारा जाएगा. अबे तो रशिया को तो जानता होगा भाई. नॉर्थ इंडियन में दिखा रहे, एक तो अच्छा ही लगा मेरे को. वो तो सेंसर्ड क्यों है बहन? सेंसर्ड. वो दीवार पूरी सेंसर्ड है. बचपन करियर एकेडमी क्या ये? ओके, वेयर इज इट? किधर? वेयर? अजमेर का होता है वेंचो, अजमेर का ये रहा. वेंचो. ओ नो. अरे वेंचो, ये तो अमित को पता होगा, ये तुम्हें पता होगा भाई, तुम तो पहाड़ी हो. पहाड़ी थोड़ी होगा. पहाड़ी लड़की नहीं काटती. टाइप नहीं ब्रो, पता करना पड़ेगा. कहाँ पहुंच गया मैं? What the fuck is this place भाई? अच्छा, गूगल गाड़ी इंडिया में मैं जो ड्रग्स पे होती है क्या? हाँ. सही में मारुति 800 ही है. क्या तुम्हारा घर है क्या? ओके ओके ओके, यू आर द फकिंग गोड भाई. 2v1 हो रहा है यहाँ पे. ये कौन कौन बता रहा है तेरे को? मेरे को सुनाई क्यों नहीं दे रहा है? मेरा रूममेट. अच्छा अच्छा. यहाँ कर देता हूँ. ओए ओए ओए. What? Dude, you lied to me. कैपिटल था वहाँ पे, वो कैपिटल है. वहाँ शिलोंग लिखा हुआ था एक जगह पे. एजवाल लिखा था वहाँ पे. Damn bro. Okay, अब तुम नहीं जीत सकते because ये मेरा एरिया ऑफ एक्सपर्टीज है. ये मत करो भाई. मैं इस गली में रसम खा चुका हूँ. भाई यार. अबे राहुल गांधी की फोटो क्यों है यहाँ पे? What the fuck? ये तो सही नहीं है फिर जगह. इशू होगा. Oh, yeah, I have no idea. But I have a feeling. Fuck. Fuck this shit भाई. What? ओए fuck भाई यार. No भाई. 2.5 damage यार. Fuck. अंग्रेज की औलाद. Fuck. Oh shit भाई.
बहुत इंटेंस था। मैप चेंज करता है इंडिया में तो आई थिंक क्लियरली एक और पर लगा सकता है, मेरे कोई इशू नहीं है भाई। वो देखता हूँ लाइक मैप्स, पॉपुलर मैप्स, डम टेस्ट कर सकते हैं। डम टेस्ट करते हैं। Fault finder. ओके dude, I think मैं तुमसे ज्यादा डम हूँ। अरे अरे मुझे पता है कहाँ है पर एग्जैक्ट जगह नहीं पता भाई मेरे को। आई थिंक यही है जो मैं देख रहा हूँ। यस मिल गया। हाय बॉयज, क्या खेल रहे हो तुम लोग? जियो कैसे है? हाँ यस, मेरी बहन की शादी हो गई। जो जिसके तुम्हें फ्रांस जाना था। अबे तू बहन तू नाइस गुड वन। नहीं वही वाला एक जेन्युइन क्वेश्चन है। गुड वन। नहीं भाई वो तो हो चुका, ये मेरी बहन की शादी थी अभी। वो किसकी बहन की शादी थी? वो मेरी बहन की बेस्ट फ्रेंड की शादी थी। वन ऑफ द बेस्ट फ्रेंड्स। तुम्हारी शादी कब होगी फिर? मेरी शादी नहीं होगी भाई। कहाँ पे कोई होता है? लड़का नहीं बना। ये यूएस तो नहीं लग रहा यार। अरे बात ही इग्नोर कर दी भाई। सॉरी दो तीन लोग नहीं अच्छा हुआ नहीं सुना। आई डोंट वांट टू कंटिन्यू दैट कॉन्वर्सेशन। व्हाट इज द गुरी भाई क्या दिक्कत है तुझे? सॉरी मैं तेरी शादी टूट गई क्या? I was perfectly happy with him ignoring my response. जल्दी किसका नूब है क्या? तू बता कहाँ है भाई? मुझे नहीं पता, मैं तो नूब ही हूँ। डम टेस्ट है ये और मैं डम मुझे तो बिल्कुल भी नहीं आता जियो कैसे। अरे वाह बहुत ही नूब हूँ। बोल सब रहे हैं यहाँ पे आके। तेरे को क्यों नहीं पता गुरी? मैंने लगा दिया ऑलरेडी। मैं एग्जैक्ट ढूंढ रहा था। हेलना डॉट हेलना प्लीज ये मत कर। तू बिल्कुल गलत कोस्ट पे है, तू गलत कोस्ट पे है। ये मत कर। मेरा रूममेट कह रहा है, अपने रूममेट को ट्रस्ट करता हूँ। गलत कोस्ट है वो। ना भाई देखो भाई मेरा रूममेट था वो। तुम दोनों 1v1 कर रहे हो क्या? हाँ ओके ये तो मुझे पता है, ये तो बिहार में ही है। तू मेरी स्ट्रीम क्यों देख रहा है? क्या नाम है? कौन? तू? मैं नहीं देख रहा। नाम क्या है तेरा? पहले तो ये बता। नाम बोल रहा हूँ तेरा। नहीं ये AFK है क्या? कौन? ऑडी चूतिया है, मैं क्या बताऊं तेरे से। बेंच चूतिया से गेम खेले जा रहा है। क्या खेल रहे हैं? फकिंग अभी तो नहीं खेल रहा पर डिस्को एलिजियम खेल रहा था वो, और तंग आ गया, बोर हो गया। मैं उठा स्ट्रीम देखी और दोबारा सो गया। तूने क्यों नहीं लगाया? तू गधा है क्या? मैं थोड़ा लेट हो गया, मैं ढूंढ नहीं पाया। तू म्यू फिश पे क्यों लगा रहा है? म्यू फिश यार ये तो डम टेस्ट है भाई, ये तो डम टेस्ट है। अब एग्जैक्ट लोकेशन तो भाई थोड़ी ट्रू। वाह होता तो यहीं पे है कहीं। नहीं देख क्यों नहीं रहा? मेरे को देख क्यों नहीं रहा है? यार ये सब मत करो भाई। दोनों तरफ हो सकता है, वो 3 साइड है। व्यू इस तरफ का है, होपफुली सिटी उस तरफ का है। कहां है भाई? 3 साइड। अबे तू गलत कॉन्टिनेंट पे है भाई, तू गलत कॉन्टिनेंट पे है। बहन सोट क्या? तुमको जिधर भी मिले ऐसे कैसे हो सकता है? दिखाना जिधर भी मिलेगा ना। गलत कॉन्टिनेंट पे कैसे हो सकता हूँ मैं? ऐसा गार मारेगा। व्हाट? तूने कहां लगाया? तेरी माँ का सोट। भाई मेरा लगा ही नहीं। बहन सोट। भाई डम टेस्ट में तुम धमाके करोगे तो ये तो सही नहीं हुआ। तू जिधर भी मिलेगा ना, सब पता है तेरे को। तेरा ऐसा घर मारेगा। इसका ऑडियो चुदा हुआ है आज, पता नहीं क्यों। टट्टी आंधी पई। मैंने टट्टी आंधी पई। आवाज ही चुदी हुई है कांडू। मैनू टट्टी आंधी पई। कुछ सुनाई भी नहीं दे रहा। अच्छा हुआ। मैनू टट्टी आंधी पई। फक भाई मैं रिटार्डेड हूँ। तू है तो यहीं पे है तो यहीं पे। आफ्टर ऑल दिस टाइम आर्यन। क्या? सॉरी आई एम व्हाट? तेरी माँ का सोच। फाइनली आफ्टर ऑल दिस टाइम। फाइनली आफ्टर ऑल दिस टाइम का क्या मतलब? तुम बताओ कहाँ है? तुम बताओ। मैं तो हमेशा से बोलता हूँ कि वाशिंगटन में भोसड़ी के। हाँ आई नो वाशिंगटन में। साले ये वो वहाँ पे उसने स्पीच दिया था ना फॉरेस्ट गंप ने।
अबे भोसड़ी तो पता अबे रियल लाइफ में नहीं हुआ था भाई साले I hate to break it to you मैं वॉशिंगटन में कहाँ है वही तो ढूंढ रहा हूँ भाई मैं ये तेरी रहा माँ यहाँ का पे सोट व्हाइट हाउस ये रहा लेफ्ट पे वॉशिंगटन मेमोरियल है ना भैंसोट साले उसको ही उल्टा बता दे भाई उसको ही बता दे भाई तेरी माँ का सोट वेट व्हाइट हाउस तो नहीं है नहीं व्हाइट हाउस ही है नहीं व्हाइट हाउस व्हाइट नहीं हाउस है नहीं लिंकन है मेमोरियल उसके है साइड लिंकन में मेमोरियल लिंकन पार्क मेमोरियल कहाँ है लिंकन दिख पार्क क्यों नहीं रहा मेमोरियल मेरा क्लिक क्यों नहीं होता भाई ओए हो गया नहीं हुआ मेरा क्लिक ऊपर ब्रो यू आर सो फकिंग डेड भाई इंडिया हो या यूएस हो भाई आई मेरा एम थोड़ा मेरे साथ पता नहीं क्या हो रहा है ब्रो बेंचो नेक्स्ट वैसे राउंड तू में मेरे को तू लाना मुश्किल तू बेंचो वाले लीड में था भाई। तू मैं ये पता मैं है, इतने इतने मैं मुश्किल अच्छा खेल मुश्किल रहा किए था जब हैं तक ये नहीं आई थी भाई हाँ सही में इसने आके गेम खराब कर दिया मेरा Let me go. I know Bye. exactly where this is भाई तेरी I know माँ का exactly सॉट where this is पनौती बुला रहा है ना तू मुझे। मैं नहीं यार ऐसे सॉरी ऐसे एनवायरनमेंट में सॉरी नहीं यार रहना चाहती तू जहाँ पे पहुंच मुझे गए बचता पनौती ठीक के बुलाया वे जाए। सॉरी क्या यार लकी बोलें क्या आपको लकी गलती Yes. से किस्मत अच्छी है क्या आपकी इन जनरल Lucky boy। बिल्कुल भी नहीं। You're तो my फिर तो बनौती हो है ना lucky फिर boy। मेरी अच्छी नहीं है ना तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि मैं ओके मेरा दूसरे नाम की बनौती मोहन हूँ। कुमार बसनेत है। छोड़ो यार कान फाड़ दिए मेरे मादर छोड़ो मेरा मेरा नाम नाम मोहन कुमार और बसने था अब मैं ऐसे चिप बाय चिप मारूंगा एक मैं सेकंड अबे चिप चश्मे वाला प्लेयर कौन है? चश्मे वाला प्लेयर गुरी है। यस मैं औरत वाला हूँ because that's who I am people say तू तो मत बोल साले औरत की बात बेंचोट क्या मतलब मैं क्यों ना करूँ ये औरत तो की तू बात तो कैंसिल भाई हो चुका हर है दो साले हफ्ते में एक नया लिंगो आ जाता है इसकी जबान पे। अभी बहन सॉर्ट तेरी है माँ इसका का हाँ सॉट भाई। भाई आई मॉन्टेनीग्रो ये मेरे को तेरे को तो पता होना चाहिए तू तो फकिंग F1 वगैरह देखता रहता है आई डोंट नो उस टाइप अबे की सिटी है मोनेको है भोसड़ी के यस मोनाको में अब तेरे को ये नहीं बिस्किट पता होता है मोनेको भाई कहाँ है साले अबे ये रहा पर उसके अंदर कहाँ है भाई अरे नाइस तो में है क्या बेंचोट इतना छोटा सा तो कंट्री है साइड में राइट में नीस है वो साले फ्रांस है वो बैंड का सॉर्ट है इसके राइट में अच्छा देख ये मोनेको रहा इतनी चूतड़ छोटी कंट्री है क्या ये कंट्री है क्या बहन हाँ बैंड का सॉर्ट अबे थोड़ा इधर उधर घूम तेरे अरे को वो सब दिखेगा बेंचो इसके आसपास का पानी पानी अबे बहनचो मुझे ये मैप ढूंढना पे देखना राइट पे देख ये चाहिए मेरे को ये मोंटे कार्लो तो ठीक है कसीनो ढूंढना साले कसीनो क्यों ढूंढूंगा बहनचो तू बता वही तो मोंटे कार्लो कहाँ है कसीनो ही तो है लोड़े भाई लसन रेस होती है यहाँ से हाँ वही सामने रेस होती है वही कहना उसको तो पता होगा बट लगा दे कहीं भी बहन ये ये तो रहा रहा ये रहा कसीनो दे कसीनो मोंटे डे कार्लो मोंटे कार्लो अब साले कसीनो पे नहीं ना लगाना था बहन का शॉट ओए बढ़िया हाँ बढ़िया ये गोल वन चक्कर नहीं वन दिखा ले ले भाई ले बहनचो ले ले भाई शंभू चौक नहीं दिखा तेरे को साले शंभू चौक शम्मू चौक का है अब ये तो इसके पता है भाई ये तो पता है मेरे को भाई घर ये के तो सामने पता वाला है चौक है इसका शंभू चौक में नहीं यहाँ भाई भी नहीं भाई है भाई साले कहाँ जा रहा है? एक्चुअली नहीं यहाँ नहीं है जूम आउट कर बहन के शॉट अबे यही तो था अबे साले मेक्सिको है लोड़े बोका चोदा की अबे यही है अबे ये मेनलैंड का है भेंचो दी आइलैंड है साले देख क्या लिखा हुआ है उस पे भेंचो सदर्न मोस्ट पार्ट ऑफ मेनलैंड अमेरिका हाँ तो यहाँ बहामास नहीं अपना बहामास अलग कंट्री है लोड़े के लसन यस 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 इसलिए कह रहा हूँ यही होगा देख ले यार भेंट शॉट लगा दे यहीं तो फक चल लगा रहा हूँ मैं देखी जाएगी हाँ यही है एक्चुअली हाँ शादी कैसे तो गई भोसड़ी भाई के शादी कैसे गई हाँ बताओ It Fuck had this its highs and lows। लोज वाई फक यू गुरी वाह, लाइक कोई जिंदगी नहीं बताऊंगी है क्या आराम तेरी से बताऊंगी। अच्छा अभी तो टाइम नहीं है। अभी तो मैं बाहर जाने के लिए फिर रिलेटिव्स के घर जाना है। मैं तो शादी खत्म दहेज नहीं हुई फिर भी दहेज कितना दिया दहेज कितना ओए दिया 0। ओए वो तो तेरे को थोड़ी पता होगा चुप रहे भोसड़ी के। ओके तेरे को ओके थोड़ी ओके पता होगा ना पे होता कहाँ अच्छा ओके आई नो ओके जस्ट बिकॉज तुझे दहेज लेके ही शादी करनी पड़ेगी लेफ्ट है साले इसका सियाटल मतलब बेंच ये ईस्ट कोस्ट पे नहीं। अबे तो और जोर से बोल दे कमीने और जोर से बोल शादी लेके क्या दहेज लेके तो वो तुझे हेल्प कर रहा है तो उसे भी तो क्या तू अकेले के लिए हेल्प लेगा? यस बहन का शॉट उसने सही किया है अबे तू बहन के लोड़े तू चूतिया है क्या रोड पे था वो 5 के हैं दोनों 5 के हैं बहनचोद क्या रो रहा है दोनों 5 के हैं भाई
शादी पे चलो ठीक क्या है, मैं जा रही हूँ, शादी बाद में आती हूँ, बाय। ओके ओके बाय ये तो सफेद घर ये तो है। बिल्डिंग के आई थिंक आई नो वेयर दिस इज ये जगह तो देखी देखी लग रही है। ओए 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 तेरी माँ का याद सोड़ता हूँ। क्या बोल रहा है? तेरी माँ को याद सोड़ता हूँ मैं शॉट। अबे ऊपर हाँ मुट्ठी कर। लगा भी दिया। होल फाइंडर। होल फाइंडर कौन है? नीले ये का क्या गुरी अरे थोड़ा सा दूर हो गया। 1 मीटर She भाई, will 1 मीटर क्रेजी। भाई 1 मीटर अवे था मैं चोद। हाँ ये तो हमें तो पता है। गुची दे पराडा शारजा मियां खलीफा। साले अपना पीओवी देख भैंचोद, अपना ये पीओवी जहाँ पे अबे दैट उसको इज द टाइम नहीं देना पॉइंट। चाहता मैं, उसको टाइम नहीं देना चाहता ना मैं। अच्छा स्पीड एंड एक्यूरेसी है। यस भाई स्पीड Crazy. उसको लाइक 12 सेकंड ही मिलने वाले हैं अब। That's why I'm the goat. Shit. हाँ भाई ना मैं थोड़ा दूर ही था what the fuck. अबे अरे ये तो वापस आ गया। ये तो वापस आ गया इस बार मुझे मिल नहीं रहा ये रहा भाई। माँ का शॉट। और ये भैंचो स्वीडिश क्यों है? स्वीडिश कहाँ से आ गया भाई? भाई जिंदगी में घूमना है यार। जा तो रहे वियतडोंग। मैं वियतनाम ओनली लगा दूं नेक्स्ट वियतनाम ओनली भैंचो। अबे हाँ मेरे को भी लियो साले, मेरे को भी लियो फिर गेम में। हाँ इनवाइट कर दूंगा। अरे यार ये But सेम आ रही है ब्रो। there's दुनिया में not enough places for dumb people. ड्रॉ मान ले क्या? नहीं नहीं ऐसा थोड़ी। था ये रहा। शंभू चौक दिख रहा है ना भैंचोद? शंपू चौक का था कहाँ था? फक बहन के लौड़े शंपू चौक। अरे वो तो रहा लेफ्ट पे ये हाँ ना ये शंपू रहा। चौक। शंपू चौक नहीं शंभू चौक। शंभू चौक साले। एवरेज जेएफ कैनेडी यहाँ पे क्यों है भाई? अबे यार ये तो रिपीट हो रहा है भाई, ऐसे तो कोई नहीं जीत पाएगा। लूप है अभी साले। Who will mess up first? अबे लोड़ा है क्या लेफ्ट? लौड़ा तू? अबे हाँ लौड़ा तो मैं हूँ। फक दोबारा गेस नहीं कर सकता। सूतड़। हाँ मैं गलत तरफ लगा दिया। दे दे भाई दे दे 12 डैमेज कोई ना। क्लोज। अब भाई एक मिस्टेक, वन मिस्टेक इज ऑल इट टेक्स भाई। अबे ये कहाँ है बेंचो? मैं बताऊँ कहाँ है ये? मुझे पता है कहाँ है ये। मुझे भी पता है शायद। ध्यान से देख भौसड़ी के राइट में देख, राइट में। हाँ आई नो यहाँ पे फ्लैग्स लगे हुए नहीं हैं। नहीं 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 पीछे देख, पीछे पीछे। हाँ वो बिल्डिंग हाँ देख भाई जिसमें ये छेद है। भाई ये जो फ्लैग लगा है बेंचो। अरे पता है मेरे को कहाँ है ये। छेद का क्या करूँ मैं? अरे तेरे को बिल्डिंग नहीं पता भोसड़ी के कहाँ है? राइट हाँ। रुक जा। यहाँ नहीं जूम आउट जूम आउट जूम आउट। ऊपर। अबे कहाँ क्या बेंचो? इधर ही कहीं है। इधर नहीं है, किसी रिवर के यहीं along पे है। होता है ना यहीं पे? नहीं ये नहीं है, ये नहीं है साढ़े। अच्छा फिर यहाँ पे होगा ऊपर। अरे बहन का शॉट है तू ये रहा ये रहा साले। ये रहा ये रहा ये रहा। हाँ यही है ना? अब ध्यान से देख, है तो यही ये वैसे। हाँ उसके लेफ्ट 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 अक्रॉस द। यहाँ पे ना? अरे बुंड हिस्टोरिकल मेमोरियल में नहीं, उसके नीचे। बुंड यहाँ क्यों है? ये यहाँ पे? अबे नीचे नीचे बोल रहा हूँ जब साले। नीचे यहाँ? यस भाई यहाँ टनल वगैरह है। अबे लोड़ा ले ले मेरा। अबे थोड़ा भाई ये देखने दे मेरे जाओ को। भाई बाचो तो। यही है इधर ही है इधर ही है इधर ही है। तुझे एग्जैक्ट मिला है क्या? ओए यार बहुत। ओ यस ओ यस। जब बोला था मैंने बहन का शॉट। 500 साले जब बोला था और नीचे बहन का शॉट। तू कह रहा है बुंड साइट सीइंग टनल के पास होगा वो? तो था ना बहन के लोड़े जब। लो भाई। I have played these games before. I have played these games.
साले अब मिली नहीं है बहन का शॉट तेरे को। जब मैंने क्या मिल बोला जाएगा जब बहन ब्रो, शॉट ये देख। उससे नीचे 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 और नीचे, हाँ बस यहीं पे हाँ। अबे यार ये तो थोड़ा फक्ड अप है यार। अबे मैं तो ऊपर ही था। मैंने जब बोला बहन के लोड़े सही है 7 मीटर दूर है बहन शॉट, देख ले मेरी बात ही नहीं मानता बहन Yes, शॉट। बात तो मानी तेरी, तभी तो यहाँ खड़ा हूँ भाई। अबे यार ये तो वेंचर ईस्ट कोस्ट था। नहीं वेस्ट कोस्ट, आई डोंट नो। यही है ना? नीचे, अरे बहन का शॉट। ओ नो, ओ नो। अरे बहन का शॉट। बच गया बच गया बच गया बच गया बच बराबर गया हो गया भाई। ऑलमोस्ट अब। अब नहीं भूलूंगा, अब नहीं भूलूंगा। ओ अबे ओ इधर आई नो यहाँ पे तो वेयर दिस चोरी इज। चोरी होती है भाई, चोरी चोरी होती है यहाँ पे तो। अबे अबे एग्जैक्ट जगह देखता हूँ भाई। ये गोल चक्कर है ना भोसड़ी के, ये हाँ थोड़ी है गोल वो चक्कर है, पानी है बहन का गोल शॉट चक्कर ही वो। है। अबे अच्छा ये नहीं है क्या? अबे तू रिटार्ड है क्या बहन का शॉट। अबे यहाँ पे होना चाहिए था एक्चुअली मुझे हाँ ऊपर। हाँ हाँ तो साले थोड़ा आराम से देखा कर साले बहन का शॉट। इक्वली है भाई somehow। बात मान लिया कर, आराम से खेल बहन शॉट। उसको उसको भी तो प्रेशर देना है लुल्लू पे, नन्नू पे। टट्टी अबे आ ये कहाँ जाएगी है भाई? बहन बता शॉट। अब बता बता अब बता कहाँ है? ये तो अरे बहन का शॉट। मैप किसी खोल, मूवी में देखा है मैंने मैप शायद। खोल क्या मैप नाग? खोल मैप खोल। अच्छा तो कह रहा है नागपुर। हाँ राइट लेफ्ट 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 लेफ्ट। अबे जूम आउट लेफ्ट। हाँ राइट। अबे आई जूम इन जूम श्योर। इन जूम इन जूम इन लेफ्ट 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 डाउन लेफ्ट डाउन। हाँ 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 राइट हाँ। आर यू रिटार्डेड? यहाँ पे अरे क्यों तू होगा कर बहनचोद? ना बहनचोद, जब बोल रहा हूँ बहन के लोड़े। कहाँ कहाँ जूम कहाँ इन कर कहाँ? जूम इन कर। और अरे जूम इन कर ले लड्डे। ये ये इधर लेफ्ट 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 इधर। हाँ हाँ लगा 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 जल्दी लगा लगा ना चूतिए, जब बोल रहा हूँ बहन के लोड़े। मैंने दबाया मैंने दबाया मैंने दबाया था बैठ गए सीढ़ी मदर चोद। 42,000 damage भाई, ऑडी 42,000। अरे भाई ऑडी साले तू मिल जा भोसड़ी के। अरे भाई मैं जिधर वही भी कह रहा हूँ कि ये मेरे से मूवी में देखा है लाइक फकिंग ये क्या नाम है ये ये क्या लगा था तेरे पे? डाविंची कोड वगैरह। और ये साला बोल रहा है बहनचोद यूएस, ये कह रहा है वॉशिंगटन में है बहन का लौड़ा। चूतिया भाई चूतिया। अरे भाई बहन के भाई लौटे। ये क्या है जा रहा है, सुन मेरी बात तो मैं इसकी बात ही सुन रहा था। ऑडी साले भोसड़ी। अरे मेरे को इनवाइट कर, मेरे को मैं नहीं इनवाइट कर, मानता मेरे को इनवाइट कर गुरी बहन गुरी शॉट। मैं नहीं मानता गुरी। अरे मेरे को इनवाइट करना बहन का शॉट। ओ भाई मैं इतना नहीं बढ़िया इतना बढ़िया था ये तो। मेरे को इनवाइट 42,000 डैमेज, 42,000 डैमेज भाई। मेरे को भी इनवाइट कर दे लाडे। इनवाइट कर दो इन्नु इनवाइट कर दो। क्या नाम भोसड़ी के ऑडी मादर चोद। अरे भाई गलती हो जाती है कभी साले, गलती इंसान क्या सी होती गलती है है? बहन के लौटे। तूने इतनी क्रेजी गालियां गलती थी भाई, क्रेजी गलती लगी मेरे को तो भाई। सीन हो क्या जाता है बताऊं? यार कभी भाई कभी आई एम बहन शॉट। सराउंडिंग माय सेल्फ विद रॉन्ग पीपल भाई, व्हाट द फक। अरे वेट मैं बहन आपका का लगा रहा हूं भाई। शॉट। रुक जा मेरे को तो इनवाइट तो आने दे। कर तो तेरे को भेज तो दिया है जो डिस्कॉर्ड पे। डिस्कॉर्ड च भाई आ गया हूं मैं। अरे होल्ड फाइंडर कौन है ये? हटाओ होल्ड फाइंडर को, ये कौन है ये? तू ही तो कौन है? मैं नहीं हूँ भाई। बहन के लोड़े अभी तक खेल रहा था बहन चोद होल फाइंडर के साथ। मैं तो गोरिलपुर के हूँ भाई। ये रहा भाई, मैं गया वियतनाम। वियत डोंग। इसको हटाना, अब होल देखते फाइंडर को हमारा हटाना बहन भाई। चोद। तू हटाऊं कैसे मैं तेरा बहनचोद स्ट्रीम इसको? क्विट करूँ ना, तेरा इसको हटा स्ट्रीम। दे। आई थिंक ऑटोमेटिकली नहीं आएगा। हाँ स्ट्रीम क्विट कर दो भाई, सबके एक सब सेकंड मैं तो कैसे हटा ही करते रहा हूँ हैं, रुक अपनी। जा। हाँ बंद कर दी भाई। हाँ ठीक कर है लो जो ठीक है ठीक करना है। है। बहन का शॉट शुरू कर रहा हूँ भाई वियतनाम बाकी सीधा सूट। ठेके पे। वियतनाम सीधा ठेके पे। बहन का शॉट। रैंडम है। आई थिंक वियतनाम में है भाई। पर कहाँ है बहन शॉट वियतनाम में साला लौड़े का लास्ट सून। इधर हम घूमने जा रहे क्या? ओए क्या क्या इंटरेस्टिंग। भाई तो ये पता नहीं चल रहा कि डिश का नाम क्या है और जगह का नाम क्या है। सब तो सेम ही लग रहा है। देखो भाई छोटी सी कंट्री है, मैटर करता है तुम नॉर्थ में लगाओ साउथ में लगाओ, वो मैटर करता है। भाई चक्कर ऐसा है, अब साले ऐसे कुछ पता भी तो नहीं चलेगा भैंसोट नाम से।
I think साले हर जगह तो आसपास तो बहनचोद यहाँ स्पा है बहनचोद 10 करोड़ तो स्पा है यहाँ पे I think तुम्हें like weather wise देखना पड़ेगा. बहनचोद एड्रेस तो मिल गया मुझे हुआ हो Thank you. Thank you भाई. Thank you भाई. मगा शॉट जो हुआ हो कहाँ है अब? हुआ हाउ है. कहाँ है हुआ नहीं हुआ तो मूवमेंट है कोई. क्या बोल रहे साले? मुझे क्या पता बहनचोद बुद्धिस्ट मूवमेंट है हुआ. जय माता दी भाई, जय माता दी, जय माता दी. अरे राउंड खत्म हो गया. ये क्या साले स्किल इशू है क्या साले तेरा अरे मेरे को आवाज ही नहीं आया कि किसी ने कुछ लगाया है कि नहीं. अबे नहीं, वो टाइमर है इसमें, ये वो वर्सेस नहीं है. अबे सिर्फ गिल्टी और मैं क्यों है? तेरा नहीं आ रहा क्या कुछ? मैं भी हूँ बट मैं लगाया नहीं था. ओ मैंने टाइमर नहीं देखा था. ये कहाँ है बहनचोद मेरे को पता है कहाँ है. चीटिंग मैं मत गया कर चीटिंग मत कर साले मैं गया हूँ साले. अबे ये तो कहना नंगे लोग खड़े हैं. बहनचोद तेरी मम्मी ये होगा. ये है हनोई में. अच्छा क्यों? नो फकिंग क्लू भाई कहाँ है ये Fuck you man, fuck you then. मैंने पिछले में कुछ नहीं लगाया था बट इस बार सारा मैं ही लगा रहा हूँ. ओए हाईवे पे आ गया बहनचोद I am a highwayman. Through Oh, all the okay, coach okay. roads I did I get the idea. I ride. get the idea. You भाई get तुम the लोग को idea. डिफरेंट चीज देख रहे हैं क्या? हाईवे पे कैसे आ गए भैंसो? ये तो सिटी के अंदर है. ये हाईवे पे पता नहीं कैसा है. मैं तो गांव में था. नहीं मैं भी मैं आ किसी गया गांव में था भाई. मैं कॉलेज जा चुका हूँ यहाँ पे. लगा दो भाई पता प्लीज. नहीं बहनचोद पता नहीं कहाँ है लगा दिया भाई. फक भाई, मैं नीचे ही जा रहा था यार. तूने कहाँ लगाया? हो ची मिन Through all the coach road I did What the ride. fuck? तूने तो एग्जैक्ट लगाया. तभी तो बहनचोद बोल वो रहा हूँ हाईवे ना. था ना वहाँ पे साले अरे तुम हाईवे उल्टा तो था गए. ही नहीं. हाईवे पे क्या दुकान पे लिखा हुआ था बोर्ड पे भाई. क्या सीन है तुम्हारा? ओए खेत में आ गया बहनचोद एयरटेल के टावर लगे हैं. इलेक्ट्रिसिटी टावर है चूतिए सेम बात भाई. कौन सा बहनचोद गांव है साले ये ये मेरे थोड़ा को हार्ड है भाई ये तो. ढूंढना रोड पड़ेगा. रोलर चल रहा है भाई यहाँ तो रोड रोलर रोडे बन रही हैं साले ओए इंडिया में वियटकॉन्ग्स कहाँ के थे? साउथ के थे, नॉर्थ के थे? Weird gong. वियटकॉन्ग नॉर्थ के Duong dong. Duong song ट्राई drong. मम्मी में डोंग मेरा देख मुझे मिल गया है. भाई मैं आई हैव लगा रहा हूँ नो यहाँ पे. क्लू ये कहाँ है आई हैव नो फकिंग दुआंग जॉय पे लगा दिया मैंने भाई. दुआंग सॉन्ग जॉय. ट्रॉन्ग तो नहीं मिला मेरे को. दुआंग जॉय मिल गया. मैंने कॉन्ग पे लगाया है. कॉन्ग. दुआंग कॉन्ग पे लगाया तूने? आई थिंक सो. डोंग कॉन्ग. मैं तो डोंग होई में लगा रहा हूँ हाँ, भाई सॉन्ग कॉन्ग पे लगाया. सॉन्ग कॉन्ग पे लगाया है. मैं तो मेरी विनी में जगह लगा का रहा नाम हूँ थाई न्यूएन है भाई. थाई न्यूएन. आई हैव नो क्लू भाई कहाँ है ये क्या वियतनाम जाएगा भाई तू? लगा दे भाई साले. भेंटचोद इतना भाई टाइम नहीं है लाइफ में. 10 साल लगा ले तेरे में तो हम वियतनाम जाके वापस भी आ जाएंगे भोसड़ी के. हुआलू में आना चाहिए भाई नेक्स्ट. हुआलू. अरे बहनचोद मैं थोड़ा सोचा नॉर्थ में होगा. ओए हलिया जीत गया क्या बहनचोद ये फिर से नहीं अभी बचा है जीत राउंड. गए. एक दो और बचे हैं. साले अब तो पॉइंट नहीं बहुत है देयर इज भाई. नो रिकवरी भाई आउट हियर भाई मेरा तो बस ये गिल्टी से जीतना है बहनचोद. अरे नहीं जीत पाएगा साले एक तो बहनचोद कोई एक कैसे पता चलेगा कामियाओ. कहाँ है ये कामियाओ. कामियाओ. ओए ओए क्या हुआ? ओए क्या हुआ? क्या डरा क्यों रहा है भोसड़ी के? मिल गया क्या एग्जैक्ट मुझे अबे अब मैप तो पे नहीं मिल रहा यार. बहनचोद बस यार कहाँ मिलेगा साले मैप पे तो किसी को नहीं मिल रहा साले फक लगा दिया मैंने. भेंटचोद ये तो बहुत क्रेजी था भाई.
लक है भाई इसका बहनचोद। ओ भाई आंखें तेज है ब्रो, बस आंखें तेज है। यार बहनचोद तो नहीं मिलेगा लगा साले। दिया है मैंने ब्रो, लगा दो जल्दी। ना कुछ भाई नहीं हो रुक, सकता। हम तो पूरा पूर्ण इस्तेमाल करने वाले हैं भाई हम तो उसका। ना भाई इमोट्स भेजता तुम्हें लो। भाई मेरे को पता है यार, बट मिल नहीं रहा। क्लियरली बहनचोद तो सारे एक जैसे लग रहे हैं बहनचोद नाम। कहाँ मिलेगा साले ऐसे तो। आजो भाई। भाई लगा क्या दिया पता यार, बहनचोद। लगा दिया यार। माँ का बट सॉट। तो बेंचो गुरिया तू ना हैक मत कर भाई कामाऊ दिख गया था मेरे को, कामाऊ सीधा। कामाओ मुझे भी दिखा कामाओ, लेकिन तू ये सोच रहा कामाओ कहाँ है? एक तो मेरे से तो नहीं हैं? जीत पाएगा साले। अरे कामाऊ दिखा मेरे को, जैसे मैं होचिमिन के पास गया ना, नीचे सबसे लास्ट टाउन जो दिख रहा है मैप पे वो कामाऊ ही है। उसके नीचे कोई टाउन ही नहीं है। इतनी अच्छी किस्मत तो नहीं यार मेरी। ये तो लिटरली किस्मत ही है बहनचोद, और कुछ नहीं है। लॉक्ड इन ब्रो, लॉक्ड इन है। क्या मेरे को मैप अलग दिख रहा है, कुछ है सेम ही दिख रहा है ना? अब तो साले तेरे पास 4 आंखें हैं ना? ओए यो मेरे पास भी है, मेरे पास भी है वो भी भाई, मेरे किस्मत पास भी भी है। है। भाई बच्चे घूम रहे हैं भाई, अब मैं कैसे फोकस करूं गेम पे? ओए बहन सॉट यार, ये सब अलाउड नहीं ना है मत बहन। बैंग लिखा है अभी, लैप मत बैंग भाई। साले एक जैसे तो सारे नाम है बहनचोद यहाँ। काइंड ऑफ चिल लग रहे हैं यहाँ के लोग भैंचो, एक साथ वाली रेड कलर की चेयर्स पे बैठ के दारू पी रहे हैं भाई। दारू? अबे भैंचो ये क्या है, मुर्गियां ऐसी क्यों रखी हुई हैं? वो स्क्रीनशॉट ले रहा हूँ भैंचो, व्हाट द फक। श्रीनाथ डिस्कॉर्ड पे डाल क्या दो। कड़कनाथ है क्या? कड़कनाथ? साले चिकन होता है कड़कनाथ। आई डोंट नो, क्या वियतनामीज में? नहीं हिंदी में साले। तो मुझे क्या पता। मैं जो भोपाल में मिलता है कड़कनाथ चिकन। तुझे क्यों पता है ये? अबे क्योंकि भैंचो सही होता है चिकन साले। मैं तो भूतनाथ जानता हूँ भाई। देखते हैं भाई अब तक भैंचो। जब भी किया है ना भाई साउथ में ही होता था, तो मैं साउथ में ही लगाऊंगा। अरे वो टाइम ही नहीं देखा यार। माँ का सॉट भाई साले भाई जीत I'm गया back, क्या भाई भैंसोद? I'm back भाई, फिनिश गेम तुझसे ऊपर हूँ चूतिया, है गांड मेरा। भैंचोद हमेशा हाँ पे है, ये तो क्या बेकार है भैंचोद, ये हमेशा भैंचोद साला होचिमिन के आसपास ही है। हट साले अब इंडिया लगा दे इससे हमें भैंचोद। ये सीख, इंडिया तू हार जाएगा यार। अच्छा देखते देखते भैंड का भाई सॉट। गुरी से पूछ इतना गोड था भाई मैं। वेट कोई है नहीं गेम में शायद? मैं रुक जा रहा हूँ। सब है ना? रीजॉइन सबको दिख रहा है? अरे भैंचोद रीजॉइन क्यों हो गया? अच्छा इंडिया लगा दिया। इंडिया है ना अच्छा ये? अरे भैंचोद ये कहाँ लगा दिया साले, किसके घर के आसपास है ये? अंबाला है बेंच। साले कुछ तो बोर्ड वोर्ड मिल जाए, माँ का सॉट, यहाँ पे तो सिर्फ घर ही घर है। एक्चुअली तो मैप भी बकचोदी कर रहा है मेरे साथ। हाँ ये भाई रैंडमली लेफ्ट राइट हो रहा है भाई कुछ भी। हाँ मतलब इंडिया है भाई, इंडिया में तो कल्पना सोसाइटी इतना बता सकता हूँ मैं। मेरे को पता चल गया कहाँ है? क्यों बताऊं साले। यार हिंदी पढ़ना नहीं आता यार मेरे को, फक। मेरा रूममेट भी नहीं है वहाँ पे। यार सिर्फ गलियां क्यों है यहाँ पे, कोई दुकान क्यों नहीं है, कुछ तो आ जाए। ओएसिस अपार्टमेंट्स, डोंट लुक बैक एंड भाई व्हाट द फक कहाँ हूँ भाई मैं? कितना टाइम बचा है? 36। ओए मेरे को पता है कहाँ है। मेरे को भी पता है कहाँ है। What do you mean? बट यहाँ पे कहाँ है साले? मैं हिंदी पढ़नी नहीं आ रही मेरे को यार मैप पे नहीं मिल रहा है यार, क्या सीन है? मैप पे तो नहीं मिलेगा साले, इतना छोटा सा मैप पे मुझे भी नहीं मिलेगा, तो तुम लोग बता ही दो कहाँ पे। नहीं यार बताते हैं जब 2 सेकंड बचे होंगे। बता 2 सेकंड बचे हैं भाई, जल्दी बता। ये है भोपाल। जय माता दी भाई, जय माता दी। शिट भाई पहले बताना था। यार भोपाल ही नहीं मिल रहा था मेरे को भाई। अरे भोसड़ी के भोपाल कैसे नहीं मिल रहा? माँ का सॉर्ट। अरे बिल ही रहा था भाई हाईलाइट ही नहीं हो रहा था। कोई ना भाई, अपना टाइम आएगा जब साउथ इंडियन स्टेट्स आएंगे। साले पढ़ेगा कैसे?
आता है भाई, अच्छा आता है ये मेरे क्या है? को। अरे बहनचोद अल ओए मदीना। अब आ गया ना, मारा जाएगा अब। ओए लफड़ेबाज। भाई अच्छा पता चल गया कहाँ है ये। अच्छा हाँ, लिखा हुआ है लिटरली बहनचोद। बड़ी यहाँ पे कहाँ है साले? अबे यहाँ मैप पे तो बहन का शॉर्ट। मैं ढूंढूंगा इस बार, बहन जो बहुत हो गया। साउथ में जीतना एक ओके स्विंग ओके चेज में। गूगल। ओए ओए ना मजाक कर रहा हूँ भाई, अबे अबे ठेका है साउथ यहाँ तो, इंडिया। बहनचोद ठेका है साले। बार है बहनचोद। फक दिस शिट भाई, फक दिस शिट। दरगाह मित्ता लग रहा है मेरे को, दरगाह मित्ता में लगा दिया मैंने। लगा दे यार बहन का शॉर्ट। तूने भी लगा दिया है? नहीं अभी लगा रहा हूँ। ये ले फिर इमोजी ले, ये ले, अरे यार बहनचोद कैसे मिलेगा साले यहाँ पे? ये ले, क्या डाल रहा है, क्या डाल रहा है? ये ले, ये ले, अरे लोड़े ये ले। बे यार जी जी। बहनचोद यहाँ कहाँ मिलेगा साले? डिस्ट्रैक्ट कर रहे हो तुम मेरे को यहाँ तो भाई। मिलना टफ ही है साले। हम अरे सबको पता जल्द। है, हम सबको पता है नेलोर है, पर नेलोर है कहाँ बहनचोद? अरे भाई दिख रहा है बहुत क्लियरली हाईलाइटेड, अगर तुम बिल्कुल जूम आउट भी कर दोगे। हाँ जेन्युइन है साले। बंधा हूँ भाई, फक। चूतिया है साले और कुछ नहीं। ये कोई ना कहाँ भाई, है? अभी 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 करूंगा भाई मैं। तू तो कह रहा था बहनचोद साउथ में जीतेगा साले। ये साउथ नहीं है भाई, हम साउथ इंडियंस के लिए नॉर्थ इंडिया है भाई। ये का है बहन शॉर्ट? कुछ दिख क्यों नहीं रहा साले, इतना नो ओवर पार्किंग। एक्सपोज। ओके आई नो ये कहाँ है। आई थिंक मुझे भी पता है, पर इतना लो मुझे पता क्वालिटी है में ये क्यों लिखा कहाँ है है। भाई? मुझे एग्जैक्टली पता है कहाँ है, बट द प्रॉब्लम इज। प्रॉब्लम इज ओके ओके आई नो अबे आई नो। बंगाली में लिखा है ना ये बहनचोद? मुझे क्या पता साले। सीतापुर। ओके आई नो ये कहाँ है। This is how you remind me of who I really am. साले मैं इतना चाह रहा हूँ बहनचोद यूज करना गूगल, बट मैं नहीं करूंगा। चूतिए गांड मरा ले, हम तो थैंक यू बोले थे कुछ बात के लिए। नहीं करूंगा ना साले। चीटिंग नहीं कर चीटिंग रहे नहीं हो, कर रहा हूँ थैंक भाई। अरे यार बहनचोद यार ये। अबे बंगाल वैसे तो बता दे, बंगाली लैंग्वेज है ना ये? मुझे भी नहीं पढ़नी आती साले, मैं कैसे बताऊं? चूतिए काम क्या है तेरा जिंदगी में? अरे चक्कर ये पड़ रहे हम हैं। सबको पता है कि नॉर्थ लखीमपुर ढूंढना है, लेकिन कहाँ है बहनचोद? यार चक्कर है भाई। फक इट भाई, मध्य प्रदेश ही होगा यार। ना नेवर माइंड भाई, आसाम। नेवर माइंड। साले यूपी में क्यों लगा रहा है बहन के 14 चूतिया है क्या? मतलब पुर लिखा हुआ है बहनचोद। अरे अब तू समझ आया, बहन वहाँ पे के भी तो लोड़े पुर होता है, मणिपुर। चूतिया है भाई एक नंबर का। तू बंगाल में लगा रहा है चूतिए। हाँ तो तू किसी ने असम सही नहीं तो लगाया, बहन जो मेरे को क्या गाली पास दे रहे हो? पास था ना बहन के लोड़े। बिल्कुल पास, पास तो नहीं बोलूंगा मैं भाई असम के। अच्छा तूने तूने लगा रहा था क्या बंगाल में? गोरी यार तो उसने लगाया। नहीं मैं तो यूपी में लगाया था। यूपी में क्यों लगा है? चूतिया है ये अलग, ये बहनचोद। तू क्या बोल रहा है ऑडी बहनचोद? अच्छा मुझे ये भी पता है अबे क्या ये है। तो पता है मेरे को, ये तो पता है मेरे को। ये तो पता है। ये मेरे को पता है। मैप पे कहाँ होता है बहनचोद? माँ का सौत। अबे तुम इतने चूतिए लोग हो, तुम लोगों को बहनचोद सेक्टर तक पता होगा भाई। अरे मैं नोएडा का थोड़ी पता है साले कुछ। ओ नेवर माइंड मिल गया भाई। ओ हेल्ला ब्रो। हे अल्लाह ये यार 80 के बाद बेंचो सेक्टर 115 कैसे आ रहा है 80 के बाद? तुम बताओ भाई, तुम रहते हो वहां पे। कौन सा मैं सेक्टर नहीं है रहता साले, नोएडा कौन सा में भाई। सेक्टर है ये? ओए ओए। अच्छा। तेरे को भी दिख गया है? पर साल अबे नोएडा का सेक्टर बहुत अजीब है साले। अरे यार माँ का सॉट। ले यार बहन चल यहीं कहीं होगा साले।
Easy clap भाई, easy clap. Oh shit, तू अरे भी है वहीं बहन पे. शॉट, मैं भी आसपास ही था साले। गाजियाबाद में साले तू. लौड़ा ले ले मेरा। Come back होगा. ओए यो ये क्या था भाई? ये कहाँ है बहन का शॉट? पियानो मैन आ गया था अभी. ओए भाई I अब मेरा am a टाइम आ गया. sailor. Around the coach roads I did ride. ओके। This आया वेला ये तिरुचिरापल्ली क्या ये? नो फकिंग क्लू भाई। I think I know. मुझे भी शायद पता है। मैं तो कहता हूँ ना, अब स्ट्रीम पे है तो कुछ बोल नहीं सकता भाई इन लोगों के अगेंस्ट. ओए Because certain viewers भी इसी एरिया से हैं तो मैं कुछ बोल नहीं सकता. माँ का सोत भाई, क्या पता कहाँ है बहनचोद ये। साले अब तो हार है तो जाऊंगा साले। बिल्कुल साउथ वॉट टाइप ही। I think मैं literally जा चुका हूँ इस जगह पे, लेकिन मुझे पता नहीं भाई मैप पे किधर होता है ये. तू कुड़ी या लगा रहा हूँ मैं, तू कुड़ी बढ़िया लग रहा है। अबे अब मुझे बार बार वही जगह दिखे यार ये बहन. भाई तू कुड़ी भी लगाते हैं। Imagine सही हुआ भाई. I don't know. I No think मैं यहाँ fucking पे लगाऊंगा. क्लू भाई, नो ये कौन है? फकिंग क्लू। कौन है? अच्छा। माँ का भाई तू सोत। सही था क्या? नहीं तो सही नहीं था. सही तो नहीं था साले। Close them. अरे बहनचोद ये जगह कहाँ है? गिल्टी को जिता दिया भाई, गिल्टी को जिता दिया. तूने वहां क्यों नहीं लगाया भाई? तूने सुना नहीं मेरी बात। मैं बोल रहा था तू थी खुड़ी पे कर दे। तू थी खुड़ी टूटी हुई कुड़ी ना भाई. जीता कौन? ऑडी जीत गए 1000 Hell पॉइंट। yeah, brother. Hell yeah. डार्थ आ रहा है, लिंक भेजा हुआ है. ब्रो होल साइड में कौन है? ये पता नहीं है कौन है, मैं इनके बीच में अब आया इसको हुआ किक हूँ। कर देना लोड़े। गुरी का ऑल्टरनेट किक नहीं कर सकता भाई मैं. गुरी का ऑल्टरनेट पर्सोना है और साले- इंडिया हटा रहा हूँ मैं. इनसे चूतिया जगह है. कौन सा लगा रहे फिर? यार इंडिया का मैच बेस्ट होता है भाई, इंडिया का मैं अभी पिछले 2 बार हम लोग इंडिया ही खेल रहे हैं. वियतनाम भी खेला अभी हमने रिसेंटली. पर मैं जीत गया ना इंडिया में बहन के शॉट। सो लास्ट टाइम इंडिया लगा रहा हूँ. ना जो ये पानी भी साउथ नहीं इंडिया ही पीता आते रहता है, नॉर्थ जाते ही नहीं है अबे भाई। अबे अबे बेंच में टीम बैटल कर सकते हैं ना, अब तो 4 लोग हो गए. टीम बैटल हाँ कर सकते हैं। टीम बैटल लगाओ। क्विट करो इसको। क्विट कर क्विट दिया कैसे भाई. करूँ साले? क्विट कैसे होता है? पार्टी बना रहा हूँ मैं. जो रीजॉइन गेम का दिखा लीव रहा है. गेम, लीव पार्टी कर दी भाई। प्रीमियम प्लॉट। अब मैं गेम कैसे एक्सेप्ट करूँ लेकिन? मेरे को नहीं पता, मैंने कर दिया है। जियो Mog-Gesser. The fuck is that nigga? About game, about. यो, ओ भाई इसमें सिर्फ मूछे हैं, वो हर जगह मूछे हैं बस। लिंक भेज रहा हूँ भाई. बहनचोद लिंक भेज रहा है? इसकी मम्मी को लिंक भेजता हूँ साले अपना। ये सब मत कर भाई। प्लीज मेरी विनती है आपसे। अबे मुर्गी कैसे रख रखी है बहनचोद कड़कनाथ? भाई तो मैं कह रहा हूँ बहनचोद मुर्गी ऐसे क्यों रखी है इन्होंने? सड़क पे रखी है बहनचोद लाइक अ बैरियर. धूप लगा रहे हैं अपनी मुर्गी को भाई. ओके अब ये बताओ टीम डुअल करूं या फिर हाँ टीम डुअल ही. मैन टू मैन आजा. कौन किसकी टीम में साले? मैन टू मैन आ जाओ. मैं गुरी के साथ हूँ भाई, रुक जाओ. अबे चीटिंग मारता है भोसड़ी का, और ये अभी उठाया बहन का शॉट. चीटिंग मारता कौन है साले? तू साले, तू जा नाग्याल के साथ बहन का शॉट. ओए तू वो करो ना, तुम दो रूममेट्स वर्सेस अस. लौड़ा ले ले मेरा. चट्टा और नाग्याल है. चट्टा और नाग्याल नहीं भोसड़ी के ऑडी में तेरे साथ नहीं रुक रहा. जब बहन का शॉट तुम मुझे वॉशिंगटन. अरे भाई पर अबे पर साले बहन के लोड़े 4 बार सही बोला तो 1 बार गलत हो ही सकता है साले. क्या हो गया? 4 बार सही. इतना गलत कौन होता है भाई, लगा रहा हूँ मैं. जो गुरी और डार तो भाई जीतने वाले हैं. तू क्यों स्वीडन गया है? अरे चोद. अबे इंडिया लगाया क्या बहन शॉट? इंडिया है. अबे रुक जा बहन शॉट.
अभी ये आवाज क्यों आ रही है बेंचो अजीब सी? मैं तो यहीं पे पैदा हुआ हूँ भाई। रुक 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 रुक। तू मेरी स्क्रीन देख सकता है? अच्छा। अरे मुझे पता है कहाँ है, मुझे पता है कहाँ है ये। हाँ मुझे पर जगह नहीं पता साले। मिल गया? अच्छा अगर तू लगाएगा तो जीत हो जाएगा ना सीन सॉर्ट। हाँ सही लगा है। थिंक सो। सही लगा है, सही लगा है। अच्छा तुझे मेरे गैस दिख रहे हैं ना? ठीक। हाँ। I guess. तू भी गैस लगा सकता है? मैंने लगा दिया। पता नहीं। अरे दोनों को लगाना होता है क्या? और तू भी लगा सकता है, तू भी लगा सकता है। अच्छा तो दोनों में से जो ज्यादा क्लोज होगा वो उसका काम। हाँ। अच्छा वैसा है क्या? सही है, अच्छा, सही है, अच्छा, सही है, अच्छा। सही है। अबे यहाँ पे जगह का नाम नुन्ना है। अबे पता चल गया कहाँ है ये, इंस्टेंटली पता चल गया। तू लगा। मैं लगाता हूँ। अबे तो पता है तो यहीं पे तो रहता है साले। अब कौन सारा पास है वो मैटर करता है। लगा दिया। बैंड सही है। लगा भी दिया। मैं जो तेरा दिख ही नहीं रहा मुझे गैस। अबे बोलूंगा तो साले मैं ऊपर लगा रहा हूँ गाजियाबाद के, तू नीचे लगा। अब मैं नीचे लगा रहा हूँ, तू ऊपर लगा। भोसड़ी के तू गलत लगाया बहन के लोड़े। अबे पता है लेकिन ये देख बता साले तूने मेरठ में लगा दिया। अबे साले मेरठ लिखा हुआ था भोसड़ी के मेरठ। मेरठ रोड गाजियाबाद। अच्छा बेंचो सिटी में डाल दिया भाई, बेंचो मेरे को हटाओ यार। Get me out of अरे here. बैन का शॉट। C++ जावा सिखा रहे हैं भाई यहाँ पे तो। रुक जा बहनचोद, कहीं लिखा नहीं है कुछ। एक तो बहनचोद एक गाना इतना झाट क्यों आ रहा है बहनचोद? मैंने कर दिया गैस। मैंने भी सेम। साले किधर है? ओके मुझे देखा। किधर है? कहाँ भाई? नाम बता जल्दी। राजपुर। अबे कौन सा राजपुर साले? राजपुर रायपुर है। अबे लोड़े सही तो बोल देता बहन के चोदे। अबे मैं साले तेरे को तो पता भी नहीं था कहाँ पे, मेरे को दूर से जो दिख रहा था। अरे माँ का शॉट तेरा। ये कहाँ है? कौन से बेंच? साले कुछ तो कर ऑडी पोसड़ी के। अच्छा मुझे पता है कहाँ है ये। देख मैं स्ट्रेट लगा रहा हूँ, मैं स्ट्रेट लगा दे रहा हूँ। लगा। स्ट्रेट सही लगाया मैंने। यस टाइमर शुरू कर दिया भोसड़ी के। अबे स्ट्रेट सही लगाया मैंने। जीत जाएंगे साले। स्ट्रेट सही लगाया। मैं भी उसी में थोड़ा आसपास लगा देता हूँ। हाँ लगा दे कहीं, जरा आसपास ही लगा दे कहीं। Hell yeah। देख भाई स्ट्रेट तो सही बोला था भैंसोट। स्टेट तो सही बोला था, मानना पड़ेगा। पहली बार जिंदगी में कुछ किया है साले। अबे साले इतनी बार जब बैंड के लोड़े। वॉशिंगटन वैटिकन सिटी वॉशिंगटन कभी नहीं बोलने वाला। अरे मुझे शायद पता है ये कहाँ है, रुक जा। बट नॉट येट। ओए लो रेज क्वालिटी। हाँ भाई यार क्या सीन है। तू कहीं और जा कहीं और जा भाई। कैसे पता चलेगा साले? माय गॉड भाई, मैं जो कौन सा कैमरा यूज करते हैं? आईफोन का कैमरा है क्या? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है? I have no clue ये कहाँ है। ऐसा तो कोई टाइमर नहीं है ना? नहीं अभी नहीं, तुम लोग गैस ना करे। वही गुरु गेस कर दे, मेरे आसपास गेस कर दे। नहीं रुक जा। I think I know ये कहाँ है। I think I know। रुक जा। अभी मत कर। अभी नहीं कर रहा हूँ। नहीं उसको कह रहा हूँ, गुरी को कह रहा हूँ अभी मत गेस कर भाई। अरे मैं तो करने लगा हूँ। क्या मुझे हिंदी पढ़नी नहीं आती यार। अबे रुक जा साले, मुझे शायद पता है ये कहाँ है। It's a vague guess। बहुत ही यार क्या लो रेस कैमरा है बहनचो। वही बोर्ड के सामने खड़ा हूँ, पढ़ा नहीं जा रहा बोर्ड पे क्या लिखा है। अरे यार करजात क्या है? करजात कहाँ है? नहीं रुक जा। नहीं वो प्रोबेबली गलत है। दिख गया अपना सही है। ये लोग गए हैं ब्रो, मैं बता रहा हूँ ये लोग गए। जब मैं लगा दे रहा हूँ। गेम ओवर है इनका गेम ओवर है। देखते मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पे। Oh shit, you were right. बच गया भाई, बचा लिया तूने। हाँ। कहाँ से? मैं कहाँ से हो गया भाई? रुक जा भाई, one guess is all it takes। One guess is। इनका भी तो गलत भी तो होना चाहिए साले इनका।
भाई एक ही इनको मैं ओके कैमरा ठीक लेके है दे रहा हूं ठीक है आई नो जनरल रीजन पता है मेरे को, जनरल रीजन पता है कहाँ है ये। यार इतना चूतिया कैमरा है भाई, गुस्सा आ रहा है मेरे को। अबे रुक जा, मेरे को जनरल रीजन पता है ये कहाँ पे है। भेड़ बढ़ के चोद लेंगे, नया कैमरा नहीं लेंगे भाई ये। यार मैं गलत रास्ते पे आ गया हूँ थोड़ा सा शायद। तू जिंदगी में गलत रास्ते पे है भोसड़ी के। अबे रुक तो साले बहन का शॉट। मुझे जनरल एरिया पता है कहाँ है ये। अरे यार बहन चोद यार, बहुत ज्यादा गलत रास्ते पे आ गया हूँ। तो वापस आ जा। नहीं वापस अभी नहीं आ सकता। या आई नो थोड़ा। एक तो बैंड चोद है ये भोसड़ी के साले। ना आउटस्कर्ट्स में। नहीं आई नो ये जनरल का है। अरे सबको पता है भाई, आई नो अभी इंटेंस हो रहा है शायद। आई नो कि यहाँ पे, आई नो इंडिया में, आई नो इंडिया वाला ही बोलेगा ये। यार मैं तो लॉस्ट हूँ भाई। रुक जा। आज जंगलों में वैसे चल रही है, वैसे गूगल मैप्स की बात क्या है। आयो तुम्हें इसको गूगल यूज नहीं करता भाई। नहीं ऑफ कोर्स नॉट। थोड़ी इंटीग्रिटी रखना है। यार ये भैंचो की चूतिया कैमरा है भैंचो। एक तो आधी चीजें सेंसर्ड है, रोड भैंचो रैप हो रही है, पता नहीं क्या हो रहा है। अबे मैं रुक जा अबे मत कर अभी 1 सेकंड रुक जा। पहले गैस कर फिर मैं उसके आसपास करूंगा। हाँ मैं कर रहा हूँ गैस। कर भाई। This is the region. The region is correct. The region is correct. Sure? Yes. I'm pretty fucking What about sure. यहाँ पे तो नहीं? यहाँ मैं हाँ हो सकता है। तो भोसड़ी के को जनरल रीजन नहीं पता। साले जनरल रीजन सही है। ओए I'm the goat. Pretty good. Pretty fucking good. ये कैसे One shot. देख तो साले जनरल रीजन तो मैंने बोला तो बहन के लोड़े। हाँ अब ये देख जो ये बंगाल में लगा रहा है और कह रहा है जनरल रीजन पता है मेरे को। अबे तो भोसड़ी के जनरल रीजन का मतलब ये है कि ईस्ट नॉर्थ ईस्ट बहन के लोड़े हो तो साले हो तो भोसड़ी के वो भी सकता था त्रिपुरा बहन के लोड़े। Takes 1 to know 1 भाई। कोई तो बंगाल से, तू क्यों नहीं कर रहा भाई? मैं बंगाल थोड़ी कर रहा था, बंगाल नहीं था ना इसलिए पता था। तो बहन के लोड़े साउथ इंडिया क्यों किए? चूतिया है क्या बैंगलोर? समझ ही नहीं है मेरे को भाई कुछ। अरे बहन के लोड़े वर्ल्ड लगा रहा है। रुक जा वर्ल्ड मत लगा साले। गुरी तू और मैं एक टीम में हो रहा था भाई, सही में मां कसम। अबे नहीं बहन का लोड़े। मेरठ जाता है बेंच भाई। रात को पहले लिखना चाहिए था वेटिकन सिटी का, साले ने वॉशिंगटन लगवाया मुझसे। अभी ये क्या है? ट्रांस क्यों लिखा हुआ है यहाँ पे साले? एटलीस्ट भाई निग्रोज ओरिएंटेड। ये कौन सी जगह भाई? फक भाई डिस्कॉर्ड। अबे रुक जा। अबे यार ये बेंच पता भी नहीं चलेगा साले कहाँ है ये। This is somewhere in Southeast Asia. साले बोलना क्यों था साले? अबे इनको तो पता ही होगा भाई, इतने इंटेलिजेंट तो हैं। लगा दे क्या सीधे? ठीक है पे। हाँ देखियो मैप पे देखियो नागियल। देख रहा हूँ। फिलीपींस लगा। हाँ अबे उधर नहीं फिलीपींस लगा साले। तू तो कहीं लगा भोसड़ी के। लगा दिया मैंने, लगा दिया साले। इंडोनेशिया में लगा था मैं तो बहन के लोड़े बोल रहा जो फिलीपींस में लगा। माँ का शॉट तेरी। आया था तू फिलीपींस में लगा रहा, पर मैं लगा दिया चल। बट हाँ तुम लोग इतनी जल्दी कैसे मिला बेंच? तुम अबे तो पता है। ओए ये पता है तेरे को? यहाँ पे है देख जहाँ मैंने लगाया। हाँ वो तो पता है मेरे को। एग्जैक्ट तो देखता हूँ मैं, रुक। बताओ। एग्जैक्ट देखता हूँ, रुक जा। अगर कहीं पे लिखा हो बेंच। कंट्री तो पता ही है। हाँ स्कूल में बेंच मैंने लड़कियां पटाने के लिए क्या क्या नहीं सुना भाई। पर साले यहाँ पे ऐसे कुछ लिखा नहीं होगा। द पॉइंट इज नहीं कुछ तो लग रहा है। आसपास घूम के देख ले थोड़ा सा। ओके आई नो एग्जैक्टली कहाँ पे है। ओके एग्जैक्टली लगा दे फिर। एज फार एज आई नो यहाँ पे है, बट तू वहीं पे लगा मेनलैंड में। अच्छा फक आई थिंक मैंने I don't know man.
ऊपर नीचे लेफ्ट राइट कर लेते हैं कि मैं बॉटम राइट कर रहा हूँ। एक नॉर्थ में लगाओ, एक साउथ कोरिया में लगाओ भाई। ओके ओके ओके। तू टॉप लेफ्ट या राइट कहीं भी लगा दे। हाँ। स्वीट, आई डोंट नो। अब सेंटर में हुआ तो माँ की चूत। यस, बेस्ड। जेजू लिखा हुआ था। बेस्ड। साले इतना कम क्यों कम हुआ इनका? क्योंकि इतना कम क्यों कम हुआ? मुझे लोग क्या लैपटॉप अपने लौड़े पे रखते हैं और इसलिए कम हो रहा था। अरे जो पॉइंट्स साले लोड़े। लोड़े की तो बात कर रहा हूँ। अबे ओके ओके आई तो यूएस ऑफ ए लग रहा है भाई। शट द फक अप, रुक जा। नहीं वो नहीं है। अब तो मुझे पता है, मैं तो मजाक कर रहा था यार। साले अलग अलग चैनल पे होना चाहिए बहनचोद। वैसे हाँ, हम लोग को अलग अलग चैनल। अबे एक्चुअली ये यहाँ पे कही है साले, मोस्ट प्रोबेबली इधर है, बट देख। नहीं भाई, वो इस एरिया में भी हो सकता है ना जहाँ मैंने डाला है। कहाँ डाला है तूने? अच्छा हाँ, एक्चुअली हो तो सकता है, बट थोड़ा और देखते आसपास। क्योंकि क्लाइमेट उतना वैसा नहीं लग रहा जहाँ पे तूने डाला है। क्यों, ऐसे ही तो होता है। इतना खुला होता है क्या? हाँ क्यों नहीं होता, गाँव में आसपास देख ले, थोड़ा और घूम के देखते हैं। स्प्लेंडर खड़ी है क्या? Maybe you're right. यार देखना पड़ेगा यार, और ना थोड़ा सा। I think you're right भाई। कोई ना अलग अलग लगा सकते हैं, ऐसा कोई सीन नहीं है। मतलब तू वहीं पे लगा, मैं उसके थोड़ा और नीचे लगा दूंगा। रुक जा थोड़ी देर रुक जा। ये नेक्स्ट राउंड में बेंच और हम लोग अलग अलग चैनल्स में जाएंगे। ये बताऊं क्या है? जगह है। नागियल देखियो एक बार जहाँ मैं। ओए क्या? मेरे को एक बोर्ड मिला है। देख मैं यहाँ लगा रहा हूँ। अपडेट किया मार्कर। उसके आसपास ही है, एक बार कुछ इन्फॉर्मेशन। रुक जा थोड़ा और देखते हैं। तो थोड़ा नॉर्थ लगाने लगा रहे हैं। नहीं आई डोंट थिंक नॉर्थ है यार। ये तो बेंच यहाँ पे कोई बोर्ड्स भी नहीं मिलेंगे साले यार। ये टू बी ऑनेस्ट भाई कैसी है? This could also be somewhere here. देख मैप। ना वहाँ पे तो गारंटी नहीं है। एटलीस्ट वैसे हो तो सकता है, बट आई डोंट थिंक है। बहुत लेस चांस है कि वहाँ पे होगा। पता नहीं यार भैंचोद, अभी मतलब कुछ कर दे तेरे ऊपर है, लाइक एज अ फेल सेफ। अभी देखना ये कौन सी साइड ऑफ द रोड ड्राइव कर रहा है। वो तो राइट ही है साले, दोनों जगह पे राइट ही होती हैं। अच्छा आई थॉट मैक्सिको, मैं क्या बोलूं। ओए मुझे कुछ मिला है, मैप ऑफ सम काइंड। मैप ऑफ सम काइंड? यस। भैंचो डीएम करियो। तेरे को डीएम किया है डिस्कॉर्ड पे, चेक कर। किया है? कहाँ किया? रुक जा रहा है। हाँ आया होगा। नहीं ये तो मैंने भी देखा था, पता नहीं से कुछ पता नहीं चल रहा है। बस जूम इन करके देख रहा है कुछ। ओए गुरी मार्क कर दे, सही कह रहा है। सही है। हाँ सही है, मार्क कर दे पक्का। यस 100%। तूने गूगल किया है क्या साले? कोई ना कर देते यार, आई थिंक कंफर्म कर देते हैं। फक इट। आई सॉ द सेम मार्क ना, सेम। हां तो उस तरफ तो थोड़ा ऊपर करना है, कर दे। आई थिंक इट्स फाइन। देखते हैं क्या कर सकते हैं ज्यादा। गेस कर दिया? हाँ फक। ओके तुम कहाँ थे भाई? भाई पहले मुझे लग रहा था नीचे वाली में ना हो, बट सही था अपना तो। सही था भाई। अरे हाँ बेंचो कॉर्डोबा दिखा था मेरे को। कॉर्डोबा इस साले बेंचो मिल ही नहीं रहा था। चल देखते इधर आसपास देखते हैं। ओके आई नो वेयर दिस इज। अरे लगा एक बार लगा। वेट देख के बता दो क्या? इस एरिया में। अच्छा एलएचएस आरएचएस है ड्राइविंग। वो
ड्राइविंग का मेरे को पता नहीं, बट है तो इस एरिया में 100%। यार गाड़ी की शैडो भी नहीं दिख रही है भैंचोद, वरना तो देख लेते हैं। नहीं LHS है। अबे उससे फर्क क्या पड़ता है, जो मैं तेरे को बता दिया इस एरिया में तो उधर ही होगा। हाँ अच्छा ठीक है। नहीं जस्ट कंफर्मिंग आई थिंक या सेम। हाँ सही कह रहे तू, एरिया तो यही है। अब इसमें तू थोड़ा ऊपर लगा दे, मैं थोड़ा नीचे लगा सकता हूँ। यार जगह ढूंढ लो ना कौन सी है, थोड़ा टाइम रुक जा। अबे हाँ कुछ देख लेते हैं आराम से। चलना लेकिन हाँ लैंग्वेज का सीन तो फंस रहा है भैंचोद। एग्जैक्टली भाई, हाउ द फक डू आई नो कहां पे है ये। कुत्ते पड़े हैं भैंचोद जमीन पे। ट्रैक्टर ही दिखते मेरे को हर जगह तो भाई। ट्रैक्टर फार्म टरकणाल खेती करदा। तो एक बार गुरी सॉरी ऑडी बता तू कहां लगाने वाला है अप्रोक्सीमेटली? एक सेकंड यार, कोई उधर तो तू मत ही लगा साले, बिकॉज़ मोस्ट प्रोबेबल भी वही है ना, लाइक मैं क्या सोच रहा हूँ इधर लगा दूं। कर सकता है। मैं तो भाई कोई गांव में आ गया। व्हाट अबाउट हियर भाई, यहाँ पे भी तो हो सकता है। आई नो हो सकता है, तो थोड़ा और देख लेते हैं इसलिए कह रहा हूँ। जल्दी किस बात की है? देखने में भी कुछ मिलेगा कि नहीं मिलेगा कुछ ना कुछ तो। मुझे तो बताया कि स्पीड लिमिट 30 है भाई, उसके अलावा कुछ नहीं पता। अब खोल ले दुनिया की सारी स्पीड लिमिट 30 वाली रोड्स। जितना उनको टाइम दे रहे उतना वो और एनालाइज कर पाएंगे भाई, ऐसा मुझे लगता है। एटलीस्ट शुरू में हम तो कर पा रहे हो, अबे थोड़ी पता है हम क्या एनालाइज कर रहे हैं। हम तो बस जो नहीं कर रहा हूं मैं तो यहाँ पे। रुक जा ओके आई सी समथिंग इश, मतलब रुक जा 1 मिनट। हैंडशॉट कुछ समझ ही नहीं आ रहा क्या लिखा है। मैं वहां से तो कैसे हटा रहा हूं बिकॉज़ इतना पास मैंने कर दिया है। मैं थोड़ा यहाँ लगा रहा हूं, देख यहीं लगा दे ऊपर नीचे लेफ्ट राइट कहीं लगा दे। ऊपर नीचे देखो हमने उनका इतना टाइम कोई ना ठीक है लगा दे। थोड़ा नीचे कर तो कहीं मारना पड़ेगा। तो लग गया भैंसो। बच गए। ये कैसे हुआ? मैं कह रहा हूं इनको ज्यादा टाइम नहीं दे सकते भैया एनालाइज करने के लिए, कर लेंगे पूरा एनालाइज। Played these games before. बट ये देखना पड़ेगा साले, यहाँ तो जल्दी कर बहन का शॉट। अबे मेरे को मुझे पता है लगा एग्जैक्टली क्या है भाई ये देख यहाँ पे है। आर यू श्योर? मैं तेरे को स्क्रीनशॉट भेज रहा हूँ भाई। अब मुझे पता नहीं भाई कि मुझे डिसीव कर रहा है कि नहीं, देखता हूँ मैं। एक्चुअली हाँ रुक आ रहा है, पर ये पॉसिबल नहीं है भाई, ये पॉसिबल नहीं है। क्यों? बिकॉज़ लग नहीं रही वैसी जगह ये स्क्रीनशॉट। नहीं सही है। मेरे को भी कंफर्म है। रुक जा, नहीं कोई दिक्कत थोड़ी है, तू सही है। मैं थोड़ा रुक जा 1 मिनट और रुक जा, थोड़ा ढूंढते हैं मैप पे ढूंढ। है तो वही इधर ही पता है मेरे को। मैं आ गया, लगा दे बेंचो, लगा दे फक इट, लगा दे जल्दी लगा दे, खत्म कर इनका टाइम खत्म कर दे। मेरे को नहीं दे रहा इसको। तुम लोगों को कैसा हो गया था क्या करेक्ट? नहीं नीचे लगा। ओके कोई ना शिट डेथ भाई बस कोई ना ठीक है सही है बेंचो। हां वो क्लोज ही थे ना 3 किलोमीटर। ये मैं पूछा इंडिया वाला नहीं है। मैं सरप्राइज हो गया, इंडिया में तो नहीं है भाई। रुक जा मैं थोड़ा देखता हूँ बेंचो, देख कौन सा एरिया। मैं गाड़ी की तरफ जा रहा हूँ, गाड़ी मुझसे दूर जा रही है। भाई आई थिंक वी आर इन स्लो डाउन कंस्ट्रक्शन हेड भाई, उसके आसपास है।
Funny man, funny. Funny funny तो I think रुक जा मैं लगाता हूँ 1 सेकंड। I think तू मत कर अगर think। सही बोल रहा है। इशू रहता है thinking में भाई। रुक जा साले। तू rethink कर अगर हर बार। मुझे थोड़ा आइडिया है। मुझे भी आइडिया है वैसे तो। 3G या 4G? ट्राई मम्मी के साथ आइडिया है भाई मेरा एक सेक्स करने का। इधर नहीं जा सकते क्या? अरे बहनचोद, इधर जाने का कोई पॉइंट नहीं है यार। ये मेरे को जगह तो पता है बट ये बहनचोद थोड़ा ढूंढना मुश्किल है। देख जगह का नाम ये जो देखो डिस्कॉर्ड पे भेजा है मैंने। ओए मिल गया ओए नहीं वो नहीं है। इधर का ही है। मिलेगा। गेस कर रहा हूँ जी दे रहा हूँ भाई, जी लिख रहा हूँ मैं। भाई मुझे पता है गुआम है, मिल नहीं रहा साले। मुझे मैप भी बहनचोद वहाँ पे चाइनीज में लिखा हुआ था साले, चाइनीज में जापानीज में लिखा हुआ था। चाइना लगा है वो सड़ी के। जी भाई इजी लिखा था होटल गुआम भाई। अरे होटल गुआम तो ठीक है साले। I know गुआम तो मैंने तो मैसेज भी कर दिया था लेकिन मैं अरे बहन का शॉट। बस भाई कितना सेलिब्रेट करेगा। इजी क्लैप भाई। आओ भाई थोड़ा टीम स्विच करो यार। अबे लोड़ा ले मेरा बहन के शॉट। साले शंघाई डालता चूतिया बहन जो गुआम में। अरे मेरे को लग रहा था गुआम इज नॉट अ रियल प्लेस क्योंकि उसमें था बहन जो RDR2 में। बहनचोद क्या टीम है? बता रहा हूँ क्या टीम है भाई, चलो भाई शुरू कर रहा हूँ मैं। ये स्वीडिश क्यों है बहनचोद? ओए कहाँ डाल दिया मुझे ओए। भाई अब लगाओ भाई वैटिकन वाला वॉशिंगटन में लगाओ। अबे कौन से गांव में फेंक दिया बहनचोद ये? क्या आ गया भाई गांव में बहनचोद। अबे मैं ये कर्व के इधर जा रहा हूँ, तू सीधे वाले पे जा। अरे भाई अबे बहनचोद भेड़ बकरी है। गैस करना पड़ेगा भाई। तो जो जल्दी क्लिक करके आगे जाएगा वो जीतेगा भाई। मैं फिंगर करे जा रहा हूँ अपने कीबोर्ड को पे www। W सुन गैस भाई कहाँ है? क्लिक कर आगे दूर क्लिक कर, वो तेज जाता है। Oh you're right। अबे नहीं पीछे जाने लग गया हूँ मैं। भाग भाई। ओए I think या तो इस एरिया में या फिर इस एरिया में, इन दोनों में से किसी एक जगह पे। अबे सुन बहनचोद मेरे को लग रहा है इधर है। दिख रहा है? Could be। Because I saw something। ये तू सही है। नहीं तू थोड़ा गलत है। मैं तेरे को एक चीज बता रहा हूँ। मैं तेरे को रीजन बताया देख। फक तेरा नाम क्या है भाई गुरी? देखो कुछ मैसेज कर रहा हूँ मैं। मेरे को भेज दे साले। ओके हो सकता है। मैं तुझे एक स्क्रीनशॉट भेजा है। अबे it's most probably this only। यार मतलब it is not जहाँ पे तेरा है अभी मार्क। वो तो शोरूम है। मुझे बस ये था क्या तो इस लैंड में है तो इस लैंड में, बट हाँ मोस्ट प्रोबब्ली उधर ही है जहाँ तूने किया है। मतलब इधर या इधर कहीं भी हो सकता है। ओए बहन का शॉट। ये कौन सा है भाई? एरिया है। कौन सा क्या है? रुक जा मैं इधर लगा देता हूँ। इधर एक मिनट वेट कर लेते हैं। तू नीचे लगा दे। और ढूंढ लेते हैं। यस और ढूंढ लेते हैं। अबे सुन। अरे बहनचोद ये साला ट्रक क्यों आ रहा है बीच में? तू ट्रक पे बहनचो, मैं तो फार्म में ही हूँ। मैं तो ट्रक कैसे पहुंच गया? ये देख अबे नागयाल का बहनचो क्या नाम है? डार्थ। ये कौन सा है भाई? देखियो जरा एक बारी। बहनचो स्क्रीनशॉट भेजा है मैंने। मेरे को तो नहीं भेजना गलती से। अबे मुझे पता है कहाँ है ये। मेरे को मिल गया ऐसे। दिख रहा है जहाँ पे तूने लगा रखा है? मेरे को नहीं साले कुछ बोल ले भोसड़ी के। हाँ वहाँ पे जहाँ पे मैंने मार्क करा उस वाले। हाँ वो सही है बट थोड़ा और देख ले आसपास। है तो यही कंफर्म है।
ये ले एग्जैक्ट एग्जैक्ट है एग्जैक्ट मैं उसके है आसपास ही लगाऊं ना फिर या फिर सेफ होने के लिए एग्जैक्ट लगा तू वहीं पे जहां मैंने लगाया ना उसके ऊपर हमें चाहिए ही नहीं कोई वो हेल्प भाई बिल्कुल एग्जैक्ट जहां मैंने लगाया वहां लगा एग्जैक्ट हमने कैसे कर दिया तूने एग्जैक्ट नहीं लगाया भाई एग्जैक्ट मेरी बात नहीं मानी तूने हां भाई तूने कैसे किया अब आगे भाई बहुत आगे गया और बोर्ड पे बिल्कुल ये जगह लिखी हुई थी सीधी डैम भाई बोर्ड पे तो जगह लिखी हुई थी वैसे वो तो देखा मैंने सही टीम पे हूं भाई सही टीम पे हूं मैं रुक जा भैंसॉट मेरे को पता है क्या है ओए क्या वही था अबे ये देख जहां लगाया मैंने उधर ही है अरे श्योर लगा दे फिर लगा दे फक भाई क्यों व्हाट ऐसे कैसे पता चला ऐसे तेरे को ब्लैक ओ मुझे पता है क्या है गुआम कहां पे था बेंचो गुआम साले भटक गया क्या बेंचो अबे यार बच गया माँ का शॉट थोड़ा जल्दी करना चाहिए था बेंचो पर कोई ना रैंडम बिल्डिंग में गुआम लिखा हुआ था भाई अब ये क्या है बैंड शॉट जल्दी ढूंढ साले बैंड के लोड़े कॉम्पिटिटिव हो रहे अब तो चिल मारो अबे तो गोवा है बोसिडी के बेंचो यहाँ के लोग को लिखना नहीं आता क्या भाई कुछ लिखते ही नहीं है मादर चोद लोग कुछ नहीं लिखा भाई अबे चाय की टपरी है साले यहाँ तो क्या जगह यार ये बेंचो गूगल कार यहाँ पे इंडिया से बेटर कैसा है भाई ओए सुन मेरी बात ध्यान से It is most probably here देख रहा है I'm not sure या तो here because don't think वहाँ उस एरिया में है नहीं I'm sure because of मैंने कुछ देखा अभी okay I know exactly कहाँ पे I know exactly कहाँ पे यहाँ लाइक इस कंट्री में है बट इस कंट्री में क्या है वो मुझे नहीं पता नहीं इस कंट्री में है डूड मैं तो कोई चीज भेजता हूँ इसलिए कह रहा हूँ निगा I'm pretty sure ये इसी में है it is not in मार्क कर दे don't give them time ये देख थोड़ा आसपास कर नहीं मैं सही हूँ मैं बता रहा हूँ तेरे को थोड़ा आसपास कर चलो वहाँ तो वहाँ लगा बट यहाँ पे ये तो लिखा हुआ है डूड जो मैं तेरे को भेजा है ये और कहाँ हो सकता है Just in case मैं यहाँ डाल रहा हूँ यहाँ करंट डाल डालते fuck what you were right but उसमें V8 मोबाइल लिखा है भाई V8 मोबाइल लिखा है अरे बैंड शॉट कोई ना बैंड शॉट साले उसमें तमिल में लिखा हुआ था बैंड तमिल में अरे कंबोडिया था भाई कमोड में था भाई कमोड में अरे बैंड चोद बड़ा fucking shit ass टाउन लग रहा है भाई मुझे कहना अच्छा लग रहा है मुझे लाइक यहाँ सोने का मन कर रहा है ब्रिज के साइड में जो खास है मैं सोता ही रहूंगा भटका के सोने का मन कर रहा है क्या नॉन भटका के भी कर सकता हूँ it might be here खड़ी है might be थोड़ा एविडेंस I see a flag but I'm not good with flags भेजियो साले देखो क्यों भेजूं माता चोद कार्ड में गुरी देखो भेजा है मैं कोशिश कर रहा हूँ ओए I see पीछे थोड़ी लैंग्वेज भी है उसके पीछे this is या तो यहाँ है यहाँ उसके आसपास लगा फटाफट आसपास लगा ऊपर नीचे कहीं करते ऊपर नीचे जहाँ मैंने लगाया इनके शॉट नीचे कर रहा हूँ यस गो लेट्स गो ये लोग लगाया होगा इन्होंने अभी कहीं भाई श्रीलंका में दोबारा बेंच है लेट्स गो साले तूने कहाँ लगा दिया पहन के लोड़े कंट्री तो सेम वाली लगा था अबे कहाँ रेगिस्तान में है भैंचोद अफ्रीका लग रहा था मेरे को सारे जल्दी दूर जा कहीं तो एक्चुअली होल्ड ऑन खड़े हो जाओ सब खड़े मैं खड़ा हो
भाई what the fuck is this place भाई? ये तो रोड ही नहीं खत्म हो रही। ये भी नहीं भाई, all roads lead to Rome भाई, रोम लगा दो रोम है। एक गाड़ी देखिए मैं जो फॉलो करूँ बस। मैं जो सीधा रास्ता है तो एकदम ऐसा धीरे क्यों चल रहा है? गाड़ी तो भाई भगानी पड़ेगी गाड़ी। बिल्कुल सीधी सड़क है, बिल्कुल सीधी सड़क। अरे गाड़ी भाग ही नहीं रही बहनचोद। ये देखने को स्क्रीनशॉट ले जाओ, मुझे नहीं पता कि कितना हेल्पफुल है ये। यहाँ पे रोड ट्रिप क्रेजी होगी। हाँ। ओए What? Oh. ये काइंडा। अब देखो भाई, तू इसका वो देखना ब्रांड। आई नो ये कहीं पे भी हो सकता है, पर ब्रांड को देख। टोयोटा है क्या? ओके। हाँ। ओए, ये तो फिर यार, ये तो फिर भाई तो मैं कंफ्यूज्ड हूँ। ये तो I think फिर तो यही लगा देते हैं। Are you sure? तू वहाँ लगा दे। एक बार देख लेते हैं। हाँ, एक बार। मैं तब तक कहीं और लगाता हूँ, मैं तब तक बिकॉज ये वाले यहाँ पे भी शिफ्ट कर सकते हैं जहाँ पे मैं लगा रहा हूँ। हाँ, एक बार रुकते हैं अभी थोड़ा, रुकते हैं टाइम है। साले कुछ आइडिया है कहाँ पे ये? बिकॉज ये गाड़ी का जो फिर अल्टीमेटली वो है कंपनी, वो वैसा साउंड नहीं कर रहा है जहाँ का तूने लगाया ना। अबे आई थिंक ये इधर ही गई है, इधर ही गई है बिकॉज ऑफ द सेम गाड़ी वाला थिंग। अबे इनको समझ आ गया मैं गाड़ी वाला। नहीं ये समझ नहीं आया इनको कुछ। तेरी माँ का सॉर्ट। ये इसको लगेगा इसको कुछ समझ आ गया, फिर पता चलेगा। रोड को भी देख भाई, रोड भी काइंड ओए एक बंदा लिफ्ट मांग रहा है भाई। ओए हां मेरे को भी कैसा दिखता है बेंचो, कैसा दिखता हूं? आई थिंक तू ज्यादा सही है। फक भाई, लेकिन मैं श्योर नहीं हूं कि इस जगह पे कहां पे मार्क कर दे, फकिंग मार्क कर दे। रुक जा कर रहा हूं भाई, आई डोंट नो, या तो यहां पे या तो यहां पे है। बहनचोद कुछ नहीं पता चल रहा है साले कहाँ है। ये तो भाई बहुत कुत्ता है। झाड़ का कैमरा है बहनचोद इनका। साले तू वहां लगा जहाँ का तू है, सोमालिया भोसड़ी के। भाई बंदा देख है तो वहीं पे जहाँ पे मैं लगा हूँ भाई। फक यू ऑल भाई, मैं गेस कर रहा हूँ मार्च लॉस में सब बात अच्छे दो तंग आ गया भाई, सड़क नहीं देखी जा रही मुझे दोबारा। Are you sure गुरी? वहाँ पे नहीं लगाना देखो। नहीं वहाँ तो नहीं लगाना। ये भाई फैन का शॉट। भाई टाटा की ट्रक थी भाई, टाटा की ट्रक थी, हम सोच रहे थे इंडिया तो नहीं है। अबे यार ये नहीं पसंद मेरे को यार, सिटीज लगाओ। देखो यार डिफरेंट वॉइस चैनल होना चाहिए। सही में नहीं कर लो बात, हम नहीं सुनेंगे भाई, हम सुनने रहे। पतली सड़क है भाई, है तो यूरोप में ही। रुक आई सी अच्छा वैसे हम लोग राइट साइड पे नहीं, पर हम लोग किस डायरेक्शन में? मैं तेरे को बताता हूँ क्या है ये, मेरे को पता है। तू जा चुका ना? बिकॉज़ मैंने देखा है। ओके जलंधर मत बोलना भाई। भाई चक्कर ये है कि ये शायद यहाँ है, शायद इसके आसपास नहीं है। इंटरसेक्शन पे आया हूँ, यहाँ कहीं है। मैं देखो एक चीज पे यहाँ कहीं लगा दे आई थिंक। नहीं एक समय को देखने दे, तूने गैस कर दिया क्या? हाँ फक भाई, लगा दे साले, लगा दे इसके आसपास लगा दे। एक बार रुक जा तेरा भी देख लेते हैं क्या है ये। मैंने कहा शॉट कहाँ लगाया तूने? अरे
सेक्स कर दिया है बहन सॉट। मेरा स्क्रीनशॉट देखो भेजा है उसमें लाइक रॉक रिज जी रोड। जी। द प्रॉब्लम वाज कि मेरे को दिख रहा था बहनचोद पूरा हार गए हम। हाँ कॉन्टिनेंट ही अलग था हमारा। ओके नो वरीज मैं कुछ और हम कुछ सिटीज विटीज लगा सकते हैं अगर लाइक फ्लैग्स ऑफ द वर्ल्ड, यूरोपियन स्टेडियम्स। नहीं फ्लैग्स नहीं, फ्लैग्स इजी हो जाएगा थोड़ा। आर्बिट्रेरी वर्ल्ड। मेरे को लंच खाया, तुम लोग खेलो एक राउंड। यार ये मत कर यार, ये मत कर यार भाई, हम लोग please टीम यार, वाला कैसे please। खेलेंगे? वो खाते खाते कर ले, खाते खाते। तो ऐसा कर लो, एक 1v1 कर लो, मैं भी खाना ले आता हूँ। 1v1 क्या खाना करना तो है फिर मुझे भी लाना है भाई, खाना तो फिर मुझे भी खाना है। फिर खाना ही ले आते हैं। खाना ही खा लेते हैं सब। मैं भूल गया था बहन, 4 बज गए खाना ही नहीं खाया। बहन सॉट। तब तक मैं चल थोड़ा फोर्जा खेलता हूँ भाई, मेरे को 2K में फोर्जा खेलने का बड़ा मन कर रहा है। अभी जापान वाला आने वाला है भाई, जापान यार बहनचोद अभी तू कल बताता था, मैं फोर्जा कल ही डिलीट करी है मैंने भाई। डाउनलोड कर ले वापस से इसे फोर्जा होराइजन 4 वैसे। होराइजन 4 यूके वाला है ना। हां हेल्ला डॉग वो नहीं है मेरे पास। ओ ये प्लेसेस फ्रॉम GTA सैन एंड्रियास भाई। हेलिया इन चलिए एक लगा दे। ये तो हमेशा मैं साला क्विट हो गया क्या भोसड़ी का? अरे छोड़ दिया क्या? कोई ना 1v फ्री फॉर ऑल कर लेते, फ्री फॉर ऑल कर लेते, फ्री फॉर नहीं 1v1 कर लो कोई ना। 1v2 हो जाएगा 1v2। स्क्रीन शेयर कर लो, स्क्रीन शेयर कर लो। मैं करता हूं स्क्रीन शेयर। 1v1 कौन कर रहा है? तू और मैं? इसको निकाल तो दे बहन का शॉट। निकालूं कैसे इस लाड़े को? साले तू चला गया इसके वर्सेस में बहन का शॉट। मेरे को नॉट तेरे को रिप्लेस कर दिया मैंने उसके साथ। कर रहा हूं। अच्छा ठीक है कर रहा हूं भी GTA भाई, मैं तो कभी खेल ही नहीं भाई ज्यादा तो। सैन एंड्रियास तो मैंने पता है जी। मैं हारने वाला हूं भाई, सिर्फ इतना पता है कैलिफोर्निया में पूरा। गलत। ओह परफेक्ट आई नो वेयर दिस इज एग्जैक्टली आई नो वेयर दिस इज। शोध मेरे को नहीं पता भाई। बट ये मैप पे कहां मिलेगा साले? नहीं ये वाला तो है भी नहीं साले। I know where this is. कोई हेल्प करो भाई मेरी। कोई हेल्प नहीं है बैंड शॉट। अबे यार मेरे को मैं गेम ज़्यादा खेल ही नहीं है भाई। मैं स्किल इशू है फिर तो साले तेरा। मेरा सिर्फ बेंच वो चीट कोड्स डाल के पानी पे चलाता था भी गाड़ी। वो शायद वाई सिटी में था, नॉट वाई सिटी में था वो। ले बैंड शॉट। ये माधव चौधरी को सिर्फ एयरपोर्ट एग्जिट लिखना आता है, ये नहीं लिखेंगे कौन सा एयरपोर्ट। बता दूं साले तेरे को, 2 सेकंड पहले बताऊंगा। बता। लैक्स एयरपोर्ट है। LAX डैम भाई, काइंड ऑफ टू लेट बताया तूने। आई थॉट मल्टीपल एयरपोर्ट होते होंगे बेंच LA में भी। है 2 एयरपोर्ट है। ये पता है भाई मेरे को, ये तो पता है। बट ये है कहाँ पे एग्जैक्टली? एग्जैक्ट पता है भाई मेरे को, एग्जैक्ट पता है। बहन शॉट हो गया भाई, ये तो लफड़ा सीन है। एग्जैक्ट लोकेशन पता है भाई। ये बंदा भाग रहा है यहाँ पे। ऐसे तो चाइना में है। What the fuck? तो चीटिंग कर रहा है क्या साले? ना भाई, बल्कि चाइनीज में लिखा है बिल्डिंग के ऊपर भाई। अबे चाइनीज में तो लिखा ही होगा साले, उसमें चाइना टाउन में ना, क्योंकि यार एग्जैक्ट तो ओके आई काइंड ऑफ गेट द आइडिया। अलोंग इसी के है। बट एग्जैक्टली कहाँ है तो वो तो मेरे को भी नहीं पता साले। इतना डिटेल में तो नहीं पता ये जगह। ओ पूरा ग्राफिटी हो रखा है बेंच हर जगह। फक इट बेंच। लगा भाई, लगा दे, कहीं पे भी लगा दे। रुक जा बैंड शॉट, देखते हैं। लिंकन पायरा। Yes, let's go. Not bad. चल देखते हैं आगे बैंड शॉट।
कहाँ था अभी सैन एंड्रियास में भाई? अरे यार ये तो बहनचोद ये तो मेरे को भी नहीं याद है। वो feeling. यार बहनचोद मेरे को भी नहीं याद है साले, तो कहाँ है? स्पीड लिमिट 15 है, बस इतना बता रहा हूँ। ट्राई मम्मी के सेक्स का स्पीड लिमिट बताओ। स्पीड हम्स भी हैं जो तेरी मम्मी को करता हूँ मैं। क्या बहनचोद? कितने pretentious है भाई यूएस वाले लोग, कहीं साइन तक नहीं लगाते हैं। कैसे पता चलेगा बहन शॉट कहाँ है ये? अरे माँ चुदा है बहनचोद। I don't even know कि इतनी दूर। माँ चुदा है। लगा दे। ओबे! Most probably गलत हूँ मैं। साले तेरे को गोल्डन गेट ब्रिज जब दिख रहा था लोड़े? अबे दिख रहा था मेरे को। तू मेरा स्ट्रीम क्यों देख रहा है पहले ये बता। अरे साले मैं पकड़ा गया। कोई स्ट्रीम नहीं है बहनचोद, मैं जब प्लेस करता हूँ उसके बाद। तेरा घर आ गया बहनचोद, तेरा घर आ गया। अबे रुक। I know where this is. ये तो मुझे भी पता है भाई, ऐसी चीजें कहीं दिखे तो वो है। बड़े कौन सा वाला है भाई? Exact location. साले लोड क्यों नहीं हो रहा है ये? माँ का शॉट। In and out. अबे रेंडर क्यों नहीं हो रहा है? अरे भाई रेंडर हो जा माँ का शॉट। Exact location नहीं मिल रही। फेमस जगह तो दिखनी चाहिए ना भैंचो मैप पे भैंचो मुझे दिखा रहे हैं कॉस्को कहाँ पे है, ये नहीं बताएंगे भैंचो। इधर तक ही जाता है ये तो भैंचो, रेंडर भी नहीं हो रहा सही से साले। चलो एटलीस्ट तीनी गार्ड में थोड़ा चलाता हूँ। देखते हैं भैंसॉट। सर्कस मिल गया भैंसॉट। भैंचो इतना जूम इन करने पे क्यों दिख रहा है भैंचो ये? व्हाट द फक? मैंने गोल्फ क्लब में क्यों लगा? गलती से लग गया। तू बता वो सब। व्हाट द फक? यहीं पे जेट पैक लेके घूमता था भाई, मैं पैराशूट छोड़ता था भाई। यार ये कौन सा एरिया है भैंचो? ये मुझे याद क्यों नहीं है? भाई मूव भी नहीं कर सकते भाई, लौड़े ने खड़े होके लिया फोटो। PWC का ऑफिस। I think I know ये कहाँ है, but I'm not sure. I think यहाँ के आसपास ही होगा। Fuck it, मैं नहीं लगा रहा दिमाग।
I think तो ज़्यादा सही है। I think तो ज़्यादा सही है। Never mind, मैं ज़्यादा सही हूँ। 9 पॉइंट दे रहा है भैंस 14। I thought वही बड़ी-बड़ी बिल्डिंग सैन फ्रांसिस्को वगैरह ही होगा, एक हब। ओ यहाँ पे पिज़्ज़ा की डिलीवरी GTA 5 में की थी भाई। नहीं यार पर बेंचो दिए भाई थोड़ा सस क्यों लग रहा है मेरे को ये? What do you mean? क्यों बैंड शॉट? ये क्या है? Honestly, अब मुझे सैन फ्रांसिस्को लग रहा है। किधर है माँ का शॉट? ओ यप I think I know ये कहाँ है। I think I know। Honestly, fuck it। ना मैं तो कहाँ पहुँच गया था? देखते हैं मेरा शॉट। शुरू में लग रहा था, मुझे लग रहा था सैन फ्रांसिस्को का, लेकिन मैं लगाया नहीं बिकॉज़ मैं चुकिया हूँ। एक तो सूतिया तो है ही है भैंसॉट। जी fucking G fuck off। मिला तुम बंगाल। कौन सा लगा रहे भैंसॉट? सर्च कर रहा हूँ बंगाल नहीं। बांग्लादेश डिस्ट्रिक्ट। बांग्लादेश तो नहीं हो पाएगा साले। बांग्लादेश सिटी नेम्स ओनली बंगाली, फिर आगे जापानीज में लिखा हुआ है। क्या है ये? बेंगलुरु और दिल्ली। Damn bro। बांग्लादेश श्रीलंका कहाँ से आ गया? चलो ऐसी जनरल देख ले और क्या क्या है भैंसॉट। जनरल तो ये सब है भाई। AI जनरेटेड वर्ल्ड का क्या सीन है भाई? ना भाई GTA 5 कर सकते हैं। नहीं GTA 5 नहीं भैंसॉट। A cat world। अरे भैंसॉट और देख ले। बिग जापानी सिटी। पता नहीं चलेगा साले। बैलेंस्ड वियतनाम। इसका क्या मतलब है? पता नहीं। कुछ डिस्क्रिप्शन नहीं है क्या? ट्राई करते हैं। तूने खाना मंगवा लिया फिर ताऊ वगैरह से? मैं तो खा भी लिया साले। हम भाई ये तो ये बेंच क्या बैलेंस्ड है इसमें? साले क्या है ये? ले माँ का शॉट। क्या करेगा अब तू? अभी ये तो हम लोग हरकतें करने वाले हैं मोपेड पे जाके। मुझे क्या पता कहाँ है भोसड़ी के। तो साले गेस कर देगा क्या ऐसी? हाँ अब तो पूरा लक है। मैंने जहाँ तक देखा था हमारे पुराने गेम से हर चीज साउथ में होती है। बेंचोद। हर चीज साउथ में होती है। सी बैलेंस कैसे है ये मेरे को ये नहीं पता। बैलेंस है भाई। ले माँ का शॉट। सारे बकचोदी कर रहे तू दोबारा। अरे गांड में ले। अरे भाई क्या चक्कर है ये भैंचोद? गांड में ले भाई। थाई न्यूमन लिखा था उसके नीचे कर दिया। माँ का शॉट। भाई दो गेम्स में देखो हरा दिया मैंने। दो राउंड्स में। पूरा लक था साले भैंचोद। क्या बोल रहा है भाई?
मैं सर्च करता हूँ मम्मी अरे मम्मी चैलेंज, मम्मी वेयर हैव यू बीन, मम्मी क्विज। अरे ये सब क्या है बहनचोद? लगा के देखियो बहनचोद। क्या मम्मी वेयर हैव बीन या मम्मी मम्मी क्विज, मम्मी क्विज मम्मी लगा। क्विज। बहनचोद क्या है ये? आई थिंक इसे अपनी मॉम के लिए क्विज बनाया होगा। साले कहाँ है ये? ओ ये तो पता है मेरे को भाई, ये तो पता है मेरे को। बहन का शॉट एक साथ किया क्या हमने? हाँ इजी क्लैप भाई। किस चूते ने बनाया है जो क्विज? क्या क्या तू बड़ा दिमाग वाला बन रहा है यहाँ? अरे बहन का शॉट तेरी मासूदे। ले लौड़े। क्या क्या दे बहन जो तुम मेरे साइड में ही है मैप पे। मुझे समझ नहीं आया इसको, इसका पॉइंट उसने ये भाई जो क्या कर रहा है तू, क्या कर रहा है? देख लेते बहन शॉट। ले लौड़े ले लौड़े भाई, अलग ही कॉन्टिनेंट पे हम दोनों, तू बस जल्दी जल्दी कर रहा है। तो फिर बहन शॉट ये क्या स्ट्रैटेजी है भाई? अब तेरा कैसा आएगा? टिंग अबे अरे मैं चुत क्या करूं? इजीली चुत गया भाई, इजीली चुत गया। अभी तो रचा ने एनेक्स कर लिया इस जगह को अब। अरे बहन शॉट थोड़ा दिमाग लगा ले माधव चो, थोड़ा दिमाग लगा। माँ का शॉट हटा। ले तू ले माधव चो, तू ले। बहन का शॉट। गैम्बलिंग कर रहा है तू लिटरली, ये तो पता है। देख ले साले मेरी स्क्रीन देख ले मादर चोद। नहीं देख रहा तेरी स्क्रीन साले में। ले माँ का शॉट। साले तेरा स्कोर देखो मेरा स्कोर देख टोटल। अब देख भाई कौन से कॉन्टिनेंट पे डिपेंड करता है अब। ले भाई ले तू ले मार। कितना ही है बैट शॉट? ओके ओके जो जगह दिखनी तो चाहिए। चूतिया है क्या? अरे बेंचो चल अभी भी दिखा था मेरे को, पता था इस ट्रेलर पर, मैंने डाला नहीं इसमें। जो किस चूतिया ने बनाई है क्विज, पहले ये बताओ भाई किस चूतिया ने बनाई? अबे लंड है बेंचो, हटा इसको। मॉमी क्विज लौड़ा ले ले बहन का शॉट। ये क्या पॉपुलर है? पॉपुलर है। इंडिया के क्या क्या है बेंचो? सर्च करता हूँ मोस्ट फन जियो गेसर मैप्स। AI generated world. There's a map called each country is equally likely. You're likely to get Andorra as you're to get Russia. Every single country is equally representative. A urinating world. What? बहन चॉट। बहन चॉट क्या होता है?
ये क्या है, सीनिक पिस वाला है क्या? हो सकता है, या तो कोई सुसु कर रहा होगा, उसकी फोटो ले ली होगी। अरे यही होगा बहन। यूरिनेटिंग का है साले। फक, मूतने का सिस्टम का है भाई। मैं तो कंफ्यूज, इस बिल्डिंग का नाम 5111 क्यों है भाई? That is fine. कोई देख रहा देखो मूतते हुए? नहीं, बेंच इसका नाम क्या है फिर? ओ अरे बहन का शॉट। नो आइडिया भाई। मेरे को आइडिया तो है। अच्छा, रोड भी वन वे है। पर ये है कहाँ मैप में बहन का शॉट? अरे यार मैं जीत जाऊंगा। देखते हैं। है या अरे अरे फक, मैं चूतिया हूँ, मैं चूतिया हूँ भाई, मैं चूतिया हूँ, मुझे पता है। सोचना चाहिए था बेंचो डिट्रॉइट तो। यहाँ पे तो 100 किसी ने सुसु कर रखा है भाई। अरे बेंचो क्या चूतिया मैप है? किस पॉइंट का मैप है ये? क्या पॉइंट है इसका? यूरिनेटिंग वर्ल्ड भाई। साले जब बेंचो कोई मूत ही नहीं रहा तो बेंचो क्या चक्कर है? बस शेड्यूल बंद तो यार खत्म हो गई गेम। नहीं अब इस पे नया अपडेट आया है, मशरूम्स आ गया। हाँ नवंबर में आने वाला था ना। क्या लैंग्वेज है ये? बेंचो शिट मैप है भाई। अब लगा रहा हूँ भाई, कुछ भी लगा रहा हूँ। जी भाई, तू तो भैंसो कॉन्टिनेंट ही गलत लगाएगा। तू तो मत बोल साले। क्या उखाड़ लिया तूने? तू बहन के लोड़े, तेरे को क्या मिला उखाड़ के? वो सड़क की फाइनली फाइनली बैंड शॉट फाइनली। पास जाता हूँ, उसकी गायब हो गया। नहीं, उसके पास कैसे जाऊँ मैं? उसका नुनू कैसे देखूँ मैं? अरे बैंड चोद दिख रहा है, थोड़ा दिख रहा है। अरे भाई प्लीज भाई, आई एम गेसिंग इंडिया भाई। मैं इतना यू नो कॉन्फिडेंस है मेरे को अपने लोगों पे। एक्चुअली अबे फक, मैंने गलत डाला है। आप गलत है भोसड़ी के। हाँ मैं गलत हूँ भाई। तू गलत है, चूती इंडिया ही है। ओ फक नहीं है, कंबोडिया।
बहन के लोड़े भाई तो तूने कम मूतने वाले पे तूने कम बैक कर दिया जो एक्चुअली वेयर इट मैटर्स। ओए ये ना मूत रहा है बहन का साट। तो पहले क्यों मूत रहा है? तो पहले क्यों नहीं कैसे? पहले क्यों नहीं मिले बहन जो मूतने वाले बंदे? चढ़ूंगे भाई। ओ भाई I win भाई I win। ए साले लौड़े। I win। कोई ना। ले लौड़ा ले ले बैंड चोद अच्छा तेरा। मूतने वालों पे तो जीत रहा है भाई। हाँ तो साले पहले दो वालों पे मूतने वाला है क्यों नहीं? हाँ ये देख ये भी मूत रहा है, ये भी मूत रहा है। अरे ये मैप अच्छा है पर बहन चोद ये मैं जो गायब हो गया। गायब कैसे हो गया? पता नहीं बहन चोद यार कहाँ लगा है साले। मैं क्यों बताऊं भाई? तू बता मूत रहा है इसमें तो तू जीतेगा ही भाई। मूतने वाले भी तो हमेशा जीतता है। Never mind भाई, never fucking mind। I win भाई। लौड़ा ले ले मेरा। अरे इतने पॉइंट्स कैसे कम हुए बहन चोद? Into 1.5 था भाई। अबे ये भाई सेंसर्ड क्यों है? मूतने वाला बंदा कहाँ है? अबे कुछ सेंसर्ड है ना वो देख, हग रहा है शायद। कितना छोटा आदमी है क्या बहन चोद? बच्चा है क्या साले? क्या पता हो सकता है। भाई कहाँ है मैं? अच्छा टट्टी पड़ी होगी वहाँ पे। अबे तो साले एआई को क्या पता टट्टी है बहन चोद मिट्टी है। एआई कहाँ से आ गया? साले एआई से तो ब्लर होता है। ने thousands of टट्टी का इमेजेस का डेटा सेट बना के ट्रेन किया होगा एआई भाई। जेन्युइन है। ठीक भाई। fuck भाई हम सब वही चीज कर रहे हैं। ओ ले लौड़ा। रुक जा भाई नेक्स्ट वाले में तो हारेगा। कोई मूतने वाला चाहिए इस बार। मूतने वाला तो कोई है ही नहीं। अबे पकड़ा तो गया साइड में जो मूत रहा है। कहाँ? अरे बहन जो मूत रहा था साले। I'm guessing वही सिचुएशन है। अबे नहीं बेंचो वो गाड़ी पे देख वो डॉग मूत रहा है। डॉग मूत रहा है गाड़ी के ऊपर। बेंचोद भाई। बेंचो किधर है ये? मैं तुझे टाइम ही नहीं दूंगा भाई, मैं तेरे को टाइम ही नहीं दूंगा। भाई जी ले लौड़ा। इसमें क्या मूतने वाला? ढूंढ भाई स्पॉट द मूतने वाला। आई थिंक वो मूतने जा रहा है बुड्ढा। आई थिंक वो गाड़ी रोक के मूत रहा था, अब खत्म हो गया। पास जा थोड़ा सा। थोड़ा आगे, हाँ थोड़ा पास है शायद। नहीं वो वैसे ही खड़ा है बेंचो। गाड़ी की तरफ देख रहा है। उसको पता है गाड़ी आ रही है। जाता हूँ। हाँ देख जैसे तू दूर जाएगा वैसे वैसे वो मूत रहा है भाई देख। अरे मूत नहीं रहा साले वो। गाड़ी के अंदर बैठ रहा है। मूता है भाई। गाड़ी के अंदर बैठ रहा है वो। इस माला चोद ने मूता है। ये तो घर किस टाइप के हैं भाई? काइंड ऑफ डिप्रेसिंग लग रहा है मेरे को। What the fuck is this भाई?
इधर है बेंसॉट। वो हैलोवीन का है, आई थिंक कुछ लोगों ने हैलोवीन डेकोरेशंस लगा रखी हैं। अमेरिका। Are you sure अमेरिका है? Are you sure अमेरिका है? 90% sure. Oh, I know exactly कहाँ है। अमेरिका। लगा ले भाई। यूनाइटेड चर्च ऑफ क्राइस्ट लगा भाई, तो शिकागो है बैंड के लौड़े हैं। अरे बहन का सॉट। ओह मैं जो सुसुवाल में देखो हरा दिया मैंने। अबे इस पे नहीं कर रहा था, नहीं मूत रहा था साले वो। मूत रहा था भाई, वो मूत रहा था। नहीं मूत रहा था तभी तो साले वो देख रहा था गाड़ी को। यूरिनेटिंग वर्ल्ड भाई। The fuck क्या क्या मैप से भाई? चाइना वाला करना है क्या? चाइना काइंडा इंटरेस्टेड हूँ मैं चाइना में। साले चाइना में कुछ नहीं मिलने वाला भाई। चाइना काइंडा इंटरेस्टिंग जगह है यार, फन जगह है, जाऊंगा मैं। इनका शॉट फ्री फॉर ऑल कर दे। फ्री फॉर ऑल क्या होता है? मतलब तुम दोनों खेल रहे हो ना, मैं नहीं आ पा रहा जॉइन गेम में। ओ इनवाइट भेजा हुआ है। नहीं मैं जॉइन कर रखा है। ओ अच्छा फिर मेरे को स्पेक्टेटर में ये कर लेते हैं बैटल रॉयल। इसमें क्या है? The farthest guest from the target is eliminated each round. साली यूरिनेटिंग वर्ड हटा कुछ और लगा बेंचोद। ओके क्या लगाऊं? साली एक और दिखा था ना, कौन सा वो रेड पे? ये देखते हैं क्या इंटरेस्टिंग है। हाँ यही वाला है शायद। चलो ठीक। Each round eliminate होंगे याद रखना। ठीक है वो 3 ही राउंड होंगे फिर तो साले। 3 guesses हैं शायद। ये AI जनरेटेड? नहीं AI ने मैप बनाया है, डिसाइड किया है कौन कौन सी है। ओह अच्छा। I think you get 3 guesses. ये गाना क्या चल रहा है भैंचो चूतिया? हाँ थोड़ा goofy ass म्यूजिक बज रहा है। मेरा चश्मा धुंधला है या फिर मैं जो फोटो ही धुंधली है? फोटो धुंधली है भाई। आई थिंक मुझे पता है कहाँ है। कहाँ है? मेरे सर पे चूतिया लिखा है क्या? हाँ लिखा तो है बट कहाँ पे है? I have a feeling वो मल्टीपल केसेस कर सकता हूँ। Hell yeah. Oh, the fuck? शायद तीनों केसेस यूज नहीं करने होते। अरे भैंसो ये लाइव डिस्टेंस बता रहा है, लाइव डिस्टेंस बता रहा है वन पास में। What do you mean? I see. हाँ सही कह रहे हैं। but you can change your guess to get closer. ऐसा है। ओह अच्छा वहाँ दिखाता है कि साइड में कितने किलोमीटर दूर हूँ मैं। अच्छा हर राउंड नहीं कितने किलोमीटर नहीं बट रैंकिंग दिखाता है, रैंकिंग। ओके फॉर एग्जांपल अगर भी मैं कर दूँ और इस बार 2 ही कैसे तेरे पास? अभी मैं ऐसे करूँ गैस डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर या फिर डिस्टेंस फ्रॉम नहीं डिस्टेंस फ्रॉम द करेक्ट रिलेटिव है। गेस कर एक बार तो कुछ इंटरेस्टिंग गेम मोड है फिर तो यार। सबसे आगे मैं हूँ। Oh fuck.
तेरे पास 2 कैसे? Fuck भाई। कनाडा कनाडा। Alaska। AI generated। कनाडा। चूतिया चीज़ है भाई AI generated। मैं कर रहा हूँ भाई सीधा। इंडिया लगाते इंडिया चाइना। इंडिया इंडिया लगाते साले, इसमें मजा आएगा इंडिया में साले। इंडिया इंडिया बहन चोद, सोचना इसमें पड़ता तो है मजा आएगा ना, तो बहन के लोड़े तभी तो इंडिया में टफ होगा यार। तभी तो वही तो चक्कर है साले। रुक साले कर। बहन चोद कौन सी गली में लेके आया बहन चोद ये। और भाई इस घर को तोड़ दो बहन चोद। 30 बचेगा अभी। लैंग्वेज भी खुफिया लैंग्वेज। गुजराती है भाई वो। ओके गुजराती है वो। थैंक्स भाई थैंक्स। साले बोलना थोड़ी होता है बहन के लोड़े। साले बोलना नहीं है बहन के लोड़े। यस भाई यार। क्या गिल्टी हारेगा तू। अहमदाबाद में था साले। अरे बोसड़ी के तूने बताया क्यों मगस चोद बहन के लोड़े। चोद बहन के लोड़े, तू बता दिया बहन के लोड़े, अब फिर साले जीत गए ना। ये बता तू फ्री कब होगा इसके बाद? फ्री कब होगा क्या? अच्छा वो उसके लिए टिकट के लिए तो तू मेरे को वो भेज दे बस बहन चोद, अपना कौन सा टिकट करवाना है तेरे को स्काई स्कैनर पे। साले ये वापस खेलूंगा मैं बहनचोद, ये ऐसे नहीं चलेगा साले। लौड़ा ले ले मेरा बहनचोद। कार्ड में मेरे को स्काई स्कैनर का लिंक भेज दे। और एयर इंडिया की देखियो, एयर इंडिया की। हाँ मतलब वो सेकंड मतलब 29 को मतलब 2 बजे हम दोनों है क्या बस? अच्छा ओ शिट। वो तो तू मेरे को लिंक भेज दे जो 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 से भी ऐसे 300 मीटर का डिफरेंस है क्या था फक? नहीं फक। क्या हो गया साले? रंडी रोड़ा क्यों चुत रहेगा तू भाई के लड़े। तू चुत्ते में ऐसी आवाज निकालता है क्या? Let's go। Damn भाई what the fuck भाई। अब अपना पासपोर्ट, ओए सुन 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 लोड़े, अपना पासपोर्ट एक्सपिरेशन डेट भेजियो बहनचोद। और कोरंगा को भी नहीं कोरंगा को भी बोल, तू भी अपनी भेज दे। किसको बोल रहा है? किसको बोल रहा है? लिंकन और कोरंगा। क्यों क्या हुआ? पता नहीं, भेज तो जल्दी बहन के लोड़े। चेक करने दे। ओ शिट हां मेरे को भेज। मैं एफ क्यों फिर 1 सेकंड चेक करके आता हूं। कोरंगा को भी बोल साले। पासपोर्ट मिल तो गया, देखता हूँ एक्सपिरेशन। 28/12/2030। एक सेकंड चार्ट पे डाल देता हूँ। 28/12/2030। और बहन जो कोरंगा एक्सपायरी को चाहिए ना? इशू तो नहीं चाहिए देखो, डेट ऑफ इशू तो नहीं चाहिए ना? नहीं कोरंगा को बहन जो एक बार कॉल कर दे सैप। हाँ भेज दिया उसने भेज दिया। बट तेरे को चाहिए क्यों? तो ये रीजन तो बता। पता नहीं, विशाल मांग रहा है। विशाल कौन है बहनचोद? अबे साले जो टिकट बुक कर रहा है उसको क्यों चाहिए? पता नहीं, कुछ टिकट का होगा सीन। एयर इंडिया एक्सप्रेस चलेगा? नहीं एयर इंडिया एक्सप्रेस नहीं चलेगा साले। नहीं सिर्फ एयर इंडिया होना चाहिए। अब तू दिल्ली में नहीं होगा क्या तब?
तो दिल्ली आना पड़ेगा ना अच्छा दिल्ली आने की फ्लाइट कर रहा है। तो शिफ्ट कब हो रहा है परमानेंटली? 28 ऑफ नवंबर। हाँ नहीं मैंने देखा अभी मेरा डिपॉजिट का जो डिफरेंस पड़ रहा है ना उसमें ही मेरा सब कुछ बोनस वगैरह सब कुछ आ जाएगा, तो मुझे बेसिकली कुछ पैसे देने ही नहीं है शिफ्ट करने के लिए। तेरा कितना डिपॉजिट था? 80,000। और मिल गया सारा वापस? नहीं अभी अभी वो दूसरा टेनेंट जब देगा डिपॉजिट तब जाके मेरा ये क्या रिप्लेसमेंट जब बकचोदी लेगा है तो बहनचोद, ये क्या बकचोदी है? वो तो हो जाएगा। तेरा ओनर है वो मल्लू है क्या? वो कश्मीरी है वो। What the fuck? हाँ मेरा फ्लैटमेट भी नग्याल एक कश्मीरी है। नग्याल बात कर यार थोड़ी। मैं क्या बात करूं भाई, कश्मीरी है तो जम्मू से होगा। यार तेरे अभी तो पेरेंट्स इतना अच्छा जम्मू है, तेरे जम्मू से पेरेंट्स गया इतना था। अच्छा योगा करते हैं, आई थॉट कश्मीर के होंगे। हैं? हैं? I saw the reel। बट नहीं, कश्मीर और योगा कैसे आ गया? नहीं मैं बस वो मेंशन करना चाहता था कि I saw your parents doing yoga भाई। Randomly just dropping it in message. रैंडमली तो वही वो रील ड्रॉप हुई थी जब हम देख रहे थे। आउटरीच 2 बजे है ना क्या? सैटरडे को? आउटरीच 2 बजे है ना सैटरडे को? हाँ 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 ऐसे कुछ है, यस। तो यार ये फ्लाइट क्यों भाई, फ्राइडे को मेरी प्रेजेंटेशन है तो फ्राइडे शाम की फ्लाइट ही नहीं है भाई, सिस्टम है। थर्सडे को आना पड़ेगा। पियानो मैन लग रहा है, कौन सा गाना है ये? पियानो मैन ही है। अच्छा वही है। टाइम भाई बंदा तो इसको अपने बैंड में डालो भाई। अबे हग रहा था बेंचो तो। जो व्हील तो हटा ले। क्या डाले? व्हील जो व्हील। कौन सी व्हील? अब इसने व्हील डाल रखा है ना अपने टेबल पे। ओ अच्छा अच्छा, मैं देख ही नहीं रहा था बेंचो दिए। तेरी माँ का सोत। अभी ये एयरपोर्ट से गुड़गांव आने में कितना टाइम लगता है? 15-20 डिपेंड्स ऑन मिनट। ट्रैफिक, बट आधा घंटा। आधा घंटा? एटलीस्ट। मुझे तो भाई 1.5 घंटे लगते हैं पहुंचने में बैंगलोर साले वो एयरपोर्ट। अलग अलग सिटी में है बेंचो उसका एयरपोर्ट। तुम मैं जो किस चूती ने प्लान किया, किस मल्लू ने, बोल नहीं सकता यार, स्क्रीन कर रहा है भाई। मैन का He's सट। don't worry, वो he's एक not बार मैं streaming. अपनी स्क्रीन प्रेजेंट करूं, मैं समझ नहीं आ रहा कौन सा टाइम के मैं बुक करूं। प्रेजेंट कर कर। परमिशन क्यों मांग रहा है साले? If I may, Jeshwin. If I may present my, is my मल्टीपल लोग भी screen कर सकते visible? हैं ऐसा कुछ। Is my voice audible? Am I audible? Am I audible? You're breaking up, भाई बोल। दिख रहा है? Is my screen visible? Yeah, your screen is visible. कौन सी तारीख की कर रहा है? अभी वो मैं तो फ्राइडे की ट्राई कर रहा था बट फ्राइडे मिल नहीं रही, थर्सडे भी करनी पड़ेगी। हाँ थर्सडे आगे क्या Thursday डेट क्या वैसे है? डेट क्या है? बता देंगे। हाँ भटका लेंगे नए घर में। साले बंद क्यों कर दी साले? प्रेजेंटेशन ओवर होगी ना। Yeah, screen is not visible actually, Rohan. उसने कॉल ही छोड़ दिया बैंक के लड़ो। उसने कॉल ही छोड़ दिया। क्या हो गया काम सीन की भाई? बात नहीं थी। network issues. I think Rohan is facing some network issues. He might try to rejoin. बैंड शॉट। मैं फोर्जा खेल रहा हूँ भाई थोड़ा टाइम, भाई मेरे को बहुत मन कर रहा है फोर्जा खेलने का। भाई मेरे डैड क्या है भाई, मेरे डैड क्या कर रहे हैं भाई? क्या What हो the गया? fuck भाई? ये देखो भाई, मेरी स्क्रीन देखो भाई। ये जब दिख रहा हो बताना। दिख रहा है। सो भाई ग्रुप पे तो बात चल रही थी ऐसी कुछ, आज पापा ने वीडियो भेजी कि टाइगर आया बंदे को खा गया।
चले यार फिर एआई पापा ने जनरेटेड है। दोबारा वही वीडियो भेजी। फिर पापा ने दोबारा वही वीडियो भेजी। क्या हो रहा है ये? अबे एआई जनरेट तो नहीं है ये, देखिए खोलिए ना चलाइए भाई वीडियो। ये तो एआई जनरेटर है, अब ये एआई तो जनरेटेड है भाई यार। पापा इसको पानी भी दिया। चेयर भी हटा दिया, मस्ती भी कर रहा है उसके साथ। क्या What the क्या hell भाई वहाँ लिखा भाई। हुआ है एआई लिखा हुआ है, he knows AI है। I don't know भाई। भाई क्या सीन है ये? ये रियल होगा ना, ये रियल है, अबे ये ये रियल है, इसको खा गया। नहीं नहीं नहीं, अभी ये भी ये एआई है एआई है। साले, ये भी एआई है। हाँ क्लियरली एआई है भाई। हाँ ये ठीक है लगा रियल है। ये शेर देखिए आ देख, गया इस बार, टाइगर नहीं इस बार और शेर आ इसने इसको गया। पकड़ के इसको भटका दिया। देखिए देख उसके उसका पैर क्लिप हो फक गया भाई। उसके अंदर से। Is real? विद इज इमोजी। दिस रियल चैट? क्या बाबू क्या भेजूं भाई? अबे अबे ये गेम भटक गया। क्या पीसी पीसी क्रैश हो भटक गया? गया भाई, पता नहीं क्या सीन हो गया भाई। और खेल बेंचोद यूबीसॉफ्ट की गेम। ये स्ट्रीम तो वापस ऑनलाइन है, सेम ही लिंक पे। हाँ चल गया अब। अबे व्हाट द फक भाई, क्या सीन था ये? अबे एक एक और सीन है क्या? साले मेरे को कि व्हाट्सएप जो पे मेरा, व्हाट्सएप पे। हाँ चल भेजता हूँ। मैं ये बोल रहा था कि हो सकता है कि मुझे किसी और के रूम में सोना पड़े, कि मेरा जो सामान है वो थोड़े दिनों बाद आएगा वो। हाँ तो ठीक है, उसमें क्या है? ओए ऑडी तूने हमारी वाली कर दी थी क्या? मैं तो मेरी हाँ वो हो जाएगी। क्या? टा, 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 टा। है जो फोर्स चलाने के भाई, पूरा पीसी भटक गया भाई। अच्छा टाइम चेंज। अच्छा वापस ट्राई करता हूँ पूरा चलाने का, वापस भटक जाएगा शायद। पापा कह रहे हैं एआई है। ऑब्वियसली, क्लियरली। मैं जो सीएस खेलते थोड़ी देर में। हाँ इन भाई हैलोवीन अपडेट में क्या है? एडेड सुअर सिस्टम। ओए भाई, पूरा सुअर सिस्टम, क्लाइंबिंग सिस्टम, लैडर्स टू वेरियस बिल्डिंग्स, सुअर मेंटेनेंस ऑफ दिस प्रॉपर्टी, सुअर एक्सेस की, प्लास्टिक टेबल, ट्रैश ग्राउंड, क्या क्या सर क्या ट्रैश। देख रहा है तू? अभी शेड्यूल 1 में। अच्छा आ गया क्या अपडेट? लेट मी हाँ सी। हाँ, नेट एनओडीज रेप्लिकेशन क्यू, ओ हैलोवीन अपडेट। 5 मोर ग्राफिटी लोकेशंस। क्या हो गया रे? फोर्जा बड़ा रंडी रोना कर रहा है यार, मैं जो चल भी नहीं रहा ये बाका शॉट। Ladders to various buildings. भाई ये तो खेलना पड़ेगा यार फिर तो साले। नहीं बट वो नहीं ऐड हुआ ना मशरूम्स। आई थिंक मशरूम भी हो चुका है। आई थिंक एंड ऑफ नवंबर में आएगा। पता नहीं बेटे, पूरा सोर्स सिस्टम तो आ चुका है। और सिस्टम में क्या ही होगा? देख लेंगे ना, एक्सप्लोर करना पड़ेगा।